Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, your fan channel for all to see. और yes, भाई मतलब Champions League night. Yeah, we all been waiting for this day for I don't know यार from months I guess. और again भाई आज we'll see Messi, Musiala, Olivier Giroud, and of course someone in Spurs as well. But talking about Olivier Giroud and OGs, भाई for Champions League night we had to get back the OG of Champions League for me, and that is Fateh. फतेह बिग अप यार क्या हाल है बाय द वे ऑलवेज गुड टू सी यू लेकिन एक्साइटेड चैंपियंस लीग नाइट नॉकआउट चीज I am. I think after a very long time, I think I'm on your stream after the World Cup. So, and I haven't seen much football. Like I've या really not भाई seen much फतेह football. बहुत ही बिजी थे तो थैंक्स टू फतेह टू ऑलवेज नो ब्रिंग ऑन टाइम भाई ऑल मिडनाइट वॉच अलोंग्स में फतेह इज माय पार्टनर यू ऑल नो दैट नॉट दैट टुडे वाज अ ग्रेट डे itself but anyway भाई यस पुजिन एब्सोल्युटली यार चैंपियंस लीग का जो एंथम होता है ना वो सुनकर ही भाई जी खुश हो जाता है सच में बोले अलग ही गूज बम्स आता है नो समवॉट दैट फुटबॉल एक्सप्रेस नाइस टू सी यू एज वेल मयांक अरोरा यस एब्सोल्युटली हम लाइनअप ही देख रहे थे और मुझे मालूम है जनरली स्पीकिंग फॉर चैंपियंस लीग नाइट्स वी आर लाइव 1 hour 15 minutes बिफोर टाइम लेकिन यार फॉर वॉट एवर रीजन अब इतने महीने हो गए आई काइंड ऑफ मिस चेक किया चैंपियंस लीग लाइनअप आ जाते एक घंटा 15 मिनट पहले एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट तो हम देखेंगे एब्सोल्युटली सब लोग कम ऑन लेट्स हिट दैट लाइक बटन यस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पता नहीं डाला है कि नहीं आई थिंक आई पुट इट ऑन माय ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस अकाउंट तो भाई मैं शेयर कर देता हूँ मीनवाइल मैं डालने वाला लाइनअप एंड यस बिग अप टू एवरीवन जीशान पुदिन मसूद भाई रायन निश्चित ऑफ कोर्स क्या हाल है भाई मयंक मैंने बोल दिया ऑलरेडी भाई लेकिन पेरिस सेंट जर्मन वर्सेस बायर्न म्यूनिख नाउ दिस इज द बिग गेम as much as you know हम मिलान को बहुत फॉलो करते हैं मीन फतेह as well वन फॉर एंड वन अगेंस्ट लेकिन ये वाला पहले लाइनअप देखते हैं फतेह this the big news is obviously Mbappe not starting but Messi starting he has not been apparently 100% fit Messi he is coming back from injury Yeah. as अभी लेकिन अभी नहीं रिस्क करोगे तो कब करोगे is that what you're saying if you're PSG coach No, but I think अगर अभी नहीं भी risk किया, तो I think he'll be there for the second leg. So, and we know the impact that Mbappe can have. Like he can change a game in 2 or 3 minutes. So I think they'll be okay because see, if PSG are missing players, then so are Bayern Munich, right? mm-hmm. And it's not as if Bayern have been in great form either. So there is something I think a two-legged game. I think it's better to not rush Mbappe back. Imagine if you rush him back and he misses the second leg as well. So I think better to be safe than sorry. या मतलब वही है, एक रिस्क फिर भी चलता है दो रिस्क तो इज विल टू मच Will बिकॉज be एट too द एंड much. ऑफ द डे मतलब याद रखिए यस देर आर नो होम एंड अवे काइंड ऑफ एडवांटेज अभी यार तो अभी यार इट्स Oh ऑल yes. अबाउट यू नो Oh एट yes. द एंड ऑफ Yes. द Yes. डे टू लेग अफेयर है और whoever kind of gets some more goals is the winner और we all know that this fixture has history behind it कहीं ना कहीं आई थिंक पीएसजी बायर्न का एक राइवलरी बन रही है जो बायर्न बारसा का देखा था आई नो दैट पीपल विल बी लाइक 8-2 PSG a lot of Barca fans following PSG obviously for Messi and a couple more reasons लेकिन again even Real Madrid fans who knows right Ramos is there मतलब again we'll be taking the comments and आप लोग भी बोलिए about this lineup again there are two ways हो सकता है that PSG kind of at home they go a little bit attacking हो सकता है that they may just play Danilo Pereira in midfield लेकिन हम जानते हैं PSG in Galtier kind of prefer this way with three at the back with four in midfield Verratti also I think being there is huge news not just Messi मेरे लिए तो because Verratti has missed a few games in my opinion right और पता नहीं ये करेक्ट है कि लाइनअप यार यहाँ मैं देख रहा था कि देयर इज अ यंगस्टर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट रिफ्रेश एंड सी लेकिन यूएफए वेबसाइट पे दिखा रहा था कि देयर इज अ यंगस्टर स्टार्टिंग ऑन द विंग इज दैट अ लेट चेंज लेट मी सी देखते हैं भाई अच्छा recommend me defend for UCL fantasy otherwise should I play Hakimi go ahead and play Hakimi bro go ahead and play Hakimi big up to Darren कैसे हो why is everyone underestimating Chelsea भाई गौरव चेल्सी की बात कर रहे हैं इसलिए आई हैव गॉट अ न्यूट्रल भाई फतेह वी हैव टू टॉक अ लॉट अबाउट दैट एब्सोल्युटली बट पहले फोकस ऑन टुनाइट्स गेम्स ऋषि क्या हाल है डेविस नॉट प्लेइंग यस एब्सोल्युटली वो बायन का हमने कमेंट नहीं किया अभी तक विल कम टू दैट एब्सोल्युटली नहीं टीवी ठीक नहीं हुआ है यस आई एम गोइंग टू बी वाचिंग ऑन द फोन एंड ऑफ कोर्स फतेह इज माय टीवी तो भाई फतेह प्लान ये है भाई एवरीवन भाई फतेह आर इटालियन एक्सपर्ट इज इन द हाउस ठीक है तो ही विल फॉलो माय क्लब व्हिच Yes. इज एसी मिलान स्पर्स एंड आई विल फॉलो पीएसजी बायर्न और विल बी इंटरचेंजिंग ऑफ कोर्स मैं दोनों में एक लैपटॉप में डालने वाला एक मोबाइल में डाले वाला टेंशन नहीं लेगा हाँ मोबाइल में थोड़ा फास्ट होगा नो वरीज ऑन दैट हार्दिक क्या हाल है भाई लॉन्ग टाइम नो सी will it be telecasted on Jio Cinema? I don't think so. Correct me if I'm wrong, but I Munich. think it's so. Munich.
Sony Sony has Live the and Champions League Sony rights. 10-2, 10, Sony 10-3. 10-1 has Spurs versus Milan, and Sony 10-2 has PSG Bayern. तो 1 and 2 बेसिकली, राइट? ओके, फेयर इनफ। भाई मैं वापस से ऑफिशियल लाइनअप देख रहा हूँ, पता नहीं, आई थिंक देयर इज अ लेट चेंज और इज द वेबसाइट शोइंग मी रॉन्ग डेटा। लेकिन जनरली स्पीकिंग आई विल पुट अप दिस लाइनअप अगेन, लेट्स अज्यूम कि ये लाइनअप है अंटिल आई चेक इट। और भाई सब लोग मैंने कम्युनिटी में डाल दिया है, तो इफ यू कैन गिव अ लाइक बटन टू दैट कम्युनिटी पोस्ट एज वेल, रियली हेल्प मी यार, एंड हेल्प द चैनल, एंड इट्स योर चैनल एज वेल, ऑलमाइटी फैम। तो एक सरप्राइजिंग न्यूज इज डेफिनेटली द बायर्न म्यूनिख में फतेह, and will come to Milan Spurs. लेकिन Cancelo, Pavard, now Alphonso Davies not playing. क्या लगता है, मतलब I know attacking wise the guy is simply brilliant, but the fact is after injury has he been that player वो question कर सकते हैं, but at the same time you know Cancelo on the right side ज्यादा क्या बोलते हैं एक्सपोज हो जाते हैं बायर्न म्यूनिख, क्योंकि ही इज अ नेचुरल इन्वर्टेड राइट बैक, राइट? दैट्स व्हाट Yeah, ही yeah. इज मोर फेवरिंग लेफ्ट साइड ऑल्दो बीइंग अ राइट फुटर। तो कहीं ना कहीं क्या बोलोगे, इट्स मोर लाइक अ डिफेंसिव टैक्टिक फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, और वुड यू हैव एक्सपेक्टेड दैट क्योंकि वो अवे खेल रहे हैं, और आर यू सरप्राइज्ड? No, I'm not really surprised, but I don't know how many games has Cancelo played for Bayern. Like, is there an ही इज understanding? डन Because वेरी वेल, ही इज डन वेरी वेल। he's done तो very तीन well. गेम Okay. मेरे ख्याल से 3 गेम खेला है, और जहां तक मुझे याद है इन ऑल कॉम्पिटिशन ही इज गॉट एन असिस्ट इन ईच गेम अभी तक। Oh wow. Then I think then there's then I don't think this is a conservative move at all. Then I करेक्ट, think it's लेकिन वो well राइट बैक planned. 3 में से 2 शायद राइट बैक खेला था, करेक्ट मी फ्रॉम चैट अगेन। आई Okay. नो दैट देयर आर अ कपल ऑफ बुंडेसलीगा फैंस एज वेल यहाँ पर। पवार्ड, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन व्हाइल यू आर नॉट प्लेइंग अल्फोंसो डेविस, इट्स नॉट लाइक पवार्ड इज ग्रेट, आई नो पवार्ड हिमसेल्फ प्रिफर्स एक सेंटर बैक अगर उसको चॉइस दिया जाए, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब इफ यू आर जस्ट पिकिंग, आई नो लेफ्ट बैक वर्सेस लेफ्ट राइट बैक है, लेकिन अल्फोंसो डेविस वर्सेस पवार्ड आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर यार। आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट पवार्ड पवार्ड के साथ जाए आगे ना। Maybe इमेजिन एम्बापे वर्सेस पवार्ड, फ्रेंच maybe कनेक्शन। they yeah, so maybe because like and Inter Milan has been linked with Pavard, so Pavard likes to play as that right center back. So maybe absolutely, I think so. Maybe like they'll be some sort of change mid game where Bayern have three at the back and then Cancelo is pushing up. So it could be like a 3-4-3 or something like that. Like I don't know, like 3-4-1-2 या or दे I don't माइट know. दे माइट चेंज इट इन They गेम, वो might, जो they might. करती है जैसे बारसा करती है। भाई मैं फुटबॉल फैन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कमेंट आपका। रियल Yeah. मैड्रिड फैन बट इन कंफ्यूजन व्हिच क्लब आई कैन सपोर्ट बिकॉज आई लव एम्बापे, बट बायर्न इज माय सेकंड फेवरेट क्लब। तो भाई मतलब देखिए आप दोनों जगह सपोर्ट मत करिए, इसलिए मेरे से करिए। लीग में यू काइंड ऑफ फॉलो बोथ द टीम्स, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू बेसिकली चैंपियंस लीग, कम ऑन, यू कैन जस्ट हैव वन चॉइस यार, यू कैन नॉट हैव बोथ, लेट्स बी ऑनेस्ट। और बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आई मस्ट से कि आपको तो लगेगा यार कोई ब्रिंग ऑन एनी टीम यार, योर as much as I hate saying it, the reality is Real Madrid are champions of the world. 2 दिन पहले हमसे लिए थे यार, तो congratulations for that, Real Madrid fans. But Davis has been starting off the bench in the last few games. That's true, but Zishan Aram Khan, यही मैं बोल रहा था, maybe this was the time that he had to start. लेकिन वही है, maybe जैसे फतेह ने बोला, पवार्ड likes kind of playing more centrally, एक extra protection था for the center backs, क्योंकि we all know even Lucas Hernandez for example is injured and he's not available, तो बायर्न के सेंटर हाफ को extra protection मिलेगा, plus the fact that he is French, तो हो सकता है अगर एम्बापे काइंड ऑफ कम्स ऑन, लेट मी सी, आई थिंक प्रीटी श्योर एम्बापे बेंच पर है, ठीक है, एम्बापे बेंच पर तो डेफिनेटली है, तो इसलिए शायद दैट माइट बी वन वन रीजन ऑफ दैट। माजरावी इंजर्ड है पुतिन, माजरावी हैज बीन इंजर्ड एंड दैट इज वन रीजन व्हाई कैंसेलो ऑन लोन हैज बीन ब्रॉट, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली बायर्न बीइंग बायर्न। हाँ, वो हम जाते हैं। यस अभिषेक, बिग अप टू फतेह, एब्सोल्युटली टैक्टिकल डिस्कशन हो गया, नहीं वही कर रहे हैं, अभी वही कर रहे हैं, इट्स 3 at the back। हाँ, दे विल स्टार्ट 3 at the back, बट अगेन अंकित आई एम टेलिंग यू द वे दैट PSG आर एट होम, और मैं यहाँ पर फतेह मतलब आधी दुनिया से ज्यादा आई थिंक जा रही है बायर्न के साथ, मतलब मेजोरिटी इज बायर्न। I Hmm. have a strange feeling. Yes, as much Hmm. as PSG have lost 4 games in this calendar year, which is so unlike PSG, people are वो फुटबॉल का है ना, we are very recent bias रखते हैं हम as football fans। बायर्न अबाउट 3 weeks ago सब लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, दे हैड गॉट 3 बैक टू बैक ड्रॉज, ठीक है, Yeah, अभी yeah. 3 बैक टू बैक विंस अभी आए, तो देन ऑल ऑफ सडन वी आर लाइक बायर्न इज फॉर्म, एक्चुअली नॉट। सो आई स्ट्रेंजली फील एट होम, कंसिडरिंग मेसी इज बैक, एक मोरल बूस्टर होगा, I feel they might have to kind of just take on Bayern, because Bayern defensively are not as sound as what they could have been in form। और Hmm. इसलिए मैं बोलता हूँ अंकित दैट दे माइट एक्चुअली इन गेम, आप देखते हो जैसे हमने बोला बायर्न माइट गो 3 द बैक, PSG might go 2 the back while in game, because of the fact that they can offer more width, or maybe just say more
क्या बोलते हैं, with Goretzka and Kimmich kind of helps with Danilo Pereira also being there in midfield. Just saying, the way possible है Coman wing back. Yes, Coman has been the man in form क्योंकि last game में he got a couple of goals if I'm not wrong. But anyway, Bayern want to create 4 versus 4 midfield versus PSG. Exactly. ये बोल रहा सार्थक, PSG might have Danilo Pereira might be in the floating role, so that might be possible जो Danilo Pereira करते हैं. But if you are telling me फतेह, क्या लगता है व्हाट विल बी द मेन आउटकम? अभी मुझे लगता है इट माइट कम ऑफ द बेंच, बट एज जस्ट 11 स्टार्ट्स कौन सा मेन बैटल रहेगा इसमें? व्हाट आर यू सीइंग द मेन डिफरेंस मेकर इन दिस? See, I was watching some old clips between where वापस चेंज हो Kimmich गया देखो। and हाँ, ये लोग मेरा सुन रहे हैं भाई, ये football.com, हेलो हेलो हेलो। मैं जैसे yeah, बोला absolutely. टैक्टिकली, See, ये लोग yeah, मेरा yeah, सुन yeah, रहे हैं। yeah. See, that is what like that is. I चलो think कोई yeah, नहीं। it's going to be something like this. At least that's what we hope. But I was watching those old clips, and there's some sort of rivalry or heat between Neymar and Kimmich. Is there? Remember, there मुझे was there was some bad blood between Kimmich and Neymar. I think that's Kimmich to generally the warrior, यार. I'm pretty sure he's had something or other with most of the big guns opposite. yeah. Especially जो बारसा connection रखते हैं ना. Let's be Huh. honest, Bayern Barca, that rivalry has been No, created over the last when couple of when they years. played Inter, he was right up into Lautaro's face, and Lautaro Martinez didn't know how to react. Like, but I mean, Hmm. I think there is that sort of rivalry. So that is something that I'm looking at. And other than that, I mean, Kimmich Muller Gnabry on versus. the bench, Bayern के लिए Mbappe यहाँ पर bench पर है. तो it'll be interesting to see what actually happens from the bench as well. Do you काफी. think that Ramos and Marquinhos will easily handle Choupo-Moting? And how much of a No, miss is Mane? Like, I think Choupo-Moting is underrated. I know हम हंसी उड़ाते हैं बहुत बार, लेकिन for me the guy is as in he has that burst of pace. तो वो एक चीज है. I think Ramos, Marquinhos has somehow not been that player last few months में, both for Brazil as well as for so, so, PSG. तो so मुझे लगता okay, है so Danilo Pereira का Neuer. इसलिए वो फ्री रोल है, एक्स्ट्रा रोल. No, but Bayern are missing Neuer, Davies, Muller. Muller and Davies are on the bench, and Mane. Like these are the four guys that, and Mazrui, five. Yeah, they are. So एक्चुअली these are यार टेक्निकली देखा जाए तो बायर्न आर मिसिंग मोर पीपल, यू आर राइट. yeah. फतेह भाई, इसलिए फतेह तो ओजी. अब देखो ना, लेट्स सी द इंजरीज यहाँ पर. यस, तो लूकास हर्नांडेज, नॉयर, माजरावी, माने, ठीक है. और यहाँ पर मुकिएले और सैंचेज. टेक्निकली स्पीकिंग, एज इन यू राइट, टेक्निकली यू राइट. लेकिन अगेन मतलब आई स्टिल फील, मतलब स्टार्टिंग 11 इफ यू आर कॉलिंग मी, Hmm. वुड यू नॉट से बायर्न इज स्टिल लुकिंग स्ट्रॉन्गर इन द स्टार्टिंग 11? क्योंकि यहाँ पर Bayern, मतलब yeah. Based on सोलेर, this, because I don't know about Zaire Emery. yeah, I he's a don't know youngster about. who's doing very well in the last couple of weeks, तो ये बोलना चाहूंगा. Okay, okay. So is that संजीव टेंशन ही, एक सेकंड में एड्रेस कर ले तो भाई. संजीव भाई, बारसा फैंस टेंशन नहीं लेने का भाई. देखो, वी ऑल लव फुटबॉल एंड सम पॉइंट यू विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस कि नेक्स्ट सीजन हम आएंगे. वैसे थिंक ऑफ मी यार, मैं चेल्सी फैन हूं. मतलब वी आर 10th इन द लीग. नेक्स्ट सीजन वी माइट नॉट बी इन द चैंपियंस लीग, बट स्टिल इट्स ऑल अबाउट फुटबॉल ब्रो. दैट्स व्हाई आई लव फुटबॉल. बट एब्सोल्युटली भाई, लेट्स सी, जबार भाई विल कम टू चेल्सी एज वेल, एब्सोल्युटली. ओके, ये क्या ब्रो लिविंग यू आर रियल मैड्रिड फैन, इज इट? भाई मैं व्हाइट फैन हूं, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी क्लब ब्रो, ट्रस्ट मी. आज टोटल न्यूट्रल हूं मैं, बट कोई नहीं. मुलर नॉट स्टार्टिंग टुडे एज सच अ बमर. वी हैव नॉट डन वेल इन हिज एब्सेंस. एग्जांपल इज द स्टार्टिंग 3 मैच ऑफ जनवरी. हाँ, दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट. क्योंकि यार अगेन मैं आई नो बहुत अभी पीएसजी बायर्न की बात हो रही है, विल कम टू मिलान स्पर्स, लेकिन फतेह, डोंट यू थिंक सो अबाउट दिस थिंग? मुलर हैज दैट, क्या बोलते हैं, एक कप गेम मेंटालिटी जो रखता है ना मुलर, दैट इज yeah? समथिंग दैट माइट दे मिस इट. और एक ऑलमोस्ट बोलते हैं ना डिफाइंट, ही इज डिफाइंट कि यार ब्रिंग इट ऑन वाला चीज. तो डू यू थिंक दैट इज समथिंग दैट नागल्समैन compared to maybe earlier managers of Bayern Munich might be missing it? Yeah, you're saying कि नहीं यार, come on, credit No, where is due. Choupo-Moting, from what Musiala I are doing from the what job. No, but from what I know, I think Nagelsmann is under a lot of pressure. This game could make or break his Bayern career, irrespective of what happens in the Bundesliga. I don't think the Bayern hierarchy are completely convinced by Nagelsmann just yet. I have no clue whether Tuchel or Klopp are going to be available, who they're going to go with. But I have been hearing murmurs that at least they're not happy with Nagelsmann. So this game is massive, and the kind of pressure that he has. So that's why it's really interesting that there's no Muller.
I would have thought that somebody would निश्चित have का कमेंट experience. देखो, मतलब दैट इज Yeah, थॉमस मिलर ब्रिंग्स यू, मतलब yeah, एटलीस्ट इज देयर ऑफ पिच इफ नॉट ऑन द पिच, बट अगेन रिमेंबर एज इन देयर इज अ बेंच अवेलेबल, सो मुलर इज ऑन द बेंच, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मुलर है, mm, ग्नाब्री है, ग्रैवनबर्ग, हु नोज राइट, अगर दानिलो परेरा खेलता है इन मिडफील्ड like the mm. website is saying for now, maybe just they might actually make use of him. Remember Sabitzer चले गए हैं अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो that is an Yeah, option that's for another. Bayern as well, right? Yeah, um, exactly. हाँ मैं देखा था गौरव भाई, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, चलो भाई मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, भाई हम बाय पीएसजी बायन पर आएंगे जस्ट इन अ मिनट, क्योंकि मैं एटलीस्ट लाइनअप दिखाना चाहता हूँ, देन विल कमिंग वी आर कमिंग बैक टू पीएसजी बायन। भाई सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू आर न्यू टू द चैनल, बट this is what is it bhai, Milan have been totally out of form, if not for Olivier Giroud, the OG. But this is what they are starting with, kind of predictable. Tomori not being there is a huge blow for me. Of course Tata Rasano bhai, we are making do with whatever we can best, लेकिन बेनेसर also obviously वो available नहीं है, that there's a problem. तो मतलब क्विक थॉट यहाँ पर अगेंस्ट दैट मिडफील्ड ऑफ स्पर्स जो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि बेंटनकर हैज गॉट अ सीजन थ्रेटनिंग इंजरी एसीएल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आई बिलीव हॉयबर्ग भी अनअवेलेबल, so what are you thinking about that? Is it the midfield battle or you think it's too much quality in Spurs? Too much quality in Spurs. What? Okay. No, I भाई don't हैरी see that. केन, सॉन और कुलुसेस्की तो है क्वालिटी यार। Perisic, Son, yeah, Kane, but at the या same time, I पेरिसिच would आल्सो। not say. I think it's very equally matched. I would not say. See, okay, so Tomori is coming back from injury, so he's not there. They are in bad form, AC Milan, but they turned it around this weekend, and Torino are a very difficult team to play against. So, no, it's not a Liverpool jacket, but yeah, I thought it's Atletico. no. So anyway, man. So coming back to AC Milan, Benacer is the main miss. Yeah, Benacer is the They main can miss. still do without Tomori, but their game doesn't function without Benacer. And what's interesting is for the last 3-4 matches, Pioli has been going with this three at the back, and I have no idea why they're doing that because they were so successful in that 4-2-3-1. So I and you're the AC Milan fan, so I am at a loss. आई एम नर्वस, सच में, Yeah, इसलिए तो मैं I'm at a इंटर loss. मिलान फैन से पूछ रहा हूँ, कैन यू इमेजिन दीस आर द डेज। Yeah, because no, but I don't understand what exactly happened. Yes, they were in bad form when they went into the World Cup. Yes, they were knocked out of those two cup competitions, but that doesn't really matter that much. Why are they experimenting with three at the back? I have zero idea. Like I don't even know why they play three at the back against Inter, because we are used to it, but they're not used to it. So नहीं मतलब मेरा रीजनिंग है, मतलब मैं पहले फतेह का पॉइंट सुनना चाहता हूँ, मैं चैट भी सुनना चाहता हूँ। and यहाँ Ankit, संजीव, हाँ, there was Pioli has beaten Conte with the 4-2-3-1 twice in derbies. Like I think once in that derby, there was that yeah. one derby, his Pioli's first derby where they were leading 2-0 at halftime, and their formation was 4-2-3-1. They also beat Conte's Inter when we won the league. So why is he going with this three at the back? I genuinely do not know. Yeah, there is a logic to it, and of course we are talking about both the matches side by side people, तो बने रहना भाई, सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए। और मसूद पता नहीं है आपको कहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स यार, ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एज वेल एज बाबा यार, एब्सोल्युटली, एज वेल एज फतेह यार, बिग अप टू फतेह, फतेह ओपन द चैट एवरीवन, कम ऑन। बट रियल मैड्रिड का मैं पता नहीं कहाँ से स्टोरी मिल रही है आपको मसूद, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे आप मेरे कंटेंट देख सकते हो दोनों ही चैनल्स में, आपको पता लग जाएगा यार, मैं चेल्सी फैन हूँ, मिलान फैन हूँ, बाकी मैं न्यूट्रल हूँ, सिंपल एज दैट। मैं, मुझे फुटबॉल मस्त अच्छा लगता है, मैं और फतेह देखते हैं भाई दोनों 25-25 साल से। तो भाई वी आर लाइक क्रेजी फुटबॉल लवर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई एब्सोल्युटली, एंड संजीव is also an AC Milan fan just like me. His second club is also AC Milan. I had forgotten. Sanjeev, big up to you absolutely. Tomori not even on bench. Exactly. So the injury issues of AC Milan I think is well Yeah. documented, और वो एक problem definitely आएगी। लेकिन again like I said, Tottenham का भी midfield is very light. In my personal opinion, it is a game potentially full of mistakes, लेकिन Hmm. कहीं ना कहीं बहुत सारे सब प्लॉट्स, इसलिए ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैं कोई दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, पता नहीं फतेह विल रिलेट टू इट वेरी वेल। देयर इज हिस्ट्री टू मिलान एंड टॉटनहम, फतेह आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर। Yeah, 2011, 12, Gattuso, and all the exactly. See, exactly. So दैट वाज समथिंग मैन, गूज बम्स। that was और something. फतेह मैंने कल बाबा से भी सेम क्वेश्चन पूछा था, डू यू रिमेंबर स्पर्स ऑब्वियसली वेंट थ्रू एट द राउंड ऑफ 16 Yeah. 2011 में, 1-0 they won at San Siro, and then it was एंड 0-0 at हु White स्कोर्ड? Hart Lane.
Who Who scored? scored? Yeah, Was it the tall guy? Crouch. Couch. Yeah, Yeah, yeah. yeah. Yeah, so the thing is Harry Kane is crucial. Remember, और मैं सब प्लॉट क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों ही गेम्स. इसमें कुलुचेव्स्की, नाउ कुलुचेव्स्की हैज प्लेड मिलान umpteen number of times when in Italy, हम जानते हैं. एंटोनियो Hmm. कॉन्टे हिमसेल्फ, इंटर मिलान कोच, भाई Yeah, यूवेंटस कोच, Juventus coach. ही नोज मिलान इन एंड आउट. इटालियन यार, आप बोल सकते हो. एट द सेम टाइम भाई स्पर्स के साथ इतने सारे मिलान प्लेयर्स हैव बीन लिंक्ड इन द पास्ट. टोमोरी अगर खेलते तो बहुत होता. जिरू हिमसेल्फ, जिरू एक्स आर्सेनल एक्स चेल्सी, व्हाट कैन बीट दैट यार. भाई आप देख रहे हो जिरू प्लेइंग अगेंस्ट स्पर्स इज ह्यूज न्यूज इन इटसेल्फ. लाइक वो रेडी रहेगा इस गेम के लिए, ट्रस्ट मी ही विल. एंड मैं बोल रहा हूँ थ्री द बैक वाला क्वेश्चन पूछा था फतेह. देखिए Hmm. फॉर मी क्या हो रहा था, एसी मिलान फ्रॉम द एंड ऑफ लास्ट सीजन, इनफैक्ट पीपल डोंट रियलाइज, इट्स लाइक बॉल टू लियाओ एंड Yeah, इंशाल्लाह. yeah. वो हो That's रहा था, yeah, yeah. सिंपल एज दैट. ठीक है, That's it. Yeah, yeah. बाकी जीरो शुड बी देयर बट ही सपोर्ट सपोर्ट Yeah, सिस्टम yeah. ऑलमोस्ट. और बाकी कुछ नहीं. बेनेसर, यू सेड इट राइट. एक तो बेनेसर का कॉन्ट्रैक्ट नया साइन किया, उसके Yeah. बाद थोड़ा सा ढीला पड़ गया एंड देन ऑब्वियसली द इंजरी हैपेंड. ठीक है. Injury. Yeah. टोमोरी, टोमोरी आफ्टर द चेल्सी गेम वो हिल गया बंदा, क्योंकि उस गेम Hmm. में जो रेड कार्ड मिला ना उसके बाद हिल गया था. बैकलाइन जनरली डिपेंडेंट अ लॉट ऑन टोमोरी. और चेंज क्या आया, इट वाज अ गुड चेंज. कलाब्रिया केम एट राइट बैक एज obviously being a skipper, right, being captain. So this guy came, लेकिन इतना समय के बाद आ रहा है ना, तो somewhat I think the leadership element did not really take to the level that वो expect कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं that voice was not on the pitch and they needed to kind of shore up. Problem यहाँ थी, Pioli went to three at the back just before the Milan derby. Now he should have done Yeah. that one match before, तो थोड़ा used to हो जाएगा. और वहीं Yeah. confidence has gone from bad to worse. But again, people, I know people are dropping by. People, for whatever reason, I'm telling you, trust me, both the games are going to be really, really good. Even Ankit, Milan Spurs will be crazily good. Did तो हम दोनों did ही करेंगे. did you and I have that watch along in England versus France? Giroud versus Kane in that game. I think Giroud scored. France versus England quarterfinal, Oh the World Cup. yes, 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 yes. And there was Kane and with the missed penalty and all that. So round two. I mean, let's see. We saw Yeah. that match. I think you and I we were Yeah, we saw watching along. together, Yeah, yeah, absolutely. yeah. Exactly. Bhai, Pudin, to be, with all due respect to AC Milan, मेरी उनका club है, I would love to have actually see him, but I don't see it happening. To be very Yeah. honest, I think Tuchel is waiting for Real Madrid. That's what मेरा gut feel बोल रहा है. But again, let's come to the PSG Bayern game. I know people want to listen on that first in detail. By people who are joining late, हमने already briefly we have discussed tactics, we have shown the lineups, और absolutely हमने बात किया है. Again, we are going to discuss in detail अभी, but do not forget to hit that like button. भाई सब लोग जो भी यहाँ पर है like button दबा दे, और साथ साथ में मैंने community post किया है. All you can do is just like that community post as well. YouTube याद दिलाया कि हम live है, not just for pre-match but also watch along. और मैंने ट्वीट भी किया है, so if you can copy this link and retweet, it will be absolutely brilliant. Nothing better than that. But yes, absolutely मैं अब लेने वाला हूँ आपके जो comments आ रहे हैं बहुत सारे, and remember there's always a way to kind of prioritize your comments as well. We can do that, but let's follow this like target and subscribe target अभी ले. चलो ठीक है, तो स्क्रीन पर देख ही रहे हो आप. Okay, if I was a journalist covering Spurs away in Milan, I already have Valentine's Day massacre tip. Oh my god, nice. So निश्चित भाई, Spurs and Milan scoreless coming up at the end of the game comes. Divock Origi आएगा second leg में, trust me. First leg में I can see mistakes क्योंकि midfield both the teams are missing players. I think mistakes होंगे absolutely. Ibrahimovic is not in the squad, yes, but again let me take the comments of the Bayern PSG game यहाँ पर. I think I just want Messi to score. Other than that, don't really care who wins. Just give us a good game. भाई honestly good game तो I think, मतलब I am expecting, पता नहीं हम build कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन remember भाई हमने वो भी एक गेम साथ में देखा था. The matches that me and Fateh watched together, touchwood अभी तक have been really good, and one of them was definitely Inter Barca यार. Remember the 3-3, right? Oh, that Crazily was good game. yeah, that was my favorite game of last year. Like even better than the World Cup final for me personally. Yeah, बिल्कुल. बिग अप टू मानव ना, क्या हाल है. हाँ चलो, यहाँ पर डिफेंस की बात कर रहे थे. चलो डिफेंस पर थोड़ा सा मेरे दो शब्द सुनिए आप अभी. देखिए यार, ऐसा है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, आई थिंक पीएसजी बीइंग एट होम एंड Bayern Munich having a newish defense themselves. Why? Because Cancelo, as much as वो खेला है लास्ट दो तीन गेम्स में, he is still fairly newish to the Bayern squad. Plus Cancelo likes kind of bombing forward, plus वो inward भी आता है. He's more of an inverted wing back at times.
प्लस पावार्ड के पास इतना पेस और रिकवरी नहीं है कंपेयर टू व्हाट मे बी एन अल्फोंसो डेविस लेफ्टिस्ट साइड में लाता. तो कहीं ना कहीं आई थिंक पीएसजी जाएंगे विद वेयर नूनो मेंडेस कैन रियली बॉम ऑन, स्पेशली जब एम्बापे नहीं रहेगा पिच पर. जब एम्बापे रहेगा तो एम्बापे प्रॉब्ली विल डू दैट, बट नूनो मेंडेस टू बिगिन विद he'll really bomb on. To begin with, I can see PSG going five at the back with Danilo Pereira kind of dropping back. लेकिन इवेंचुअली क्योंकि पीएसजी आर एट होम राइट, और मुझे लगता है as much as people are really saying that बायर्न धो डालेगी पीएसजी को, और हो भी सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन द रीजन आई हैड प्रेडिक्टेड अ ड्रॉ, रिमेंबर कल मैंने लाइव स्ट्रीम किया था प्रीव्यू में, मैंने बोलता ड्रॉ होगा मुझे लगता है, एंड विल बी हाई स्कोरिंग ड्रॉ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दोनों ही टीम्स में मिसिंग है प्लेयर्स. ऐसा नहीं कि सब लोग आ रहे हैं प्रॉपर एकदम. रिमेंबर बायर्न म्यूनिख आल्सो हैव मिसिंग प्लेयर्स यहाँ पर, प्लस पीएसजी का तो हमें पता ही है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट टुवर्ड्स द एंड पीएसजी माइट हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और maybe the fact is with Bayern missing a couple of player substitutions, on the bench, PSG have someone like an Mbappe to call. PSG have a Fabian Ruiz to call, a Vitinha to call. तो हो सकता है वो लोग shore up करेंगे midfield को and they kind of go 4-3-3. That is quite possible as well. जो आपको दिख रहा है at times, but to begin with मुझे लगता है they'll go five at the back. क्यों? Because of again Choupo-Moting, Coman, Musiala. These are the three main weapons. और आपका supply आ रहा है किमिक से, तो वहां पर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दीज थ्री टू बी प्रोटेक्टेड. रामोस, मार्किनियोस, भाई उनका जो पेस था वो नहीं है, वी ऑल नो दैट, और हकीमी, मेंडेस बोथ लाइक टू बॉम ऑन, तो दे नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड दनीला पोरेरा. पता नहीं ये है, लेकिन बायर्न रिमेंबर द फैक्ट इज सॉमर खेल रहे हैं, एज मच एज आई रेट सॉमर, ही इज नॉट अ नॉयर राइट. तो वो ऐसे स्वीपर कीपर नहीं करेगा टेक्निकली जितना नॉयर करता है. तो कंसिडरिंग दैट आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू कैन ऑफ, मतलब द प्लान फॉर पीएसजी शुड बी टू get Bayern out of their box, right, as much as possible. So I don't know, maybe Carlos Soler might play that important role. आज तो मुझे लगता है क्योंकि he will be in that free role attacking wise, और Danilo Pereira free role in defensive wise. So I think ये दोनों का बहुत ही crucial impact हो सकता है, because of which maybe it will be difficult to mark either of them. इसलिए शायद अगर वो लोग मेसी पर फोकस कर रहे हैं, कंसिडरिंग मेसी इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एंड ही इज बैक एज वेल. देखते हैं, आई डोंट नो. चेल्सी वाला कब डिस्कस करेंगे भाई? कल पूरा हमने डिस्कस किया था करीबन 45 मिनट्स, एंड अगेन विल बी डिस्कसिंग. यस आई नो चेल्सी का स्क्वाड लिस्ट आ गया, द स्क्वाड व्हिच हैज ट्रैवल्ड टू डॉर्टमंड. आई विल बी शोइंग दैट एज वेल. अगेन किक ऑफ शायद 1:30 है, सो वी हैव टाइम. गौरव मैं स्टार करके रखता हूँ बिल्कुल. Tuchel derby, yeah. Technically without Tuchel though, that's actually correct. आशीष, नाइस टू सी यू ऑलवेज ब्रो. कम ऑन भाई, सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए. मानव तो बोल रहे हैं फतेह, पीएसजी आर इन फॉर हैमरिंग फॉर श्योर. 4-4-2 डायमंड नेवर हेल्प्स their cause. Plus, no one who is direct. Ekitike should have started. Expecting Messi Neymar to run in behind is a recipe for disaster. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है that is the reason why Carlos Soler is playing. Remember, उनके पास है नो टीनेजर खेल रहे हैं, डिफेंसिवली ही नीड्स मोर हेल्प, ठीक है, फ्रॉम अ दानिलो परेरा एंड अ कार्लोस सोलर ऑन द विंग. लेकिन मुझे लगता है दैट माइट बी अ थिंग. अब बायर्न हो सकता है, द फैक्ट इज कैंसेलो इज देयर, ठीक है, डिफेंसिवली इज नॉट एज गुड एज मे बी यू वुड थिंक, बट ही इज ओवरऑल ब्रिलियंट, नो टू वेज. मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक दिलिक का, डू यू एक्सपेक्ट फतेह दिलिक विल बी ऑन मेसी ऑल द टाइम? That'll be his role. One man will be on Messi, right? Pretty sure. He should be. I was watching that cup game where a lot of people were criticizing Messi that he wasn't making those direct runs. He was passing the ball around. He seemed disinterested. I don't know. I only saw those tweets. Marseille So wala, right? 2-1, yeah. yeah, exactly. And things get lost in that. So if it's a case of that Messi showing up and there's fatigue and maybe he's not that invested in PSG, then Delict should have no problems. Having said that, what we remember in Italy from Delict is a defender who's very clumsy. And imagine if you're clumsy against Lionel Messi. That's a recipe for disaster. Yeah. अच्छा, by the way, Manav has a brilliant point यहाँ पर. Manav, OP यार, absolutely मैं तो बोलता हूँ. Fateh OP, Manav OP in the chat. Pereira in as a DM, zero ball playing. Lot depends on Verratti and Zaire Emery. I just feel Bayern will press PSG into 2-3 defensive errors minimum, not starting Ekitike. Good luck, Galtier. भाई again मैं बोल रहा हूँ, Pereira का job will be like a floater and ball clearance. Simple as that. I don't think No. Pereira को he should dwell on the ball, right, Fateh? Okay, let's Danilo first Pereira. discuss Galtier as well. Has he managed a Champions League round of 16 or a quarterfinal before, or is this his first time? Yeah, he probably hasn't, right? He As far as I hasn't. remember.
Yeah, so this is like his first time because Nagelsmann has been a European regular with Leipzig and last year as well, I think with Bayern. So okay, yeah, he's made a lot of errors too. But if Gaultier and like Manav says that Ekitike is the man that he needed and he doesn't have them, then wow, I mean, that's his inexperience showing. Perhaps. What do you think, Ankit? Like No, I, Gaultier I is I feel inexperienced. that he's kind of gone safe with trying and tested. Ekiteki is good. Manav, Hmm. again, much respect and love, bro. You know it. But kahin na kahin, that is why we discuss. I kind of disagree that Ekiteki from the beginning, as in running in behind wala cheez beginning में Bayern नहीं देने वाली भाई. Bayern का away game है. And as much as Nagelsmann would like them to play the natural game, I don't see that happening much. So I think it has got to be, as in the free man role has to create for them. And I know बहुत ज्यादा हम वो बोल रहे Soler is more like a ball carrier and a runner with the ball. He's not like a creator. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है with Messi and Neymar being marked with the three-man defense, it comes down to Soler. And remember, Verratti is back, Manav. Everyone in the chat, Verratti is back. Verratti has that ability to get pass the ball or get the man. So I think Verratti being back, I think is a huge plus for Galtier. And I agree that कहीं ना कहीं मुझे लगता है that Danilo Pereira is like you're asking for trouble वाला चीज वो है. I agree with that. मैं कभी रेट नहीं किया बंदे को. लेकिन अब वही coming back to the bench. Only thing is they would have gone with the Vitinha or a Fabian Ruiz. Maybe Danilo Pereira more like comes across like a destroyer proper. ठीक है. और वो एक बंदा है जो शिफ्ट कर सकता है टू बैक फोर टू वर्सेस अ बैक फाइव वाला चीज जो सेफ्टी वाल्व व्हेन अटैक व्हेन नीडेड. तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज इन वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ टीम्स वो कर रहे हैं. तो आई थिंक Danilo Pereira आई थिंक स्ट्रेटेजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बट with the press of Bayern, quite possibly Danilo Pereira ही है जो मिस्टेक करता है. तो आई नो आई हियर एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो. लेकिन अगेन अगर वो पीएसजी को करना था, दे हैव टू आउट थिंक बाय बायन. They had to do something else, in my opinion. Bayern look stronger on paper, at least just starting 11, despite Bayern's injuries, because Bayern की form है. ठीक है. Because Bayern का ज़्यादा experience when it comes to winning Champions League in the squad, that is there on the bench as well. So I think कहीं ना कहीं they had to go, and because of Galtier का you can say inexperience, but the fact is he's believing in Pereira more than going with a Fabian Ruiz in midfield or Vitinha, or maybe even Ekiteke जैसे आप बोल रहे थे मानव. So I think options है. काफी options है. Again, maybe just maybe he could have gone with a proper back three with Kimpembe being there. वो एक पॉसिबिलिटी है. रिमेंबर किम्पेम्बे रिसेंट जो गेम हुआ था वीकेंड में अगेंस्ट मोनाको, वहां पर किम्पेम्बे वाज द मैन हु एक्चुअली उन्होंने बोला था कि कम ऑन we have to do more etc. So he's more like a proper PSG guy. तो कहीं ना कहीं that is important. But to begin with, I think it's about that flexibility in tactics that Galtier has gone with. I think maybe Galtier देखना चाहते हैं कि what is Bayern coming up with. I know kind of predictable है, but at least on the pitch क्या करते हैं वो. Based on that, maybe that he will ask Danilo Pereira to do a certain job. Again, मुझे लगता है Delict will be directly on Messi. चिपका रहेगा बंदा. और रिमेंबर अगर डिलिक्ट जाता है फॉर अ रिकवरी एक्सेट्रा, वो फाउल करने वाला है, तो भाई डिलिक्ट विल बी ऑन हिम, व्हिच इज नॉट अ ग्रेट मैच. मेसी शुड बी विनिंग दैट इन माय ओपिनियन. लेकिन रिमेंबर मेसी इज बैक फ्रॉम इंजरी. उसके कारण क्या हो सकता है दैट बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू हैव डिलिक्ट वन मैन ऑन मेसी, I'm just saying that Danilo Pereira being there starting maybe in midfield at times, Goretzka, Danilo Pereira cancel each other. ठीक है. Verratti, Kimmich और Carlos Soler might be that free man. I'm just saying there is a possibility. यहाँ मैं बोल नहीं रहा हूँ कि होगा. मैं बोल रहा हूँ कि what might be possible, what is the best case scenario for PSG to actually do that, in terms of क्या कर सकते हैं for them to take the attack to Bayern, and that might be the best case scenario. Why Mbappe benched? भाई बिमलेश सिंपल सा बात है. चैंपियंस लीग एज मच एज मैंने देखा है, मेरा पहला चैंपियंस लीग मैच एटलीस्ट लाइव ऑन टीवी वाज 1999. ठीक है. दैट वाज बेसिकली 1999. ऑब्वियसली द बिग मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम वन, एंड देन वी हैड द फॉलोइंग सीजन जहां पर चेल्सी बार्सिलोना मीट की थी इन द नॉकआउट स्टेज आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो वो आई रिमेंबर फ्रॉम देन ऑन चैंपियंस लीग इज ऑलवेज अ चेस गेम. हाँ, पहले अवे गेम्स गोल्स काउंट होते थे, अभी काउंट नहीं होता. आई अंडरस्टैंड दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे ये 180 मिनट्स का मैच होता है. और अगर आप एम्बापे और मेसी दोनों जो इंजरी से बाहर आ रहे हैं, और दे आर आर्ग्यूबली two of the best three players in the world right now. Correct me if I'm wrong, anyone who disagrees. Right? Maybe best five players in the world, definitely on form as well. So as much as PSG form में नहीं है, I think it's crucial that both of them are fit for the second leg, जहां पर you give more than 100%. पहले leg में it'll be more like watch and see what happens.
अगेन एम्बापे बेंच पर है, रिमेंबर बिप्लेश आपने भी बोला, तो ही कैन कम ऑन एट हाफ टाइम. रिमेंबर अगर इफ दे नीड गोल्स एम्बापे इज लाइक बूम, वो वाला फैक्टर. एंड पवार्ड अगेंस्ट एम्बापे, मच एज पवार्ड फ्रेंचमैन है एंड ही लाइक्स टू काइंड ऑफ टक इन, मुझे लगता है इट्स अ नो ब्रेनर एम्बापे टू बी द विनर, नो टू वेज अबाउट इट. और मे बी ही जस्ट वांटिंग थोड़ा सा सिक्योरिटी एट द बैक एंड देन मे बी बिल्डिंग ऑन इट, गेटिंग ऑन एम्बापे विद अ बर्स्ट ऑफ पेस इन द लास्ट हाफ एन आवर, मुझे लगता है कंसिडरिंग वो इंजरी से वापस आ रहे हैं. विराटी ऑल्सो एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है लीडा का, बिकॉज देखिए विराटी, मेसी और एम्बापे तीन जन आ रहे हैं प्रॉपर इंजरी के बाद, तो आई डोंट थिंक यू कैन रिस्क ऑल द थ्री टुगेदर. ही हैज जस्ट टू आउट ऑफ थ्री व्हिच इटसेल्फ इज मोर. Why Vitinha is not playing, मैंने अभी भी समझाया that the fact is Danilo Pereira brings across a destroyer वाला element, plus फतेह, Danilo Pereira has that ability, not a great ability but at least he has the ability to ability switch to back score. in the back five वाला Yeah, चीज. That is the only thing that I'm seeing, right? मुझे और कोई रीजन नहीं लगता, लेकिन जो यंगस्टर शुरू कर रहे हैं, that is, I don't know, do you like that fact that he's starting a teenager in a Champions League round of 16 for a that too surprise against element maybe? Bayern, who are. I mean, when you look at Goretzka and Kimmich in midfield, and you know that they've got all the experience in the world. So for Galtier, again, that's what I'm saying. Like, I do not know much about Galtier. I've only read good stuff. But if he's not managed a team at this level, and these are the kinds of changes that he's making, I mean, these are ballsy moves, very risky. So if it comes on, then great. But if it doesn't, then wow, they've got problems. They could narrate. This can't be coincidence. Uncle, the TV is off when Milan and Spurs play each other. A draw will be the best result for PSG. हाँ, मेरा तो prediction draw है. Again, I'll I kind of think break Bayern, up the prediction. but Bayern should go for the win then, because if as you are saying and as Mana was saying and as everybody else is saying that if PSG have these many chinks in their armor and there's no Mbappe today to worry Bayern, then I think they anything less than a victory then. I mean, initially I thought that Bayern were the one who have a lot of injuries and like I said, no Muller, no Mane, no Neuer, दे who डू else? दे, लेकिन वहीं पर पीएसजी की बहुत निंदा होती ना. भाई एक सेकंड, हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं भाई, लाइक्स कितने हुए मॉड्स एंड मेंबर्स एंड एवरीवन इन द चैट. भाई लाइक्स लाइक सब लोग देखे, सब लोग लाइक बटन दबा दिए. कम ऑन, इट्स जस्ट अ लाइक बटन. कम ऑन, लेट्स नॉट डू अ गॉल्टियर, लेट्स एक्चुअली गो फॉर द किल. लेट्स हिट दैट लाइक बटन एवरीवन. भाई सिंपल सा अपना टारगेट है, ठीक है. लेट्स रीच दिस टारगेट एज सून एज पॉसिबल. अगेन आई रिपीट, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, मैंने ट्वीट डाला है. If you can like that also, it will be brilliant so that people know that we are live and YouTube promotes our channel, because we all know this is the night that we all love, and UCL on Almighty Blues, and of course thanks to Fateh and everyone in the chat, everyone here. यहाँ पर I think एक question मैं ले रहा हूँ that कहीं ना कहीं I think Fateh, you were asking about in a way Galtier itself, right? As in for me, yeah, I think PSG for me they have to kind of at least reach the final minimum. yeah, semi-final or at least. But Yeah, and then, that stages basically. but what happens if they go out this year? Because I heard that rumor again that Mbappe is talking about Real Madrid again. यार Messi एक could तो be leaving, and they have a हाँ, new sporting project. These youngsters coming in, and then if that is the case, then I think Gaultier is the right man, and they're getting Skriniar in the summer, so defensively they'll be, या एक तो you वहां know, भी गलती हुआ. एंड अगेन यू आर आस्किंग अबाउट द स्क्वाड, राइट? जनरली फॉर yeah, एग्जांपल स्क्रीनियर, आई थिंक yeah, पीएसजी में कहीं ना कहीं ईगो ईगो शो होगा. एंड आई थिंक दे आर एट सम पॉइंट, and it's a fact, somewhere in the line I think they are thinking that we are PSG, we can kind of get any player, we have the pull. They have lost two players इस विंडो में. mm, एक तो mm, स्क्रीनियर just for mm, about what 7 8 10 million maybe, right? And for yeah, PSG is just by the way people, yeah, ठीक yeah, है वो. Second reason is Ziyech, and that is because of Chelsea, you can say. ठीक है, huh, लास्ट मिनट yeah, में जो yeah, हुआ, yeah, जो भी आप बोलो कि यार yeah, yeah, yeah. सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वो सब ऐसे ही है. पता है एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से पॉटर की माइंड बदल गई, मुझे लगता है. अभी थोड़ा सा आई नो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, लेकिन 3 बार आप गलत नहीं कर सकते हो इन सच अ सिनेरियो. बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, पीएसजी कहीं ना कहीं हैवंट प्लान्ड वेल फॉर देयर सक्सेशन प्लानिंग, क्योंकि दिस एंटायर सीजन अंडर गॉल्टियर ना, गॉल्टियर क्या है, मेन चीज क्या किया उन्होंने. आई थिंक ही हैज फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर टू गिव मेसी एंड नेमार दैट स्पेस. मेसी एम्बापे नेमार को स्पेस दिया था कि भाई आप जाओ जी लो अपनी जिंदगी वाला चीज ऑन द पिच, और वो किया था. अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि आई थिंक गाल्टियर डिड नॉट रियलाइज दैट रेनाटो सैंचेज, भाई वो ही इज अ गाय ऑन क्रचेस हु समटाइम्स प्लेज वर्ल्ड क्लास फुटबॉल, एंड दैट इज द गाय ही इज. तो वो उसको एक्सपेक्ट करा कि दिस गाय विल रिमेन फिट ऑल द टाइम. देन व्हाट,
Danilo Pereira, यहाँ पर यही था. I don't know why players like Danilo is playing football who cannot run with the ball at all. And that's true. देखिए, while defensively he might be better than many people in that role, but in terms of the way PSG want to play, I think it's crucial हो जाता है because कहीं ना कहीं बॉल वहां रुक जाती है because Danilo Pereira को आ जाती है. वहीं पर Galtier has kind of put over faith in him, expecting maybe Vitinha and others kind of doing that level of job too soon. And I think that they haven't planned really well. But at the same time, if everyone is fit, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, PSG can beat any team in the world. और मैं दो राय नहीं बोल रहा हूँ. Yes, defense अभी भी थोड़ा weak है. Definitely, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe don't kind of say, wow, what a defense वाला चीज at this point in time in the careers. पता नहीं यार, मुझे लगता है overall I still feel Bayern Munich have the better squad. And वो आज हो सकता है दिखे, but because of that squad चीज ना, Bayern Munich are missing attackers coming off the bench. So maybe Gnabry is there. That is the best attacker that they can put. But again, Mbappe coming on the substitute versus Gnabry. मतलब क्या लगता है if it goes to kind of that level जहां पर draw हो रहा है and it you turn to the bench, which bench is stronger for you, Fateh? No, if Mbappe is the one who's coming on, and Ruiz obviously, and I mean, if Mbappe is the one coming on, then obviously I think we have to look at Yeah. PSG's bench with respect. But I don't think if there is that injury or whatever scare, whatever virus scare, I don't know what's going on at PSG, but whatever that scare is, so if they don't want to risk him, then Hmm. I think I definitely see Muller coming on later on in the game. So Yeah. yeah, I think the लेकिन Bayern bench is Muller will be more like मतलब for me he's like okay चलो fox in the box plus that kind of a player who kind of does the dirty things in that attacking midfield role, right? For me he's now that player. लेकिन again Musiala the magician भाई Musiala, how many people believe that Musiala is Messiala? Do you all believe? और by the way, product of Coman, just just to let you all know, I know वो proudly बोल रहा हूँ लेकिन actually मुझे रोना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, that is football for you. We kind of produce talent for the rest of the world as well. Just saying. Why Mane has become injury prone? पुदन पूछ रहे हैं भाई. I don't know if it's Mane becoming injury prone as such. लेकिन I think generally speaking, there's just too much football that Mane has played. Individually आप देखो तो मतलब जब लिवरपूल में थे, literally every game used to play. कहीं ना कहीं I think it'll take its toll, Pudin, and that's what I'm guessing. Plus the fact that I don't know, it could be a change of formation, change of role maybe. क्योंकि यहाँ पर I think the fact is they don't have like a proper center forward apart from Choupo-Moting being there. That Mane kind of takes more load compared to Liverpool में जहां पर साला लेते थे. I don't know, मतलब do you see a logic in why Mane becoming injury prone? Is just one of those things we are overlooking. it's just one of those things. I think we expected a lot from Senegal and Mane at the World Cup, and then he wasn't there. So Hmm. I'm sure he'll be back. When is He he was next? already injured, right? And he was already injured. See, that was Yeah, the thing. So you with don't know injury, World kind of, Cup. maybe he's pushed himself a little bit too much. जो हुआ है, by the way, Putin is a Chelsea fan, भाई. Chelsea के साथ काफी players के साथ हुआ है. And by the way, yes, Chelsea के squad भी हमने quickly दिखानी है आपको. Switch off play will be key. मानव बोल रहे हैं. Bayern have a solid right flank. Musiala, Kimmich holding the ball. Sane, Coman on the left, running behind Hakimi. Watch out for Goretzka pulling the strings. Yes, I think that's a brilliant point, Manav, the way he puts it. लेकिन remember even Goretzka मतलब मानव, I don't know about you, but for me when Kimmich does not play ना, Goretzka does not look his usual self. और कहीं ना Hmm. कहीं Kimmich being back and being back fresh is extremely crucial for me क्योंकि यार वो suspend हुए थे I think in Bundesliga after getting a red card. So I think कहीं ना कहीं that's really good for Bayern Munich, and yes they will be pulling the strings for me. But again Sane, great battle यार, मतलब I am really looking forward to it. Virati Mendes versus Sane Musiala. अरे भाई साहब, this is like extremely tasty kind of battle यार. मतलब imagine that battle, man. That's absolutely good. And of course यहाँ पर देखिए Hakimi and Cancelo दोनों ही भाई wing backs or full backs है who kind of like to bomb on. But this is great. But वही है. I think Manav has a point absolutely because midfield of PSG आप देखो there is a teenager plus there is Pereira versus Hmm. यहाँ पर you Yeah. have Kimmich Goretzka. वो How huge has difference. Soler been for them all season? Like, is this? Okay, Yeah, मतलब yeah, Soler can do. okay, He's more. right? He's like a number eight, really. If you ask me, he's Yeah. not really a core number 10. He's more like a number eight, the way I see it. But Hmm. again, भाई सब लोग again I request everyone जो भी जुड़े हैं यार. Again, there were a lot of people watching for whatever reason they've dropped, but hopefully they come. How will they come? आप लोग लाइक बटन दबाएंगे तो YouTube एल्गोरिथम, मैं नहीं बता रहा, YouTube एल्गोरिथम बताता है उन लोगों को
कि हम लाइव है, जो विच वी ट्राई एंड प्रमोट एज मच एज पॉसिबल. सो यू गाइज आर माई कैटलिस्ट. तो भाई सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, सिंपल सी बात है. जितना जल्दी हम लाइक टारगेट के पास जाए ना, उतना ही ज्यादा मजा आएगा. लेट्स हैव मोर पीपल. वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग एवरी एस्पेक्ट. हम दोनों ही मैचेस कर रहे हैं, हम दो लोग हैं भाई. वील कवर बोथ द मैचेस. एंड यस, फॉर दोज ऑफ यू बाई चांस आपको नहीं पता है, फतेह he is an OG when it comes to Italian footballer. By the way, sir, Fateh, I know last couple of times I forgot, मैंने फतेह का भी लिंक डाला है नीचे. Give him a follow as well. I know फतेह बहुत ही मॉडेस्ट बंदा है, लेकिन दिस गाय knows a lot. मैं तो बहुत बार बोलता भी हूँ. I've hardly seen a guy who's more knowledgeable, in India about football than Fateh. Simple as that. So, by Too come on, kind, too kind. let's give that like to the stream as well as Fateh OP in the chat. Absolutely. लीडा पूछ रहे, will PSG supporters again boo Messi if they knocked out again in Champions League? अरे भाई, मतलब हाँ, मतलब कहीं ना कहीं फतेह, मैं क्वेश्चन कल आई वाज टॉकिंग टू जी भाई एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, is it a good thing that Messi and Mbappe have done what they have done in the World Cup and they've come to PSG? It's a morale booster for the PSG crowd, fans. Or do you think they would have rather had them early and give their all focus? The motivation would have been much more. Matlab, I feel the latter, but it might be the other way around. What do you think? I think I don't know whether this is the real Lionel Messi that we see at PSG. Like I just don't feel it. And with Mbappe, I think he gives it his all. But Mhm. who do I think can manage? Uh, या ये really? हम लोग बात कर रहे थे ना, अगर बाई चांस गाल्टियर चल जाता है तो हु कैन मैनेज. So, Ankit, one of the things that is being talked about is if there is a new project at PSG and if all they want to do is win the Champions League, then probably getting a coach like Jose Mourinho would not be bad. Like, I know that they then probably can't have a Messi and a Neymar in that squad. But if you remember how Mourinho gets his teams in cup competitions, that mentality that he creates, and we saw that at Roma last year. Like, nobody thought that Roma can win. And I know it's just the Conference League, but I think that's something that they have to consider because he brings that. I mean, just imagine if it's Mourinho at PSG going against Nagelsmann at Bayern Munich. Yes, I know that Mourinho's tactics now, he's not a modern manager the way they say. I mean, he doesn't have all of those tools. But just for cup competitions, just for the Champions League, I think he has that little something, that extra something that I think. But obviously, they'll not consider him. But just answering that question, I या just feel नहीं like नहीं, they've fair tried enough. everything. And now what I see at PSG is that they are changing their sporting project. So they don't want to be about Messi's and Neymar's. They brought in Gaultier, they या brought in आज those देखो young ना, आज ही इज प्लेइंग अ टीनेजर. मे teenager. बी He's बिकॉज ऑफ playing a इंजरीज, बट ही teenager. इज राइट. And they're trying to get sign these younger players, and their model is changing. They don't want to spend that sort of money. So I mean it's very interesting. If that's where they're going, then probably they'll never win the Champions League. And I think this is their best chance this year. Because of the kind of pressure that Nagelsmann is under at the same time, and if Yeah, if I it must doesn't say, happen, like maybe we are reading too much into Messi's form after the World Cup. hmm, He was really looking happy and playing very well before the World Cup. ये बोलना चाहूंगा, मतलब he was in very good form. But let's see. I know that maybe Champions League night है. Maybe after listening to the Champions League music, you never know. Sometimes I know Messi after all, he doesn't need that. But sometimes you're human, right? भाई डरेन बिग अप यार, बिग अप भाई. ये स्टेटमेंट डरेन का अच्छा कॉमेडी है, लेकिन भाई नॉट माय टू लव. कम ऑन ब्रो, it's Milan and Chelsea, not Spurs. Darren cracking a joke, but Darren, big up, always supporting the channel, almighty coach as well. It's a wingers thing, bhai. सारे wingers का left. हाँ, बिल्कुल. I think it's wingers. Yeah, that's a very good point. We all tend to ज़्यादा हम react करते when it comes to injuries. Over the years, the best of the best wingers, I think 80% of the wingers have been injury prone, and that's the thing. आप अगर Messi, that's why we feel that Messi is an alien. हम क्यों बुलाते हैं? And in a good way, I'm saying. Messi fans don't get offended. In a good way. भाई Messi is ये प्राणी इस धरती का नहीं है. क्योंकि hmm. this guy, again touchwood, this guy being, I know he's not a winger anymore, but we all know he started off a winger, in a good decade and a half he was a winger. ठीक है, फिर he kind of became more central, and again which Ronaldo also became. So कहीं ना कहीं I think these two guys, that's why they are the goods. Because for me, it is about the fitness. It's about that mentality, about game in game out, week in week out, plus basically doing the thing on the wing. And of course अभी विंगर नहीं है, लेकिन आप सरप्राइज मत होना. गोइंग बाय जैसे दोनों टीम सेटअप है ना, अगर हो सकता है दैट मेसी को सेंट्रली दे काइंड ऑफ ऑक्यूपाइंग टू मच एंड डिलेक्ट इज ऑन हिम,
maybe Messi is like, चलो मैं wing में जाता हूँ, Soler, you can play number 10, right? Be a support striker to Neymar. That might be one of the things. Who knows? Messi might call the shot because it's Champions League. I'm just saying because Galtier is inexperienced. You never know. You just might be surprised with that. Hmm. Musiala may be the one who may some well again I best was youngster in the impressed. world. Yeah, I enjoyed watching him at the World Cup. Like I did, but it was, I mean, obviously, we, like talk about Japan and whatnot, but Musiala was good. I mean, there were those flashes of brilliance from him. Hmm. Maybe, in the future World Cup, let's see. Why do Anyway, Perisic and Son so play? Interesting. before we go to again Milan and Spurs, जो डेरिन का comment है भाई, everyone in the chat, again I request everyone to hit that like button और like my community post as well as tweet अगर हो सके तो भाई यहाँ पर why do Perisic and Son play together, Do they लेकिन not before that coexist? do you think that Perisic himself like basically is a kind of guy that maybe is a proper Conte player? See, it's very interesting. The first Conte season, Perisic refused to play as a wing back. He told Conte he was not going to do it. That is why he was loaned out to Bayern Munich. Won the Champions League there. He came back in the second Conte season. Nobody wanted him. Bayern didn't want to Yeah. renew him. So it That was, that we are talking about grudgingly. Inter Milan, people for people wondering. Huh. Yeah, so grudgingly, Perisic agreed to play as a left wing back. He thought he was not going to be good enough or whatever. The first part of that season, he was not all that good. But the second part of that season, Perisic was very good. He was one of the difference makers for us. And then last season under Simone Inzaghi, I think that was Perisic's best season at Inter. I mean, the Hmm. Perisic that we saw last year, fantastic. So. Is Perisic good under Simone Inzaghi or is he good under Conte? I would say that maybe Conte just can't get the best of him because I think Conte probably he doesn't give his players the kind of freedom that Simone Inzaghi gives. So it's yeah. I mean maybe he is not suited to Conte ball. It's entirely possible. It's entirely possible. अच्छा, मुझे अभी समझ में आया भाई, मैं कलर कोडिंग गलत हो गया हम लोग का, हम लोग कोई प्लान नहीं किए थे, तो भाई ये बेसिकली ये बोल रहे हो लोग यार, तो ये ऑनेस्टली I रिवर्स am साइकोलॉजी supporting Bayern. डालो आप लोग। मेरे पीछे जो टीम दिख रही है ना आपको, इस साइड है क्या, इस साइड काका दिख रहा है ना मेरे पीछे, और मेरे ऊपर कौन दिख रहा है, जिरू। हाँ ठीक है, ये है मेरी टीम, सिंपल एज दैट। और फतेह फतेह बाय डिफॉल्ट आई थिंक इज सपोर्टिंग बोथ मेसी एंड मुलर। No, no, I am supporting Bayern Munich most definitely. I want to see them win because it's fun seeing PSG suffer because they have so much money, and I have a axe to grind. They've stolen Skriniar off us, so I'm all for Bayern Munich, and Bayern and Inter have good relations. I'm really confused about the Spurs and Milan game, Ankit, because as much as I like Conte and Perisic and all Son and all these guys, somehow I still want to see the seven-time champions AC Milan in Europe do well. Yeah, and I don't actually want to speaking see. Italy यार, मतलब ये बात करनी पड़ेगी भाई, सब लोग in the chat. I know I Yeah, wanted to speak Chelsea, but with Fateh being here, Napoli doing madness, Inter kind of looking at least dogged. इतना जरूर बोलूंगा. I know I think attacking wise there are issues, Napoli are head and shoulders above everybody else but this what I'm year. trying to say यहाँ is Fateh, Hmm. कितने बार हुआ है that in Champions League in recent years Yeah, Italian sides have in a way kind of in Champions League इस season के लिए they are right. doing better than Spanish sides. Again, no offense, लेकिन वो reality है. Yeah, and it's happened after a very, very long time, like the Yeah. 90s and the 00s maybe. But since then, Spain's just been dominating. So, absolutely. And I wanted to continue, So, you may think that, okay, Inter Milan supporter can't say good things about AC Milan. But no, I genuinely want to see AC Milan progress in this time. आई एम ऑल इन फॉर इटालियन सुप्रीमेसी दिस टाइम, देवेश बोल रहे हैं। हाँ ये बंदा भी तो भाई ये यंग बंदा है, ही इज एक्चुअली क्वाइट गुड, ट्रस्ट मी, ही Schalke. इज क्वाइट गुड। Yeah, ठीक है, yeah, yeah. ही इज He's एक्चुअली द टोमोरी दैट वी वांटेड टोमोरी टू। सच में बोलूं तो ठीक है। and he's I think a youth product of Schalke. I think he was at Schalke या before या coming to एंड AC एंड Milan. एंड ही समवन जो आई थिंक probably is the safety valve मिलान के डिफेंस में। अगेन सिमोन कियर भाई, at left center back Coming I can see Kulusevski having a field day honestly.
Yeah, and Kjaer has not been as good, before injury. Correct. Last year he was okay, but now He I think wouldn't with have that started injury if and Tomori age, was there. We all know yeah, that. yeah, 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 absolutely, absolutely. So that I think that is, and Yeah, that's what's the but I worry. think this guy would have started. It would have been basically Tomori, him, and maybe Kalulu. As the reason three at the back again. Remember, मिलान भाई बहुत बुरा कर रही थी डिफेंस में, बहुत ही ज्यादा बुरा कर रही थी. तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद बेनेसर मिसिंग, दे नीड, जैसे हम पीएसजी के बारे में बात किए थे ना, दे नीडेड Danilo Pereira or someone there to kind of be the safety valve, and that is what basically, because I can't expect a Krunic to do the job. Yeah, तो इसलिए they needed someone in the back line to kind of help them yeah. out, or who better than Simon Kier? At least he has the experience. मैं बोलता हूँ, but Experience, and he would have been there by default. they conceded 5 goals against Sassuolo. I think that has somehow, changed. Sassuolo 5 goals, and of Yeah, course, like not just that, three back to back goals games में यार, against, yeah, terrible. Inter. So yeah, I think so. Yeah, 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 Liao is not performing to his level. I yeah. think बहुत सारे contract talks चल रहे थे. That might be the reason. World Cup, बहुत सारे reasons हो सकते हैं. But is it the fact here, at the end of the day, मतलब there's over reliance on Rafael Liao? Would that be fair to say in AC Milan? They, like you said, last season was just some ball to Liao, and then Liao just बस loses it. इंशाल्लाह बस. And that's the thing in Serie A, where the defenders, they're probably aged. The league was slower, so Liao's speed just did everything. But then why didn't that tactic work this year? Yes, you're right. There is a contract option. That's a big problem. Also, I think there is that money issue that has, on Sporting Lisbon and Lille. There was that litigation that Liao was involved in, and he wants AC Milan to pay that money to Sporting, and so there's a lot of problems there, and Hmm. AC Milan's new owners are not opening the purse. They're not really going all in. So maybe there's not going to be enough money at AC Milan, and if that's the case, then that opens it for a club like Chelsea to go and get Liao, pay off Sporting Lisbon, and maybe that's what's weighing him down. It's entirely possible. Yeah, अच्छा. By the way, मैं वापस से, I know we are coming back to the difference makers and basically the predictions. Everyone in the chat, भाई again, big up to all the members and mods, especially भाई सब लोग do help us get the likes up, see the like target, see the subscribe target. Let's hope कि by the way, यहाँ पर ये पहले भी बोला है मैंने, इस सीजन के एंड से पहले, और that is literally what, a couple of months from now, भाई we are targeting to kind of get to 12K on this channel. Of course, maybe put both the channels together 15K, लेकिन इस month के लिए भाई this is the target. So let's get 8K as soon as possible, and of course it's you guys as well, not just me. गौरव यहाँ पर बोल रहे हैं, फतेह भाई आई थिंक लाइनअप इज ग्रेट. वेल आई डोंट नो हु विल असिस्ट मेसी नेमार if Hmm. Messi also drops cheap, only Neymar left in forward, which will be pocketed. Exactly. Fateh, I think we both discussed that is where Carlos Soler needs to come in. अगर वो नहीं कर रहा, I think pretty clear half time में Mbappe आ रहा है. Let's be honest. Um, so what is the nature of Mbappe's injury? Like, what do we know We about have it? no Why idea. is So यार पूरा ही, it's almost like a mystery ना. Galtier, I think Huh, this is one maybe good thing he did, that he kept it huh, like a mystery. पहले तो बोला they are not both not available only for a good huh, week. Then huh, all of a sudden भाई बोला कि okay, he may not be available about Messi. That means he's huh, available. ठीक है. huh. Same thing he did with Mbappe कल. So for me, it is very interesting what exactly they kind of come up with on the pitch. हो सकता है taking a risk also. क्योंकि remember, maybe his job is on the line. Maybe just knowing PSG, you never know. PSG Chelsea को हम जानते हैं, मतलब the way that they kind of did the business in the last few years. Talksport are criticizing Bannister. Your thoughts on Bannister? Bhai, he is a very good player. Very good player. मिलान के लिए I think Fateh, I think भाई Krunic and Benacer, it's like chalk and cheese यार, come on. No, I think Benacer was one of their standout players last year as well. Yeah, I don't understand the criticism. I think even last before the World Cup, he was doing well enough. Like, it was not as if I know the reason. क्योंकि huh, Chelsea, when हम खेल रहे थे ना मिलान के साथ, not just Benacer, the entire team was the entire so team was bad. lackluster. He They were was terrible. lackluster, but then they also, I think, it's a very young squad in a way. So I don't think we expected them to see. Ibrahim Diaz has always been up and down. It's not as if he's shown any consistency. Even एक्चुअली last year was ब्राहिम not डियाज consistent. और चार्ल्स जी केटलारे ना, ये दोनों Yeah, अंडरवेलमिंग रहे हैं. Ray, इसीलिए absolutely. मेसायस और सेलेमाकस से अभी भी यार इतना सारा ले रहे. फॉर मी दैट चेंज वुड हैव हैपेंड इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, व्हिच नेवर हैपेंड, एंड पैसे नहीं थे. और Hmm. क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज नए स्टेडियम की बातें चल रहे हैं. इंटर मिलान, एसी मिलान, फतेह विल बी हैप्पी टू नो दैट, एंड कुछ नहीं आई होने बिलीव वाला. सैन सीरो विल गो.
and there will No, be a new Ankit, stadium it's coming up. these talks ये 5-6 साल हो गए सुनते हुए. It's not going to नहीं, happen. लेकिन It's मुझे लगता है यार, नहीं तो एसी मिलान में एक भी पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है अभी कोई भी? bureaucracy नए ऐसी नए है ओनर्स है ना। कि they don't allow. Like it's just endless talks, endless talks. It's like चलो भाई India. कोई नहीं। हाँ, एवोल्यूशन गेमिंग लक्स इन द हाउस, नाइस टू सी यू ब्रो। भाई सब लोग यहाँ पर डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस, और एज यू आर गिविंग योर प्रेडिक्शंस, फतेह आप भी प्रेडिक्शंस दीजिए। हमने लाइनअप की बहुत बातें कर ली, हमने सब्स्टिट्यूशन की बातें कर ली है, बेंच की बातें कर ली है। आई एम गोइंग विद पीएसजी 2 बायर्न म्यूनिख 2। यस, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग। पीएसजी 2 बायर्न म्यूनिख 2 बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्कोर लाइन है, आई नो। द रीजन बीइंग एम्बापे फैक्टर फ्रॉम द बेंच। I can see Mbappe coming on and scoring one, लेकिन I can see mistakes happening। भाई दोनों टीम्स के पास विंग बैक्स है who like to bomb on। और रिमेंबर यहाँ पर दनीलो परेरा है, वहां पर गोरेट्सका है। गोरेट्सका इज वेरी गुड विद किमिक, लेकिन आई Yeah. स्टिल फील गोरेट्सका इज नॉट इन हिज ए गेम येट दिस सीजन, स्पेशली ऑफ द वर्ल्ड कप। फतेह आप भी बोले साथ साथ में, मैं स्क्रीन पर क्या दिखाने वाला, बिकॉज लिटरली 4 मिनट्स लेफ्ट फॉर द किक ऑफ। और हाँ हाँ, दोनों मैचेस करने वाले, तो हिट दैट लाइक बटन। डू लेट मी नो योर पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख प्रेडिक्शन फतेह। यहाँ पर I चेल्सी का think मैं डाल रहा हूँ और I चैम्पियंस। want to see Bayern win, Ankit. So I will go with a 2-4 win for Bayern. Like ओरे PSG बाप 2. रे, 2-4 Yeah, I want goals. away victory with 4 goals Bayern Munich was Fateh Singh, interesting। Would be अच्छा, beautiful. ये है चेल्सी का स्क्वाड, ट्रैवलिंग स्क्वाड, काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। इतने सारे सरप्राइजेस नहीं है। ट्रैवलिंग विद 3 गोलकीपर्स, 4 फुल बैक्स, मल्टीपल मिडफील्डर्स। क्यों? क्योंकि हाँ, हमारे पास स्ट्राइकर है नहीं ओबामेयांग। while I'm not very excited with him, at the same time I think it's the wrong decision, but always backing Chelsea, all know that। हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में कल, वापस से हमने कल भी किया था। चलो कोई नहीं, डेरेन विल वेट फॉर हिज प्रेडिक्शन। आयुष, यस ही इज एक्चुअली डन वेल, लेकिन वो ये बिग गेम क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक विल बी द, हु विल बी द डिफरेंस मेकर? आर यू सेइंग मुसियाला विल बी मैन ऑफ द मैच? प्रेडिक्ट करते हैं Cancelo and Musiala. One of those two. कैंसेलो एंड मुसियाला। ओके, सो दीज आर द टू स्टैंडआउट्स। मैं तो बोल रहा हूँ, आई थिंक वेरी स्ट्रेंजली, मैंने एक तो ऑलरेडी बोल दिया, एम्बापे ऑफ द बेंच। आई रियली फील वो रिस्क लेना पड़ेगा, एंड आई थिंक इट माइट बी ड्रॉ बोल रहा हूँ, तो आई थिंक मुसियाला तो भी डिफॉल्ट हो यार। आई थिंक मुसियाला एंड एम्बापे विल स्टैंड आउट इनमें, क्वाइट प्रेडिक्टेबल, लेकिन थोड़ा सा होने वाला है रिस्क विद द एम्बापे फैक्टर। तो लेट्स सी, एंड अगेन लेट्स सी व्हाट फॉर्मेशन दे स्टार्ट विद, दिस विल बी इंटरेस्टिंग। 3-1 बायर्न, 1-1 स्पर्स वर्सेस मिलान। चलो स्पर्स मिलान, मिलान स्पर्स जाते हैं, मिलान Yeah, स्पर्स आते हैं। I think it will be a score draw. I think 1-1 or something like एंड that. हु, एंड कौन से क्लब के लिए बेटर रिजल्ट होगा वो, अगर होता है तो? 1-1। No, I think see I really want to see AC Milan go back to their 4-2-3-1. So maybe I'm hoping by the second leg they're back. Pioli has come to his senses and Benacer is back, and maybe AC Milan take it over 2 legs. Maybe they win ओके, 2-1 or something. Yeah. इंटरेस्टिंग कमेंट भाई। यहाँ पर मैं, आई डोंट नो, शुड आई कीप माय बायस और नॉट? आई Keep थिंक your bias. कहीं ना Keep your कहीं, bias. नहीं मुझे लगता है दैट फतेह इज राइट एक्चुअली, लेकिन मैं दोनों ड्रॉस तो नहीं जा रहा है दोनों मैच में। आई थिंक यू नो व्हाट, लेट्स गो विद मिलान यार। मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन द फैक्ट इज इट्स अ चैंपियंस लीग नाइट। रिमेंबर इटालियन टीम्स आर डूइंग वेल, प्लस द डिफरेंस मेकर जैसे मैं बोल रहा हूँ दैट आई थिंक टोनाली, यू कैन सी, मैं यहाँ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मिस्टेक्स होंगे। आई एम कॉलिंग इट 2-1 टू मिलान वर्सेस स्पर्स। टोनाली गेटिंग बोथ द असिस्ट्स। आई थिंक टोनाली 1, लियाओ 1 जीरो। Off the bench, I know options, maybe Origi coming on, but that's for the second leg। लेकिन Origi यहाँ has been पर horrible, Danjuma, Ankit. Origi has been horrible, Ankit. The AC Milan fans that I know have really हाँ been लेकिन वो disappointed. चैंपियंस लीग वाला जो होता है ना, ओरिगी एंड चैंपियंस लीग, यू नेवर से नो वाला चीज, वो ऑलमोस्ट है। लेकिन भाई सब लोग डू लेट मी नो अबाउट मिलान एंड स्पर्स, आपके क्या प्रेडिक्शंस है इन दैट गेम एज वेल। बाय द वे वी आर गोइंग टू बी रिएक्टिंग ऑन बोथ द गेम्स, तो मैं अभी डालने वाला हूँ। लेट मी सी भाई, कौन से फतेह, कौन से मारे? इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट ब्रो। Sony 10-1 is showing Spurs Milan. Sony 10-2 is showing Bayern. अच्छा, तो पीएसजी बायन आ रहा है। चलो मैं पीएसजी Sony बायन 10-2. लगाया हूँ अपने फोन में, एंड आई विल ट्राई एंड पुट डेफिनेटली। भाई सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, लेट्स गेट द लाइक्स अप एज सून एज पॉसिबल, सर्टनली हेल्प्स। गौरव बोल रहे 3-2 टू बायन। ओके, जस्ट Yeah. इन टाइम, मैंने मेंबर्स प्रेडिक्शन लीग में कर दी। और भाई साहब, देर इन जस्ट इन टाइम यार। यस, बाय द वे मेंबर्स प्रेडिक्शन लीग इज अप एंड रनिंग एब्सोल्युटली।
मानव इज लाइक भाई मैंने बहुत कर लिया यार, हो गया मेरा बस। लेकिन मानव ट्रस्ट मी, देयर हैव बीन सम न्यू एंट्रेंट्स इन द लास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि मैं अलाउ कर रहा था टिल द चैंपियंस लीग स्टार्ट्स, रिमेंबर दैट। तो मानव, इफ यू आर हियरिंग, रिमेंबर देयर आर न्यू एंट्रेंट्स, एंड यस, literally the prediction league has also take off, and the winner kind of gets a prize in the end of the season. We all know that for members, that is. Bayern fans have filled the Parc des Princes Frankfurt Barcelona style. Okay, that's interesting. Interesting, 3-2 Bayern win. अच्छा चलो, यहाँ पर मिलान स्पर्स की बहुत कम प्रेडिक्शंस आ रही है, तो इट्स क्लियर व्हाट द चैट इज गोइंग टू वॉच। आई डोंट थिंक वो एक क्वेश्चनेबल है, बट एट द सेम टाइम लेट मी ट्राई एंड पुट इट। भाई मैं, किसी को मालूम है टाटा प्ले में कैन आई ओपन टू instances? I think I can, right? Let me just try and, you know what I'm trying to do? I'm trying to put on a little bit volume in the other game, which is Milan and Spurs, and I'll try to listen. लेकिन बैकग्राउंड में बता देना भाई, कुछ आवाज आता है कमेंट्री का, नहीं तो चैनल वाले बंद कर देंगे। भाई सब लोग अगेन लाइक बटन दबा दीजिए भाई। एक्साइटेड और व्हाट फतेह? I am excited, and I'm watching the Spurs Milan game, like like I told you, अच्छा जियो टीवी because भी आ रहा है, ओके, आई डिडंट नो दैट। Geo TV has Champions League rights. आई डिडंट नो, मतलब आई थॉट इट इज एक्सक्लूसिवली बाय सोनी, बट एनीवे मेरा क्या जाता Yeah, है। बिकॉज ऑफ पेरिसिच आई एम गोइंग 2-0 मिलान। हाँ, पेरिसिच और सॉन साथ में अच्छा नहीं खेलते बहुत बार, ये एक चीज है, फैक्ट है। डिफेंसिवली आई थिंक दिस एन इश्यू, बट देखते हैं क्या होता है। बट व्हाटएवर हैपेंस, आई थिंक इट विल बी यार, द बेस्ट पार्ट इज आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी केजी अफेयर्स। मतलब डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी केजी अफेयर्स? the AC Milan game might be, because it's the first leg. हाँ, Conte, वी डोंट Conte मेक अ in मिस्टेक Europe. वाला चीज। Yeah, Conte in Europe, and because AC Milan are coming from कॉन्टे in के bad form. तरफ से तो डेफिनेटली रहेगा। Yeah, मतलब लेकिन so आई एम जस्ट that वंडरिंग हाउ कैन एसी मिलान डिफेंड, यू नो। अच्छा, I सोनी think 10 5 की सोनी 10-1 किसमें आ रहा है? Sony 10-1 पे आ रहा है मिलान टॉटनम। अच्छा चलो, मैं वो भी लगा रहा हूँ भाई। फतेह, कमेंट्री की आवाज नहीं सुन रही ना? I can't hear. हाँ चलो, दैट्स व्हाट आई वांटेड। चलो भाई सब लोग, कौन सा गेम भाई? दोनों देख रहे हैं यार, दोनों मैच। मेरे स्क्रीन पर लगा है मिलान स्पर्स, और मेरे फोन पे लगा है, दिखाऊंगा नहीं, पीएसजी बायर्न। क्लोजर वॉच इज पीएसजी बायर्न, और टाइम स्टैम्प मेरा है पीएसजी बायर्न में 25। अरे पहले ही, अरे भाई साहब, चुपो मोटिंग विद एन अर्ली स्ट्राइक, जस्ट वाइड, बहुत वाइड था एक्चुअली, लेकिन एटलीस्ट एक अटेम्प्ट था। Come अरे on, Ankit, सेफ था क्या? make fine. डोनोरुमा, अच्छा हमने यार ये तो बात किया नहीं भाई, डोनोरुमा फैक्टर भी है। Huh. Good. Is it a positive factor or a negative factor these days? वही है, मतलब शॉर्ट सेवर, बट डोनोरुमा समटाइम्स, यू नो, Why is एक्सक्यूज हो Loris जाता not है। playing for Spurs, Ankit? हाँ, Why is Loris not playing for Spurs? There's somebody else in the goal for Spurs. लॉरेंस इज इंजर्ड फॉर 5 वीक्स, आउट। Okay. So is that a वीकेंड positive for में गॉट Spurs or इंजर्ड। is that a negative for Spurs? मैं वही बोला ना, देखो, स्पर्स में यू हैव द कीपर मिसिंग एंड द मिडफील्ड मिसिंग। Yeah. But अच्छा, Loris has मुझे ना been बहुत linked to स्ट्रेंज play. लग रहा है, क्योंकि मैच देख रहा हूं मैं पीएसजी बायर्न का, लेकिन कमेंट्री सुन रहा हूं मैं मिलान स्पर्स का। Acha. हाँ, बायर्न शुरू में जोश लग रही है। Milan has made a very good start. I think there was a bad foul on Liao. He looks up for it. And, they're looking confident and they're. ओके, ब्रेकिंग न्यूज, Hmm, ब्रेकिंग न्यूज एज एक्सपेक्टेड। ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कैंसेलो इज प्लेइंग विंग बैक yeah. एंड कॉमन इज प्लेइंग विंग बैक, सो इट्स नॉट कैंसेलो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और पवार्ड इज प्लेइंग राइट सेंटर बैक, जैसे फतेह ने बोला था। Huh. And it's interesting. I mean, Pavard, I think they say that sometimes he has attitude problems. He is injury prone. हाँ, वो But चाहता he था is, राइट सेंटर बैक। yeah, but he is being linked with being the six Skriniar replacement. Like, if. नहीं, एट द सेम टाइम इज आल्सो लिंक्ड वेरी स्ट्रांगली टू बारसा, एंड व्हाई वुड ही गो टू बारसा जब वो दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस कुंडे एंड ही इज अ सेंटर बैक करके, अगेन। And no, but didn't Barca already sign some centre back? Aji, because there was news about Endika from. इंडिका, अरे भाई व्हाट अ बॉल! अरे चुपो मोटिंग भाई, ऑलमोस्ट गेटिंग देयर, बट अगेन कैंसेलो पुटिंग अ गुड बॉल। मैं Yeah, ऑन द अदर हैंड आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज्ड फतेह। आई वाज एक्सपेक्टिंग, कंसीडरिंग दैट एम्बापे इज नॉट स्टार्टिंग, आई huh, थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट वे टू काइंड ऑफ गो फॉर द बैक। मे बी huh, व्हेन एम्बापे कम्स दे काइंड ऑफ गो फाइव विद द बैक, ये मुझे लग रहा था। huh. बट अगेन दैट इज बाय इन फॉर यू, एंड दैट इज नैगल्समैन, ही नोज हिज टीम बेटर। He knows his team better. क्वांटिटी दैन क्वालिटी,
Spurs, I think नहीं, I think Dhiren, I think they went for quality as well summer में. Richarlison was an investment they made which has flopped, in a way you can say that. Yeah, that Lekin I was a think they very. wanted to have a quality replacement, right? If Kane is not playing, ideally. So how many goals has Richarlison scored for? Hardly any. वो answers the question. But at least वो planning तो थी कि यार रिचार्लिसन क्योंकि अच्छा कर रहा था. हाँ, Huh. एंडी का यस. अरे भाई, वर्बल एग्रीमेंट डन. सादिक भाई इन द हाउस. Big up. In March will come. And by the way, भाई people, सादिक भाई is in the house tomorrow as well यार. हम बात करेंगे डिटेल में. Of course, a lot of it is going on सादिक भाई, not just बारसा मैन यूनाइटेड, लेकिन जो हो रहा है मैन यूनाइटेड का टेक ओवर, बारसा Oh का yes. ऑब्वियसली डूइंग मैडनेस इन अ गुड वे. बट बिग अप टू सादिक भाई, ओपी हो जाए भाई एवरीवन. बिल्कुल. Some मेसी the लव San अफेयर विद Siro बायन, हैप्पी वैलेंटाइंस. the San Siro pitch does not look all that good, and that might not be to Do you think Spurs. it's on purpose? Yeah, perhaps because it wasn't like this for the derby, right? And by the way, I missed that लेकिन game. कॉन्टे अगर वो खेलता ना खुद, ही यूज्ड टू लाइक प्लेइंग ऑन सच पिचेस. Oh, तब तो ऐसी pitches ही होती थी, and that was beautiful. Like that football was beautiful. राइट. बिल्कुल. Yeah, चलो very एनीवे भाई physical. साहब. भाई पीएसजी कैसे सेटअप कर रही है पीपल? ओके, सो बेसिकली स्पीकिंग, पीएसजी में लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग, सो दानिलो परेरा इज योर ऑक्सिलरी सेंटर बैक, तो वो ड्रॉप कर रहा है लेफ्ट सेंटर बैक. Ooh, another foul on Liao. Two fouls on Liao already. वही है. आई थिंक मिलान का बेस्ट केस विल बी लाइक टोनाली एंड लिया हैव टू डू वेल फॉर देम टू डू वेल एज मच एज जीरो स्कोर्स द गोल्स. और भाई, नाइस प्ले ऑन द विंग बाय पीएसजी. मेंडेस, आई रियली लाइक दिस गाय. He's pretty good. Is Conte auditioning for his new job? See, I think what is his new job though? Juventus going back to Juve, that might happen. That might I happen. don't think so, bro. Conte को No, चाहिए. he patched up. He patched up with Agnelli last year. That was like he met him नहीं, and लेकिन there was यूवे, where will they finish यार? Come on. no. Even if they don't finish, see. Oh, Milan goal. Oh man. मैं देखना. You know what? My Brahim stream is a Diaz. little bit slow in the Milan game. अभी तक 0-0 है. 5:55 seconds है. I think your clock is ahead. भाई Yeah, I'm on कलूलू. एक six second. Let forty. me just see the goal. पता है भाई, giving me a spoiler, but I hope it's not changed. Huh? That was मैं I बहुत told पीछे हूँ you. क्या उस वाले स्ट्रीम में? भाई सब लोगों का टाइम स्टैम्प बोल दीजिए. पीएसजी बायन में मेरा 5:48. अरे व्हाट अ बॉल, एंड ऑफ कोर्स हु एल्स? भाई थियो. ओ ऑसम मैन. कौन है, टोनारी या क्रिच? Brahim Diaz. ब्राहिम डियाज. रियली? Oh man, अभी हम we were just criticizing Brahim Diaz, but what a ball! Who was that ball? Who played that ball? Kier, Simon Kier, right? I think so. The ball was won by Theo Hernandez brilliantly, and what a Brilliantly. ball in by Milan 1 Spurs nil, man. Forza Milan, man, it is the Rossoneri doing. Oh, bhai, what Theo Hernandez showing his class, bro. But goalkeeper should have done better. Come on, goalkeeper should have done better. I think Foster is experienced, Huh. but not a Champions League level. दिख रहा था clearly. Huh. He should have cleared it, right, Fateh? It was a fast shot. He did make that initial save, but Yeah, but like instead of like putting in the yeah, gameplay, yeah. I think the direction. But great man, हम ले लेंगे यार कैसे भी हो. Milan are leading man against Spurs. Bring it on, man. Bring it on. told you, Milan is going to win tonight. Yeah, भाई like स्पर्स का गोलकीपर एंड स्पर्स के मिडफील्ड आर टू बी टेस्टेड. और बट कहीं ना कहीं रोमेरो वर्सेस थियो हर्नांडेज, यू हैव टू गिव थियो हर्नांडेज ऑल द क्रेडिट a फतेह lot देयर. of credit for that. I mean, he went in, and apparently Romero is a hard man himself. So एंड टॉटनम अभी जग गई है. टॉटनम अभी कॉर्नर लेते हुए. was Romero at Declare the nice World one. Cup? Ankit, was Romero at the World Cup? रोमेरो he was there definitely. सैन सीरो इन ओल्ड स्कूल मूड. या बिल्कुल यार. मतलब भाई, मतलब सादी बॉय नोज इट यार. मतलब सैन सीरो ऑन चैंपियंस लीग नाइट्स, मैन. गूज बम्प्स.
बट नॉकआउट्स मतलब लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था, कॉन्फिडेंस था इन द एयर. इफ दैट थिंग कंटिन्यूज ना, ये जो अभी लीड हुआ है, वी कीप इट, नो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. बट भाई आई मिस दैट पास मैन. Liao was एनीवन up कैन for हेल्प मी it. आउट? इट वाज Oh my, whose was that पास? not a सिमोन foul? केयर पास? किसका पास था यार? भाई साहब क्या पास Yeah, I था. think आई मिस दैट सेकंड. या if Liao probably is up सिमोन for it, केयर्स पास, आई एम गेसिंग. Ankit, then it's going to be very interesting. Like I think यहाँ पर Milan मेसी. winning. ओके. पीएसजी ट्राइंग अ 1-2 लेकिन हुआ नहीं. ओ मैन, टिपिकल यूसीएल नाइट्स आर बैक. दोनों Yeah, man. क्रेजी गेम्स हैपनिंग. यहाँ पर मैं कमेंट्री सुन रहा हूँ मिलान का. ठीक है. Uh, क्वार्टर फाइनल में मिलान डावी हो सकता है. अरे भाई साहब. Actually, Sadiq bhai, I actually think Porto will surprise Inter because Inter, the way we are, the अच्छा. way we set up. फतेह प्लेइंग दैट No, मॉडेस्ट कार्ड no, अगेन. I'm बट not playing the they are modest quite card. good. No. Porto is Yeah, because quite I good. think Porto, Ankit, Sergio Conceição at Porto has knocked out Roma, Juventus, and then Hmm. one other And they team. had a late surge ना. I remember they beat Club Brugge 4-0 लास्ट मैच डे में, No, जहां तक मुझे याद है. but against Italian teams, Porto have been winning in the last 3 or 4 seasons. Like they've knocked out Roma, अरे they've knocked, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जनरली इन यूरोप दे हैव डन वेल देन व्हाट वी they've done थिंक. well. And that is the one game where if it was anybody else, I would have said, okay, Inter has a chance. Porto, I think this time a lot of people will probably think, oh, Inter ओके. Milan, यहाँ the पर bigger name. मुसियाला मैन, मुसियाला. This, मुसियाला मैन, मुसियाला. Pedri are literally sometimes I feel के mirror image of each other man in that position, no sometimes. अरे भाई hmm. साहब. I know it'll be boring affair but Porto aren't great. हाँ भाई, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिलान आर रीबिल्डिंग यार अगेन. आई नो हर एक सीजन वही बोलते हैं. No, अरे but उत्कर्ष क्या हाल है भाई? नाइस टू सी यू ऑलवेज. ब्रो कोमन, कोमन आई थिंक ज्यादातर आप देख रहे हो, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी. बायर्न स्विच ऑफ प्ले कर रही है, लेकिन आई थिंक कोमन इज द वन हु स्टार्टिंग एंड देन स्विच ऑफ प्ले इज हैपनिंग टू कैंसेलो. भाई कैंसेलो का यही इशू है. ही काइंड ऑफ गोज अ बिट टू अटैकिंग. ही शुड टेक द सपोर्ट ऑफ हिज अटैकर्स वहां पर, बट कोई नहीं. Graham Potter kept a clean sheet in San Siro. Never ever compare Conte with him. Naren, opportunistic bro. Much love to you. But my, I never even imagined I'll be kind of supporting Graham Potter over Conte. But that is football. That is football. and coming back to that, can Conte be back? So there is a Messi good with 11. chance that because Ankit, the first time when Conte took over at Juve, they were not in the Champions League. They were not even in the UEFA Cup when he Yeah, took they're over pretty in bad. 2011. Uh, They had not qualified for Europe I that think they year. just about beat Shakhtar, I remember, and they went to the Europa League final against Sevilla. Inter Milan. Inter Milan's. No, no, Inter Milan. Inter Milan, yeah, No. we were in the Champions League when Conte took over, both the seasons. अच्छा, We you're played. telling When he Juventus? first took over at Juve, he's not going to come back at Inter. Inter No, don't have the Juventus money. was pretty bad, in fact. Yeah, so in 2011, when he Europe में. took over at Juve, they had no Europe. They had finished Hmm. eighth or something in the league. So it might be the same this year. And if अच्छा, that way you're saying. In yeah, fact, same was the case with Chelsea. Remember when he took, we were 10th. yes. But Were you not even in Europa League that year? नहीं, तो No, you were not. Yeah. First we season you were finished not. 10th, our worst ever season, Yeah, and yeah. then So Conte took over and he won us the league. That is the whole story, there no? is a there is a good chance that he might take over at Juve if he's and although I Yeah. think the kind of money that Spurs have, but then he's the अच्छा, captain यहाँ of पर ना uh, PSG are playing as though Jose Mourinho is coaching them. अरे वाह I love Jose Mourinho, by the way. I love हाँ, defensive tactics. Don't get me हाँ, wrong. But you know what I mean, right, Fateh? Basically, PSG are like total low block, yaar. तो Full फिर low block. वही करना पड़ेगा. I think that is the only way PSG is going to win. And then You think hope that so? Mbappe has the pace and when he comes back and Messi the vision. Yeah, देखो, Bayern have some crazily good players, but Bayern are also porous at the back. They've not Yeah. been in like terrific form. And there's been a lot of criticism of Nagelsmann. Like it's Yeah. not as if I think वही है, Ziyech नहीं आएगा तो see that's the thing, that's why Messi is so crucial यार. सेलर तो देखिए Ziyech आ नहीं पाया था ना, तो the fact is अगर मेसी नहीं खेलता ना मैच, hmm, imagine that PSG counter attack wouldn't have even happened. जो हो रहा है. hmm. This PSG versus Bayern game gives me last year का PSG versus City game. City dominated and PSG walked away.
Winners on 2 moments of brilliance. Okay. Hmm. I hear you, City. Sadiq bhai. Sadiq bhai, free हो तो मैसेज करिए यार, definitely. If you would like to come on, always welcome, bro. You know that. भाई, everyone in the chat, do not forget to like this stream as well. साथ साथ में अगर आप आए हो just stream में अभी, Conte to Milan and Pioli to Spurs. Do you see that happening? Pioli, I can't see him in England, bro. No. Purely, I see again. अरे He's a PSG with an attack, rare guy. attack. नेमार, मेसी, लेकिन बहुत ज्यादा भाई, वेरी सरप्राइजिंगली, जैसे मैंने बोला था वैसा नहीं है, एंड नॉट फॉर वंस बट एज मेनी टाइम्स आई एम प्रूवन रॉन्ग. तो मेसी पर ऐसा नहीं है कि एक बंदा चिपका हुआ है. इनफैक्ट मेसी इज लेफ्ट क्वाइट फ्री. लेकिन क्या हो रहा है, जब बॉल जा रही है ना मेसी के पास, साथ में 2-3 जन जा रहे हैं, तो यहीं वहीं पर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीएसजी टू डू काउंटर विद 2 or 3 together. Conte at Milan. See, if Milan have the budget, then yes. But I don't think Conte is going to move to a team which gives him no money. And it remains to be seen whether Milan are going to invest या in this मैंने squad. इसकी, लेकिन आई थिंक He's not coming to Inter. He's not going to be, नहीं, द रीजन आई थिंक, मैंने खुद प्रेडिक्ट किया था अबाउट कॉन्टे गोइंग टू मिलान पॉसिबली. द no. रीजन If इज बिकॉज अगर वो स्पॉट छोड़ता है विद डैनियल लेवी डूइंग लीवी थिंग्स, तो विच आर द क्लब्स रिमेनिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल जहां कॉन्टे जा सकता है? no, Ankit, it's not just a short term thing. Like Marina has left, Abramovich has left. Don't be surprised if he's there at Chelsea. I mean, that those owners have gone, that management has देयर gone. वर शॉट दैट आल्सो. लेकिन Yeah, ऑनेस्टली जैसे and हमने जैसे बाई किए ना प्लेयर्स, आई डोंट सी अ कॉन्टे सिस्टम एट yeah, ऑल. yeah, yeah, दे पुट absolutely. I 600 mean, million. we're not talking the short term, and I don't blame Levy for this. I mean, that's just the way Conte is. He himself might not want ओके, to पीपल, be at रामोस Spurs. ऑन द रन. रामोस ऑन द रन बहुत ही, मतलब पुरानी याद आ गई यार. रामोस ऑन द रन, व्हाट इज दैट अबाउट? मेंडेस, वेल डन भाई. All of a sudden PSG have got a lot of space. Messi on the ball. यहाँ पर आई थिंक मेसी शुड पास इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. प्रीटी श्योर यहाँ पर सोलेर. अरे यार गंदा पास यार. सी आई टोल्ड यू ऑल, एवरीवन, क्या हमने बात की थी मैंने और फतेह ने. आई थिंक कहीं ना कहीं दनीलो परेरा एंड सोलेर के मिस्टेक्स है ना, दैट विल कॉस्ट पीएसजी द गेम. एंड इफ दे डू वेल, पीएसजी विल डू वेल. बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंटर अटैक मिस्ड राइट नाउ. कॉन्टे टू पीएसजी. हाँ, पैसों की कमी तो नहीं है. But PSG want to win the Champions League. So if चैंपियंस. Conte goes out today, his record in the Champions League is so bad that I don't see how PSG want. Yeah, Delict के बारे में I think Fateh will be best to say. Delict See, Delict was has, not has, he, good has he at. reached back to that level what he was at Ajax? No, I mean he was very poor at Juve. He was a calamity at times, Yeah, but and I Bayern, think I hear that he's doing better. But still, because Bayern. their style of plays, the defense is hardly tested in many games, like so, and But don't you it's think? Yeah, but don't you think that Delict, like for me, whenever he gets drawn, आप देखो डच टीम में क्यों नहीं खिलाया यहाँ पर लुई exactly, वैन गाल. exactly, Ankit. Yeah, When he gets exactly. drawn, na, he's not Yeah, so good. yeah, yeah, He's yeah. better off in a back four. Huh. Yeah, he's better off being a central man in the back three. In fact, I would say that whatever Delict was at Ajax, there was that theory also that all those players did well at Ajax, but they didn't live up to the same potential whenever they moved, like De Jong or the De Manchester Jong, United guy Van de Frankie Beek. De Jong is doing Delict. superb this season. De Looking Jong is a wow. fantastic player, absolutely. But Delict and what's that guy Van de Beek? I mean, they. Van der Beek is a major ड्रॉप. वो तो मैं अग्री करता हूँ यहाँ पर भाई. ड्रॉप बोलते फतेह ड्रॉप क्यों हो गए भाई? इज इट सम वॉइस थिंग हैपनिंग इन स्ट्रीम यार्ड? पीएसजी कुछ क्लास किक नहीं कर रही है भाई, काउंटर पे खेल रही है बेसिकली. अच्छा, यहाँ पर मीनवाइल वार्म अप क्यों कर रहे हैं यार दूसरे मैच में? क्या इंजरीज? अरे भाई, सीमोन कियर लुकिंग इंजर्ड यार. और एज इट इज, टोमोरी इज आउट. सीमोन कियर आई बिलीव माइट बी इंजर्ड. Not great news for Milan. Yeah, Donny, Ziyech. Yeah, of course, there's Ziyech also. Ajax में very much so. By of course, AC Milan में Maldini looking on. Shevchenko also. हाँ, शेवचेंको. भाई, लाइक सादिक भाई ने बोला ना, मिलान में लग रहा है वो आज एटमॉस्फेयर प्रॉपर. Yeah, and they are up for it. Wouldn't both it's because of managers in No, case I of think DPG Delict and was given a lot of chances. He was Mbappe. very error prone. Like the number of penalties he gave away.
But वो ये system, I personally feel the system did not suit the back three, na, when he's But drawn. Delict, but then he didn't always play in the back three. They had Sari. Sari was not playing back three. They had Under Perlo who Sari, was no, playing. yeah, I remember. Yeah, Perlo was playing a back three for a long time. Yes, Perlo देखो अंडर was सारी तो ये बहाना हो सकता है ना, he was just a new player then, new player. Yeah, हाँ ये भी हो सकता है यार. Yeah. new league and all that. uh, भाई कोई नहीं, मतलब होता है, things happen, but at the end of the day, मतलब let's be honest, I मतलब do I see him in the top bracket? No, I don't. Let's be very Maldini honest. or Delict? Daniel Maldini, No, he I did don't score think. a very good goal, by the way. It must Yeah, be yeah, said, yeah. huh? But I don't think he's Milan material anyway. Like और last year, I think. Ronaldinho's son is also in football, यार, मतलब he's Yeah, joined Barcelona, I believe. yeah, yeah. A lot of people were, talking about nepotism and all that, but no, I don't know. यार देवेश, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आपने, यार आई डिसएग्री ब्रो. यस आई एग्री, पहले नहीं लिया था, लेकिन एवर्टन में लैम्पार्ड आल्सो डिड नॉट फेवर हिम. अब कहीं ना कहीं आई नो दैट ही वाज इंजर्ड, बट स्टिल इवन व्हेन फिट आई डोंट थिंक लैम्पार्ड फेवर्ड हिम. ही हार्डली, मतलब ऐसा नहीं प्रेजेंस दिखाया. आई थिंक इट वाज अ केस ऑफ प्रीमियर लीग नॉट सूटिंग हिम. आई पर्सनली फील दैट maybe it's just that because कहीं ना कहीं if couple of managers are not depending on him. पहले लगा था ही अनफेयर है, और देन इंजरी, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू ट्रस्ट देम आल्सो, ना. Hmm. लाइक हाउ वी ऑलवेज डिबेट यहाँ पर, आई नो अननेसेसरी डिबेट है, बट मेसन माउंट के, यार इतने मैनेजर्स अगर बिलीव करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा बंदे में. नेमार, नेमार ऑन द रन, भाई पवार्ड. पवार्ड दिखा, मैं बापू भाई पेरिस का. Wow. पवार्ड इज लाइक, भाई तू फ्रेंच कॉलोनी में आकर मुझे क्या दिखा रहा है, नेमार को बोल रहा है. नेमार गिर गया. नेमार का डाइविंग है कि क्या पता नहीं, लेकिन पवार्ड मैन दैट वाज स्ट्रांग, आई मस्ट से. हाँ, थॉट यही है यार, टाइम विल टेल. कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत होता है बंदों में. आई कैन आस्क अबाउट क्लाइवर्ट. हाउस क्लाइवर्ट? Justin Kluivert, I think he came to Roma. It was very hot and cold, and then he left Roma. I don't know where he went. Where did he go? आयाक्स ही है जहाँ तक मुझे याद है, करेक्ट मी फ्रॉम चैट. No, he came जस्टिन from क्लाइवर्ट, Ajax to Roma, and then where did आई he थिंक go ही from वेंट Roma? बैक ऑन लोन और समथिंग. लेट मी जस्ट चेक इट. I think he went to Mourinho Spain. did speak some good words about him, I remember. Mourinho doesn't do that easily. He was not there last year, Ankit. हाँ, ही इज ऑन लोन टू वेलेंसिया. Valencia, yeah, yeah, yeah. लोन In पे गया, fact, वो तो याद था मुझे, बट हाँ. even पवार्ड ही लाइक्स, मैं बापू. इट्स I प्योर don't know डाइव. whether Tatarusanu taking a risk there. Even his father, Patrick Kluivert, towards the end of his career, I think was at Valencia, and at that stage, he was करेक्ट. just not interested in playing football. Offside. भाई I मिलान आर एक्चुअली डूइंग वेल, हाँ. Yeah, yeah. I'm just Milan are seeing doing थोड़ा well. थोड़ा मैच हो. Yeah, they seem very comfortable, Ankit. Spurs are getting back into it, but so far Milan are very comfortable. ओके, Like, आई थिंक यू नो व्हाट, यहाँ पर सॉरी यार, चैट में आई नो बहुत स्टार करके रखता, कमेंट्स में लूंगा एज मच एज पॉसिबल भाई, लेकिन हाँ, थैंक्स यार देवेश फॉर रिमाइंडिंग एवरीवन. एंड यस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट. मिलान का एक चीज मैं, स्पर्स का नजर एक चीज बोलना चाहूंगा. किसी ने कमेंट किया था अबाउट कॉन्टे, आई थिंक डेरेन नहीं किया था शायद, कॉन्टे काइंड ऑफ नॉट बीइंग इन हिज एलिमेंट, जो होता है ना. पुतिन या yeah. डेरेन ने बोला था कि यार दे आर नॉट, ही इज नॉट बीइंग सो, क्या बोलते Hmm, हैं, इमोशनल ऑन द टच लाइन, hmm, पैशनेट जो होता है. लेकिन hmm. उनका रीजन है यार, भाई बंदा एक सर्जरी के बाद आया, तो यू डोंट नो हाउ सून ही इज कम. मे बी And इज they नॉट say that that's 100% फिट very. और 100% मेंटली एज वेल. But it's. I don't know whether this is a great match. Like, I look Conte. I love Conte. I respect Conte. Uh, yeah. On coming on to this question, why not Chelsea? I'm pretty certain Chelsea will be the favorites against Dortmund. But yeah, coming back to Conte, Ankit, sometimes with फ्री किक, Conte, गिमिक. his Italian team, his Italian national team, his Juventus team, his Inter team, and correct me if I'm wrong, even his Chelsea team, like Conte was the main man. Like people were ready to die for him, at least in Italy. At Juve, at the Italian national team, and Donnarumma clearing the ball, just about. wow, come on, Bayern need to score, man. Like before halftime, like Yeah, come yeah, on. please continue, bro, sorry.
Yeah, so the squad was, everybody was just willing to do everything that Conte said, and especially at Inter, right from the owners till the bottom man, everybody was just crazy. Like whatever Conte said was gospel at Inter. So I don't think it's that is the case at Spurs. Where you've got Levy and then Paratici and then I don't know. I mean, larger than life figures like Kane. I just don't see his even his squad building like this team. I don't So I don't ever see them winning Daniel the Levy, ECL. What? maybe Daniel Levy say कहीं ना कहीं he's not happy. But then it's not like Conte has delivered anything special either. Like हाँ और unlike Daniel Levy is actually spent. ऐसा नहीं है कि नहीं किया है yeah, spend. exactly. सब कुछ It's दिया है about मतलब. spending wrong or right. Pedro Porro, Richarlison are good players, but they're not like world class players, are they? Let's be honest. Yeah, I hadn't even heard of Poro. But they are impactful players. अब देखते हैं whether Conte can get them to deliver or if he's motivated enough. अच्छा, I must be saying यहाँ पर for Bayern, भाई very very strangely मैं बोलने वाला हूँ, भाई जितने भी काउंटर अटैक्स हुए ना PSG और wherever they have pressed, I Hmm. am super impressed by Pavard. और मैं अपना हाँ, हाथ ऊपर रख रहा हूँ बिकॉज हाँ, पवार्ड को मैंने इतनी गाली दी है लास्ट फ्यू मंथ्स में बिकॉज हाँ. फॉर मी पवार्ड वाज कैसे मैं बोलूं मतलब ही वाज डूइंग लाइक अ बैलरिन इन एट टाइम्स आई फेल्ट लेकिन आई थिंक इज रियली इंप्रूव्ड हिमसेल्फ इन दिस मैच एटलीस्ट तो बहुत बेटर लग रहा है पवार्ड बोलना चाहूंगा हाँ लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे थे जैसे हमने बोला आई विल बी रियली सरप्राइज्ड इफ ही इज नॉट लीविंग स्पर्स एंड गोइंग टू मिलान में तो बोलता हूँ मैं दैट इज समथिंग मैं देखता हूँ अनलेस पैसों की बात आ जाए I बट don't फॉर think so, मी Ankit. चेल्सी नो यार Yeah, no, Milan might not happen because I don't think they'll let go of Pioli. I think Milan will finish top four. If यू थिंक Milan सो win, yeah, हाँ yeah, yeah, I टेक्निकली think इट्स ऑन गोल they will. डिफरेंस राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग Yeah, no, though they have the experience to because Roma and Lazio have not really been good. एंड आई नो वी आर इन अ बैड मोमेंट लेकिन आई थिंक इट्स अपवर्ड स्पाइरल होपफुली आफ्टर टुनाइट Yeah, I लेट्स सी think व्हाट it's हैपेंस done. अच्छा The यहाँ bad पर moment is over. नहीं वही ना देखो यहाँ पर पुदिन मैं आपका कमेंट में आ रहा हूँ देखिए पुदिन आपके कमेंट में आपने बोला था इन अ वेरी स्ट्रेंज वे कल मैं बाबा से यही पूछ रहा था यार कहीं ना कहीं competition like the UCL, I know every man is not a Tuchel, लेकिन it gives you a welcome break कि यार you're going into knockout competition Yeah. and maybe यार करना है मरना वाला चीज तो मिलान maybe are in a better form आज maybe you can say that Milan, one of the problems for Milan obviously was that Theo and Giroud, that World Cup fatigue, and they were such important players. So they are coming back, slowly, slowly, slowly. I think the last game it showed. I think Giroud scored. So they're coming yeah back. Giroud was Theo the assist and got Giroud the winner scored. yeah And today again Theo assist and these guys have been very important last season. So I yeah think it अच्छा was मैं just हंस रहा हूँ बोलो क्यों भाई Haseki. लगता है these people are hearing me out यार Huh, बेंजामिन पवार्ड गेट्स अ येलो कार्ड okay. जैसे ही मैंने बोला कि भाई प्रशंसा करो तो पवार्ड का आई एम सॉरी बट आई टेक इट बैक भाई नीडलेस पुश टू नेमार needless push to Neymar and Benjamin Pavard gets a yellow card and that is where an Mbappe coming imagine Mbappe coming and running at Pavard just imagine करिए with him on a yellow card should be by Keylor Navas भाई नहीं यार वो on loan है I know but technically I feel that we might actually go for a younger goalkeeper. Wait a second. Go ho! What a 1-2 यार. Ramos saving PSG's ass भाई चुपो मोटिंग पवार्ड और मुसियाला का ट्रायंगल फॉर्म हुआ मुसियाला ऑलमोस्ट गेटिंग एट द एंड ऑफ थिंग्स बट रामोस गेटिंग अ टोपो एट इट और गिविंग अ कॉर्नर भाई जस्ट ओल्ड रामोस डेज याद आ गए भाई यार मेंटालिटी तो स्पर्स आप एसोसिएट नहीं करते इट्स अबाउट समटाइम्स ग्रेट समटाइम्स रियली बैड See, it's entirely possible हाँ that डेरिन Pochettino. प्लीज you'll get your answer from Who is Bahubali? बाहुबली को क्या हो गया यार बोलिए Who is Bahubali? कूलीबाली Koulibaly, yes, I think it's very interesting that he's not doing well at. Maybe बिकॉज it's अब the तो first बैक season, फोर में भी वी हैव शिफ्टेड स्टिल ही इज नॉट डूइंग वेल but then who is doing well at Chelsea? Is my यार question. Like, थियागो सिल्वा अभी भी ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द मैं तो बोलता हूँ बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड ऑन फॉर्म दैट्स हाउ गुड इज okay, डिफेंडिंग थियागो no, सिल्वा but at बाडिशिले present, at present, like I don't know who at Chelsea is performing at a level that I would say is that is their level. Like, who do you नहीं think एंजो is फर्नांडिस हैज रियली इंप्रेस्ड फॉर मी इज रियली okay? इंप्रेस्ड
I know it's Okay. just a couple of games. In the Yeah. finance, really impressed. Bardishile is fantastic by left center Huh. back. Huh. और of course Thiago Silva तो है ही ever present. Hmm. हाँ थोड़ा सा attacking में I hardly know anyone who's doing really well. Hmm. Maybe it's the new guys that may impress too. Lekin again you cannot say that they're doing really well as well. Felix has been awesome last couple of Huh. games. But Huh. वही है 4-5 केपा में भी 4-5 लोग अच्छे कर रहे हैं बस. Yeah. So आधा I तो टीम think. इंजरी से वापस आ रहा है ना. Yeah. चिलवेल, So I think डीजे, I don't know. See, I think Koulibaly. Is it too कोचिच. early to judge him, or do you think that already his career is over at Chelsea? I think. See, you don't get time, bro, in Chelsea. That's the thing. That's the Yeah. problem. That's the thing. That's the thing. Yeah. So it. Reality वो है मतलब as much as we are 10th on the table, part of the reason is Koulibaly. Hmm. Kukurea has been terrible. Kukurea and Koulibaly दोनों combination left center back and left back were really Hmm. bad. अच्छा ये क्या Hmm. हुआ एक सेकंड अपील किया है क्या हुआ So पेनल्टी always Theo नहीं is कॉर्नर always a. कॉर्नर मैं सोचा दनीलो परेरे का टाट पे लग के बाहर चले गई किमिक की फ्री किक कॉर्नर मिला है भाई अगेन इट्स ऑल बायन ठीक है all that PSG has done at home is they have countered and काउंटर में कुछ हुआ नहीं है सच में बोले तो अगेन पावर्ड हैज बीन गुड एज मच एज इज ऑन येलो कार्ड इन द अदर गेम हु स्टूड आउट कॉर्नर कुछ नहीं हुआ अभी तक कौन स्टूड आउट हुआ है I think Theo is doing very well. Brahim Diaz has been good. Liao has been going on his runs. He's getting space, being brought down by Spurs. So I haven't seen much of Perisic. I haven't seen much of Son. Kane's been there. Those long balls are coming, but yeah, nothing from Spurs so far. I don't think Spurs are. I think these 30 minutes, Milan have been very comfortable. नाइस क्रॉस भाई चुपो मोटिंग नहीं यार नूनो मेंडेस गेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टच गोस फॉर अ कॉर्नर भाई आई एम सरप्राइज्ड दैट बायर्न आर गोइंग फॉर मोर क्रॉसेस Hmm. with Sane and Musiala being there, I thought they would try to cut open PSG. Lekin strange, Danilo Pereira dropping back at times. Again, पता नहीं that is Gaultier for you. लेकिन again आप अभी देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि Danilo Pereira is there throughout. Danilo Pereira is in midfield in fact. भाई एक सेकंड यहाँ कुछ होने वाला है मुसियाला मुसियाला नहीं ओबे रामोस ब्रो सर्जो रामोस क्या हो गया उसको भाई क्या By the way, Ankit, क्या खा कर रहा है Malik अरे नहीं Thiaw सॉरी won a इस बार free kick विराटी here. था मेरी गलती इस बार विराटी था मैं सोचा रामोस है विराटी मैन यू नो व्हाट फतेह Huh. एंड एवरीवन इन द चैट Hmm. विराटी इज द वन ड्रॉपिंग बैक एंड नॉट विराटी नॉट Not. Danilo Pereira Yeah, surprised I mean, I'm looking at that when I saw the lineup, the PSG midfield. I'm not saying that midfield is going to achieve a lot in the Champions League. I just doesn't seem like it. but Virati doesn't that take away much from Virati's game अगर वो defensive Yeah, I mean, if he has to, but pivot then खेल रहा है yeah, I mean, I can't really say that Soler and the other guys, Pereira and the new boy, are in वहीं any पर way. सोलेर ने आई थिंक ही मिस्ड अ कपल ऑफ passes एज एक्सपेक्ट एक तो मेसी ने मिस किया था हिमसेल्फ Huh. बट आई थिंक मेराटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो अगर पीएसजी हैज टू सी द बॉल फॉरवर्ड But yeah, coming back on Koulibaly, Ankit, then maybe we see something in the second season. But he's already what 30, 31. But then again, Thiago Yeah, Silva at I don't 40. think we'll get enough money even if we try to sell him. That's true. We rather just we might as well Somebody keep like him. PSG might, be interested. हम्म। अच्छा मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं मैच में वेरी सरप्राइजिंगली पीएसजी बाय ऐसे हाई क्वालिटी मैच नहीं है अभी तक Hmm. आई डोंट नो हाउ अबाउट मिलान स्पर्स जनरल क्वालिटी ऑफ द मैच See, I think I can't say the quality is all that great. There's been nothing from Spurs at all, Ankit. There's been that one long shot, straight to Tataru Sanu. Milan, after taking that goal, are trying to play on the counter, use Liao's space and Brahim's space, and Milan seem very comfortable. And the new boy Chiao, he's doing very well in defense. So even Kjaer seems pretty. So far they've kept Kane in his pocket. Here comes a chance. No, yeah. I mean, I think if I don't know what Spurs have on the bench or what can they change,
But if it stays like this, then I can see Yeah, Milan maybe. they have like Danjuma and Richarlison. Problem है उनकी midfield तो गायब है ना. Højbjerg is suspended and Bissouma और Bentancur are injured. Bentancur uh, probably out for the season. Bentenga to out for the season. Yeah. ACL हो गया. पेरिस बायर्न मैचेस बोरिंग नहीं बोलूंगा अमर्त्या. भाई देखिए मतलब एक चीज मैं बोलूंगा यार, अगेन आपकी चॉइस अगेन. भाई गोल्स के अलावा भी मैच टैक्टिकली इंटरेस्टिंग होता है यार काफी. देखिए फॉर मी ना, अबे भाई बढ़िया शॉट मैन, कोमन जस्ट वाइड. देखिए फॉर मी पीएसजी आर प्लेइंग द टिपिकल ओल्ड मोरिनियो स्टाइल. वही खेल रहे हैं, ठीक है. That's और why I आई वुड said नॉट से that. इट्स टू रॉन्ग. मतलब आप देखो, इफ दे गेट अ ड्रॉ, they are playing for a win and nothing to lose वाला scenario. And Mbappe is back in the next game, right? Yeah, Mbappe will probably be starting next game. It's not Yeah. too bad. Not just Mbappe. Remember, Verratti is coming back from injury. Who knows कितना fit होगा? Maybe that is the reason why Verratti is playing a DM role आज. क्योंकि the fact is, मतलब let me actually just be a safety valve. क्योंकि यार I don't want to be losing possession up front. क्योंकि he's Mhm. just back from injury. Just saying. Soler, in fact, थोड़ा गलत होगा बोलना कि खाली वैरायटी कर रहा है. कार्लोस सोलेर इज एंडिंग अप डूइंग डिफेंडिंग रादर देन अटैकिंग. तो इट्स जस्ट नेमार एंड मेसी जो फ्री है. कार्लोस सोलेर काइंड ऑफ कवरिंग फॉर कैंसेलो. लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड जनरली स्पीकिंग रामोस और पवार्ड के साथ. आई हैव बीन इम्प्रेस्ड विद दीस टू गाइस इन द ऑन द पिच. Who are मुसियाला if स्पेस नहीं if दिया ज्यादा. Barcelona already have Endika lined up, who are they letting go though? I mean, भाई एक तो सादिक भाई से कल बात ही करेंगे डिटेल में. huh, मुझे काफी सरप्राइजिंग लगता है बारसा डिफेंडर्स करते जा रही है, वो भी सेंटर बैक्स. यार इंडिका कैन प्ले लेफ्ट फुटेड. आई नो ही कैन प्ले लेफ्ट लेफ्ट बैक, बट इज आइडियली सेंटर बैक. एक सेकंड, व्हाट अ ब्रिलियंट रन भाई, दी लियोनेल मेसी. बट थर्ड टच वाज हेवी एंड दैट्स वेयर बायर्न क्लियर इट. इट विल बी एरिक गार्सिया. आई एम गेसिंग एरिक गार्सिया has hardly got a ball क्योंकि hmm, क्रिस्टियनसन has apparently started awesomely. Or okay. Araujo is anyway, I think, arguably one of the best young central defenders in the world. तो One वही है ना carry. कि I don't know whether they'll go for Pavard or not. So far, he's being linked with us. He might even stay back at Bayern. Like, Yeah, if he wants to play centre back, and I know Barca play three at the back while in gameplay, but not always, right? yeah, but we always So play three at the back. So Skriniar is leaving. yeah, he's actually more suited to Inter. लेकिन Yeah. Pavard, इतना successful होने के बाद में, with all due respect to Inter, my bro, यार, you know what I mean, right? No, but I think that they were genuine links. Like Bayern confirmed that we made a हाँ, approach, almost हो and ही गया था. मतलब I and it remember. was, yeah, and the only reason was that they didn't want to strengthen PSG, because if Pavard came to Inter, then Skriniar would have gone to PSG. So Bayern, that was the only reason why they didn't. And other than that, it is entirely possible that he'll be coming. Like there are other options too, but you या know. ओके, यहाँ पर डेरेन कपल ऑफ क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं. यस एब्सोल्युटली देवेश, थैंक फॉर दैट भाई. 150 लाइक्स टारगेट है. होपफुली बिफोर द हाफ टाइम एंड्स यू गेट टू 150 लाइक्स. एवरीवन कम ऑन, वी कैन डू इट. ये अपना टारगेट है भाई. साथ साथ में हम बहुत सारे बातें कर रहे हैं अबाउट दीज टू मैचेस एज वेल एज अदर क्लब्स. डू यू थिंक दे आरंट यूजिंग होम एडवांटेज, दैट इज पीएसजी? तो डेरेन मैं वही समझाया था. देखो जो हमने प्री मैच में बात किया था, फॉर मी Rules have changed. पीएसजी का टैक्टिक होगा टेक इट टू हाफ टाइम, गेट एम्बापे ऑन, Do then you they think will he'll come attack. back at halftime itself? Wow. Okay. Or maybe 55 minutes best. Plus, The thing away is, goals don't count they anymore. can't just So take everything to I, second leg, no? but I don't know about the whole, the home away anymore. I mean, if away goals अभी don't count, हाँ, it doesn't matter, but crowd तो है ना, तो it matters in terms of okay. visiting there, and especially Bayern में already अगर लोग बोल रहे हैं कि they have made the park differences that way, तो Bayern में तो होगा ही अभी. Theo, Ankit. Oh my God, he is being a menace down that side. Yeah, actually we didn't Theo and talk about Giroud. Theo क्योंकि Theo has dipped in form recently. Yeah, तो yeah. हमें That's याद नहीं what है I भाई, said. they have a Theo Hernandez, it's not just Rafael That's what Leao. I said. That because of the World Cup, both Theo and Giroud have been out of form till now, till the last game. Yeah, The last Giroud has game, फिर it was भी got the goals, but you're right.
कहीं ना Yeah, कहीं but he is not got involved so yeah, much in the but gameplay. he's not been the same Giroud that he was last year. Hmm. But now the last game against Torino, it was a Theo assist and a Giroud goal, and I Yeah, think it Theo was the assist, same. Like, correct. yeah, so now अच्छा, again, so यहाँ nothing पर changed. पुदिन यहाँ पूछ रहे अबाउट याया टोरे. नहीं यार, मतलब आई वुड डिसएग्री विद दैट. मतलब रादर नो इज आंसर फॉर मी. आई थिंक याया टोरे व्हेन एट बारसा ही स्टार्टेड ऑफ as a pure CDM who could play center back at times, but he always had a good ball in him. But बेलिंगहम का जो इंजन आप एसोसिएट करते हो ना, याया टोरे ग्लाइडेड. I didn't associate him with the engine that I associate Bellingham with. But Bellingham, I would more liken, कैसे मैं बोलूं, मतलब I would actually say Bellingham is closer to Lampard than a Yaya Toure. Where is Bellingham likely to move? Like यार reports say it might be Liverpool if they're somehow able to get top four. But I feel realistically, I feel Real top Madrid. four to गया. हाँ, Four इसलिए is बोल रहा too हूँ far. realistically मुझे लगता है But Real then if Madrid. they win the Champions League or if Chelsea win the Champions League, you're there. एवोल्यूशन गेमिंग लक्स याद रहा भाई. लेकिन वही ना कहीं फॉर्म ऑल्सो मैटर्स और कॉन्फिडेंस मैटर्स. जब आपके पास नेमार, एम्बाप्पे, मेसी तीनों आ जाते हैं ना, दिस पीएसजी साइड पता नहीं क्यों दे परफॉर्म बेटर. ठीक है, वो होता है और हुआ है इस सीजन में. इसलिए मेरा Oh, था कि यार दे माइट एक्चुअली टेक. आई थिंक दे विल बी हैप्पी विद अ ड्रॉ और अ 1-0 और अ 2-1. दीज आर द थ्री रिजल्ट्स दैट आई थिंक दे आर परफेक्टली हैप्पी विद. अभी बायर्न इजी नहीं रहेगा अवे, लेकिन आई नो उनके प्लेयर शायद वापस आ जाए, तब तक हम देखेंगे. Eric Garlic, एरिक गार्लिक Garcia, कौन है? हाँ, Garcia, Eric गार्सिया. Garlic. I feel like Garlic. पता नहीं भाई. मैं तो आई डोंट नो, नो कमेंट्स बोलने वाला था मैं तो. नहीं है, मतलब नहीं यार, मैं नहीं देखता एरिक गार्सिया कमिंग टू चेल्सी यार. मतलब No, but do you see him at that position, CDM? अच्छा, सीडीएम. मैं सोचा यू आर प्रॉब्ली अस्यूमिंग दैट वी माइट गो फॉर हिम. नहीं नहीं, सीडीएम तो नहीं यार. देखो, he does not have that physicality, man. For me, he's like a, in a very strange way ना, he's not very different to Christensen, remember youth days में CDM खेलता था Borussia Mönchengladbach में. He used to be the guy who used to be in the middle of the back three, used to go for एक brilliant ball नुनो मेंडेस द्वारा भाई. लेकिन ओहो, जस्ट अबाउट बचा लिया यार बायर्न ने. भाई साने डिफेंडिंग. भाई ये यंगस्टर जो है ना बंदा, पीएसजी का, Huh. क्या नाम है इसका? He's good. जायरे एमरी. अच्छा यार, अच्छा रन था. Also, हाँ, this is काउंटर है यार. भाई एक तो देखिए, आई अंडरस्टैंड. फतेह, आप बताइए यार. द थिंग इज, यू हैव वॉच्ड इतना फुटबॉल, मैं तो बोल बोल के थक गया. hmm. लाइक अगेन, रेस्पेक्ट टू एवरीवन ब्रो. व्हाई डू पीपल डोंट लाइक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल एनीमोर? I have no clue, man. I love it. For me, the Yeah, perfect match is an a Inter Milan fan and a Chelsea fan and a Real yeah. Madrid fan. Again, मैं नहीं बोल रहा उनका fan हूँ. I think these three fans will relate more to counter attacking football. You know why I'm talking about that, right? Absolutely. Like I have been a fan of that defensive. The 1-0 is the best match. And hit on the break. Yeah, and the goal should be something on the break, and that is the best game ever. Like I enjoy defense. I don't enjoy जो the crazy and this is adrenaline rush होता है, that's a different level. क्या Liao हुआ? on a run, Ankit. Verratti looks Liao injured, bro. has. Oh come on, this is just पेरिसिच का madness. कॉर्नर था, उससे बोल रहे हो क्या? Yeah, Perisic ke corner se. And see, this is where Liao needs. I mean, that maturity. That see, this is the He kind of needs to be chance that he needs. defensively better. But this has been a very physical match. Like it's been a typically that Italian old school, Conte, as though he's playing. जो Conte, by people who do not know, just watch clips of Conte playing for Conte. Yeah, Juventus. yeah. What a warrior! By What a warrior. I think Diego Simeone, Conte, these Yeah, are yeah, some yeah. people that you should watch, यार. अगर if you Yeah, आपको अच्छा लगता है absolutely. proper midfield battle, Roy Keane, of course. Running like crazy and just grinta all over. Who's Theo against Porro or Emerson? I think it's Emerson Royal, no? हमने देखा था Emerson Royal है. Therein. For I me, don't it even looks like know he's going to who Madrid. is Poro though. Yeah, Bellingham that is. देखते यार, अभी के लिए तो भाई चेल्सी के साथ जीतना मत, इतना बोल रहा हूँ बस. नो प्रॉब्लम देवेश, मच लव टू यू भाई. एवरीवन भाई, सब लोग लेट्स हिट दैट लाइक बटन. भाई मैंने हटाया है लाइक टारगेट, बट भूलेगा मत.
दिस इज द टारगेट दैट यू सी ऑन स्क्रीन. यहाँ पर अच्छा कोमेन का रन. अरे भाई साहब, चुपो मोटिंग को लेना चाहिए था हेडर. और अच्छा शॉट. किमिक शॉट, लेकिन नाइस सेव बाय डोनरुमा. भाई किमिक विद अ शॉट ऑन टारगेट. हो क्या कनेक्ट करता है यार, प्यारा किमिक बॉल को. You know, Bayern need to पता win नहीं this यार, आई game. नेवर लाइक्ड सारी यार. नथिंग अगेंस्ट हिम, आई सपोर्टेड हिम व्हेन ही वाज एट चेल्सी. बट मुझे इन अ वेरी स्ट्रेंज वे नो, अगेन ऐसा नहीं कि मैं पॉटर के अगेंस्ट हूँ. लाइक पॉटर एंड सारी डिड नॉट गिव मी दोस वाइब्स, दैट चेल्सी Yeah, डीएनए I think वाला वाइब, Sari. Conte gave me, Tuchel gave me, Mourinho obviously gave me, Ancelotti even gave me, in fact. ठीक है. It's interesting the Sari factor because it's not worked at Lazio so far. They've been hot and cold, hot and cold. Even Chelsea, I remember under Sari they made a great start, and once things went down, it was like you just recovered right at the end when you won the Europe. Oh, मैं Spurs ना have a great एक्साइटमेंट से ना chance. मेरा Oh चप्पल ना my God, टेबल के great नीचे ना save! किक मार Oh, दिया. off the bar, कौन हुआ? अरे भाई साहब, मैं ये तो offside, ये गड़बड़ हो रहा हूँ. मैं आपका कमेंट्स लेने के offside, चक्कर में ना offside, मिलान offside, वाला मैच मिस कर रहा हूँ. पीपल कम ऑन, उसी बात पर हो जावे अंकित ओपी इन द चैट. offside, offside, आई एम offside. रियली मिस बिलीव इट. आई एम वाचिंग जस्ट बिट्स एंड पीसेस ऑफ मिलान स्पर्स because I know that the chat would like me to react in Paris versus Bayern. But counter attacking football, yes, aviation giving legs. I'm glad कि लोग ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं वैसा. रिमेंबर भाई, आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था. अ Hmm. प्राइम ओजिल एंड रोनाल्डो मैन कॉम्बिनेशन Oh, yeah. ओवर द लाइन Like offside. ऑफ साइड. अच्छा, हैरी केन का था ना, वही वाला ना. Oh, oh, oh. If Giroud had controlled that. वो सॉन वाज ऑफ साइड, राइट? Yeah, yeah, Son was offside. But then, Tottenham do have a goal in them, but so far this half they've been okay, आई they've मस्ट गिव nullified. टाटा रुसानू थम्स अप कि यार Yeah. डिस्पाइट ऑफ साइड वो बंदा जाने नहीं दिया गोल में. So भाई this, यहाँ half पर डिलिक्ट और मेसी, जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था कहीं ना कहीं, फाइनली कम. डिलिक्ट एंड मेसी हैविंग अ बैटल. डिलिक्ट कंसीडिंग द फ्री किक एट द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम. देयर इज अ फ्री किक इन अ ब्रिलियंट पोजीशन फॉर दी लियोनेल मेसी. यान सॉमर ट्राइंग इज बेस्ट कि भाई ये गोल मत होने देना तू. भाई क्या बोलते हो एवरीवन इन द चैट? लियो मेसी ऑन द फ्री किक. मेरा बाय द वे 25 सेकंड्स हो गए स्टॉपेज टाइम में, और स्टॉपेज टाइम कितना है दिखाया नहीं अभी तक फॉर वॉट एवर रीजन. भाई सोनी दिखाई है भाई कितना स्टॉपेज टाइम. लेकिन लेने कौन वाला है, नेमार की मेसी? हो सकता है नेमार ले, हो सकता है जस्ट, लेकिन मुझे लगता है मेसी लेगा. मेसी ही लेगा इस साइड से ही. नेमार बेटर होता उस साइड से, लेकिन नोइंग मेसी, मेसी विल टेक इट. भाई पीपल, let's see. Jan Sommer has left a gap. It will be Messi. I don't know why he's left a gap on the right hand side. हाँ मेसी है भाई. नेमार आराम से छोड़ दिया बॉल को. मेसी लेकिन नहीं, वॉल डूइंग हिज जॉब जस्ट अबाउट. लग रहा था कि पीएसजी के लिए चांस होगा, लेकिन नहीं हुआ. या टट्टी परफॉर्मेंस से भी बेकार थी यार. भाई पेड्रो पोरो सच में, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पोर्टिंग, मैंने वही बताया था कल भी. पेड्रो पोरो डजंट, मतलब वो दिखा. जापो कोस्टा की याद हो गई. जापो कोस्टा इज एक्चुअली गुड. आई एम गिविंग पेड्रो पोरो कॉम्प्लीमेंट वहां पर. my God. So that's I think half time क्या हुआ here. यहाँ पर? भाई हाफ टाइम हो गया पीएसजी बायर्न में. एंड टॉकिंग अबाउट टट्टी, आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे मैच के साथ. हो सकता है सेकंड हाफ में हो जाए विद मे बी एम्बापे कमिंग ऑन लेट. बट व्हाई इज कॉन्टे आस्किंग फॉर अ कार्ड? See, this is one thing I don't like about Conte, that he gestures this, but that's how Conte is. यहाँ मिलान वाला स्पर्स वाला अभी भी 1 मिनट बाकी मेरा तो. Yours is done half time. They've got a free kick, but I think this is they've it's still going on. The Spurs have a चलो free कोई kick and नहीं. a free kick situation. भाई everyone in the chat, it is Milan 1 Spurs 0 अभी तक. So let's hope for the best in terms of Milan, and you all know, not just anti-Spurs who, yes, Spurs fans, sorry, it's a reality, but for He's Milan giving the 100% sure. he's allowing them to take the free kick. We are above the 3 minute Okay, mark. by stoppage time, I thought it's done, but why is he allowing them? Yeah, let's see. Oh, yeah, no.
That's it. Halftime. So overall, Ankit, halftime. चलो हो गया ना. Yeah, and Spurs have, yeah, they've been very lackluster. Like Yeah. it's चलो भाई, Milan अच्छा सबसे have पहले फतेह, आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड एवरीवन इन द चैट टू रिमाइंड मी जस्ट 1 मिनट बिफोर किक ऑफ, क्योंकि मैंने 1 मिनट के लिए बंद किया. ठीक है, नाउ आई वांट टू एड्रेस द चैट. तो मैंने बंद किया अपना ऐप एज वेल एज बेसिकली ऑन द अदर स्क्रीन. तो मैं दोनों मैचेस एक बार बंद किया हूँ. हाफ टाइम हो गया. फॉर yeah. पीपल हु अभी उठे, यस बहुत बार होता था. मैं जब चैंपियंस लीग मैचेस देखता था, मैं अलार्म रखता था 1 बजे का, उठता था 2:30 बजे. तो होता है कभी कभी भी, आई नो दैट. तो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वंडरिंग क्या हुआ अभी तक, इट इज PSG 0, बायर्न म्यूनिख 0, मिलान 1, स्पर्स 0. ठीक है, बट यहाँ पर ऑफ कोर्स मिलान गेटिंग a big goal, Brahim Diaz, the Real Madrid guy who's on loan to Milan. Of course, hopefully, he will be staying in Milan. Let's see if that happens or not. Looks like it will happen. But on the other hand, PSG, यहाँ पर मैं क्विक एनालिसिस करूंगा and I'll come to फतेह for the Milan game in just a minute. भाई सब लोग आप लोग बोलिए. यहाँ पर एंड टू एंड स्पोर्ट्स बोल रहे हैं, हाउ वाज मेसी गेम सो फार. अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेसी का एक ब्रिलियंट रन था. वहां पर उन्होंने दो जन को बीट किया. तीसरे जन को बीट करने गए तो ही कुडंट डू दैट. सेकेंडली, मेसी ऑलरेडी इज प्लेइंग ऑन काउंटर. ठीक है, मेसी एंड नेमार या फ्रीमैन, 30 मिनट्स ऑफ द गेम वही चल रहा था. पूरा बायर्न म्यूनिख वाज कीपिंग द पोजीशन. ठीक है, एंड इट वाज अबाउट पीएसजी हिटिंग ऑन द ब्रेक, पीएसजी कीपिंग अ लो ब्लॉक. और वो जरूरत भी थी कहीं ना कहीं, बिकॉज यू ऑल नो मुसियाला काइंड ऑफ मैजिक फॉर्म ही इज इन. साने, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हाफ हो गया था कि साने वाज डिफेंडिंग. और यहाँ पर आई थिंक जेर एमरी को देना पड़ेगा. मतलब वो जो दिख रहा है ना, 2 banks of 4, वो एक्चुअली वैसे था. जेर एमरी ऑन द बेंच, ऑन द विंग सॉरी, इज डूइंग प्रिटी वेल. एंड साने जो लेफ्ट विंग में खेल रहे बहुत बार, हैड टू कम बैक एंड ब्लॉक हिम इन द एंड. बट ऑन द अदर हैंड, डिड Bayern defend well against Messi? Of course, I think Bayern did brilliantly. स्पेशल शॉट हो जाता है टू पवार. डिलिक्ट ऑल्सो आई थिंक एक दो बार मेसी को अच्छा डिफेंड किया. बट फॉर मी, as much as Upamecano has been the final kind of a defense of Bayern, I think Pavard was great both forward as well as backside. He's great. येलो कार्ड मिला है, unnecessary push to Neymar. बट ऑन द अदर हैंड, मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज क्या हूँ, बिटवीन वेराटी और परेरा, इट इज वेराटी वो ड्रॉप कर रहा है ज्यादा डीप, बिकॉज मे बी इज बैक फ्रॉम इंजरी, आप बोल सकते हो, मे बी वन रीजन. और एक और सरप्राइजिंग चीज ये है कि कार्लोस सोलर को एक जॉब दिया अगेंस्ट कैंसेलो. तो बहुत ही डिफेंसिव खेल रही है पीएसजी. बट या अगेन, बिफोर गोइंग टू द मिलान गेम, फतेह क्या लगता है आपको, द रीजन बीइंग दैट इज बिकॉज ऑफ पीपल कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पीएसजी का फॉर्म नहीं है, Galtier might be, let's take it to an hour and then take it from there. You think that is the only thing? Sergio Ramos also, by the way, doing well, by the way. I think it's typically two big European teams playing. They'll respect each other. They'll be more circumspect and defensive. And obviously, like both the teams are not in form. Both the teams have injury issues. So yeah, I mean, I think it's only right that it's been KG. And maybe even the next 45 minutes will be the same, Ankit. I thought that Bayern were going to come out and score, but yeah. They did start very well. मैं बोलना चाहूंगा, Yeah. चुपोमोटिंग had got an early chance, he had got an early shot. कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पर डोनोरुमा को भी देना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि बहुत How ज्यादा has टेस्ट किया. how has Sane been? साने, वही मैं बोल रहा हूँ ना, साने इन द फर्स्ट से 30 मिनट्स इट वाज अबाउट चुपोमोटिंग एंड मुसियाला Huh. विद किमिक एंड कोमन. सो ये चार लोग ज्यादा, कैंसेलो भी आई थिंक मोर ऑफ द बॉल आई कुड सी विद कोमन, कैंसेलो, किमिक, चुपोमोटिंग और मुसियाला. Huh. Towards the end of that half, slowly but steadily PSG have gotten into the game in terms of basically here Soler is doing itna defensive work and Zaire Emery on the other side, jahan par Sane was kept busy along with the wings. So I think kahin na kahin, I think PSG ko bhi dena padega that they have not allowed Sane that space. But at the same time, aren't you surprised कि यार Coman and Cancelo, or the fact that they're going wing back, अब एम्बापे नहीं है आपके पास, आई Huh. नो चुपोमोटिंग है, दैट एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है ना, क्योंकि मिडफील्ड में जो वीक लग रही है पीएसजी की, लेकिन इतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, ट्राई भी नहीं कर रहे. आई थिंक ज्यादातर क्या कर रहे हैं बायर्न, दे आर गोइंग टू द विंग्स एंड देन क्रॉसिंग. मतलब इज इट द राइट थिंग विद रामोस एंड परेरा बीइंग देयर, डू यू थिंक? I don't. And I don't think that although Choupo-Moting is supposed to be good in the air, but then I don't think he can be as good as Ramos is in the air. So, and also, since you did mention Cancelo, we talked about how Hakimi and Cancelo,
How has Hakimi been? I don't think you even mentioned him once, Ankit. आई डिड नॉट, यस, नहीं नहीं तो बेसिकली स्पीकिंग क्या ना, Hmm. इट्स लाइक टू So बैंक्स ऑफ defense. फोर्स। तो मेंडेस तो फिर भी अच्छा किया, मेंडेस हैड अ वेरी गुड बॉल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बहुत ही अच्छा बॉल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकंड के लिए आई थिंक इट वाज जेर एमरी ऑन दैट विंग, जो ऑलमोस्ट गॉट इट, बट अगेन क्रेडिट टू पवार जो क्लियर किया था। बट Yeah. हकीमी, यू मेड अ ग्रेट पॉइंट, बिकॉज फॉर मी इट्स मोर ऑफ डिफेंसिव वर्क, तो बिकॉज दे आर जस्ट सिटिंग बैक, तो हकीमी Yeah. अपना नेचुरल गेम खेल नहीं पा रहा है, तो वो ये Right. इश्यू हो रहा है। तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू गेट दोज वन टूज गोइंग, बट नहीं होगा ना, क्योंकि आपके बेसिकली 8 पीपल आर सो बिहाइंड, so there's a huge gap between them and Messi, Neymar, तो वो नहीं हो रहा, जो ट्रायंगल्स बायन फॉर्म कर रही है वो नहीं कर पा रही पीएसजी। तो बायन आर स्टिल डूइंग दैट थिंग, तो बायन का आपको दिख रहा है दैट क्लियरली पावार्ड इज गोइंग ऑन अ लॉट ऑफ रन्स, यू कैन सी पावार्ड, मुसियाला, और भाई इनफैक्ट चुपोमोटिंग का बेसिकली एक अच्छा मोमेंट था जहां पर सर्जियो रामोस की प्रशंसा करनी पड़ेगी, बिकॉज सर्जियो रामोस शोड जो कर सकता था बैक इन द डे, ही इज यू नो ही डिड पुट अ कपल ऑफ ब्रिलियंट चैलेंजेस, एंड अगेन वेराटी डूइंग हिज जॉब राइट, लेकिन ऑफेंसिवली PSG are literally looking like toothless, सच में बोलो तो इट्स दे आर लाइक, वही है जैसे हमने मिलान के बारे में बात की थी, दैट रफाएल लियोन माशा इंशाल्लाह वही चीज मेसी के साथ हो रही है। नेमार भाई, ही हैज जस्ट वन पवार, गॉड पवार्ड येलो कार्ड एट बेस्ट, वो भी पवार्ड की गलती थी, वो धक्का मारा, Hmm. नेमार ने डाइव किया था अर्ली ऑन, आई डोंट थिंक ही हैज डन इनफ, बट अगेन कैन वी क्रिटिसाइज हिम? आई थिंक वी शुड क्रिटिसाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं गाल्टियर एज वेल, क्योंकि गाल्टियर हैज गॉट देम सो डिफेंसिव कि उनको आउटलेट करना हो रहा ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं, बट अगेन 0-0 है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द गेम। अंकित भाई एंड फतेह, लूकस मोरा और रिचार्लिसन, I think Lucas Moura. I mean, yeah, on to what be he has honest, both achieved. are very different players though, right? Because Yeah. Richarlison is more like a center forward who likes to come from the left hand side. Lucas Hmm. Moura is a typical pacey winger for the way I see it. लेकिन Pudin, to be honest, ये जैसे ओबामेयांग चेल्सी वाला है हाँ, कहीं ना कहीं 2-3 मैचेस के लिए अच्छा नहीं किया था, बट आई थिंक लूकस मोरा नॉट गेटिंग इनफ चांसेस अगेंस्ट कॉन्टे, अगेन अंडर कॉन्टे, मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग, बिकॉज कॉन्टे इज ऑलवेज लाइक्ड हिज विंगर्स, so I'm really surprised with that. He used Pedro like crazily good in the second season at Chelsea. But again, coming back to Bayern PSG, भाई replacement क्या लग रहा है? Mbappe now, कि आप बोलोगे come on, it's 0-0, why do you want to risk him now? Yeah, I mean, I would not risk him if it's a serious injury. I Pavard think in a yellow card, but remember, yeah. So not I would not risk him at halftime. Maybe around the 68th minute mark, 60, 65th, 70th minute mark, because you do want him available for the next leg as well if he's not 100% today. yeah, I And think, yeah, that's a fair point. Lekin at the end of the day, I think Bayern might make some changes. Who knows? Bayern actually might have Gnabry. He might be coming on. Or Gaurav का अच्छा point था. Directness. I think Gnabry is one who actually brings in a lot of goals. Remember Champions League and Gnabry. He's actually having a good record in Europe. Huh? Generally in top clubs, I think he plays well. So who knows? Gnabry might come on for Bayern. Maybe even Muller. Just saying. Musiala, आर वी ऑल डिसअपॉइंटेड मुसियाला? थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई कर लिया मैंने, मुसियाला uh, मिसियाला एंड ऑल द, when you मतलब said फैक्ट इज yeah, ही the शोन Messi. दैट, लेकिन अगेन गोरेट्स्का, आई थिंक ही कुड डू बेटर, इफ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट एंड हार्श मे बी, आई थिंक गोरेट्स्का हैजंट हैड हिज ए गेम, कहीं ना कहीं इन मिडफील्ड क्या हुआ है ना, it's been Verratti and Kimmich who stood out. तो क्या हुआ है? They've kind of cancelled each other. Or also PSG are playing a bit too defensive because of the fact that Coman और Cancelo है. PSG decided, okay, let's get double protection on the wing. Let's have Zaire Emery and Soler protecting Mendes or Hakimi who would like to bomb on. तो it's kind of cancelling अभी, लेकिन ज्यादा अटैक्स फिर भी बायन के आए हैं. अगेन रामोस हैज बीन वेरी गुड फॉर मी. अगर कुछ है बायन के पास जहां पर दे कैन एक्सप्लॉइट इट, आई थिंक दनीलो परेरा. वुड यू मेक अ चेंज दनीलो परेरा? अगर आप मतलब हु वुड यू ब्रिंग ऑन एम्बापे फॉर? सिंपल एज दैट. So would you take off Danilo Pereira then? And आई then थिंक इफ Verratti and गाल्टियर इज ब्रेव इनफ ही माइट, बट लेकिन सोलर को, आई थिंक सोलर इज द आंसर, Soler would go then. बट Yeah. लेकिन ऑनेस्टली दनीलो परेरा किया क्या है? प्लीज समवन इन द चैट टेल मी. I think it's been times that Verratti and Ramos has saved Danilo Pereira. सच में बोले तो. ठीक है, आई नो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं किया है, आई एम जस्ट सेइंग एनीवे. भाई चेल्सी पर आगे आएंगे यार, आज थोड़ा सा इतने सारे चीजें बातें करने हैं, तो अगेन वी हैव जस्ट काइंड ऑफ रिव्यूड द फर्स्ट हाफ ऑफ पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस बायर्न म्यूनिख. इट्स मिलान टॉटनहम एब्सोल्युटली. मच्छर है क्या बॉम्बे में? बहुत है.
बिल्कुल है भाई, सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए। क्या हो रहा है भाई, आज लाइक्स काफी कम हुए हैं, इतनी कंजूसी क्यों? कम ऑन ऑलमाइटी फैम, कम ऑन, गेट इन द हाउस एंड लेट्स लाइक द कम्युनिटी पोस्ट एज वेल एज द स्ट्रीम, एब्सोल्युटली हेल्प्स। उससे ही भाई गाड़ी आगे चलती है, आप लोग की और हमारी साथ साथ में, आप जानते ही है। लेकिन मिलान स्पर्स भाई, ओवर टू फतेह। फतेह, गो फॉर इट ब्रो। So I think Milan made a great start. They were all over Spurs in those opening 5-10 minutes. Uh, I think the French World Cup boys Theo and Giroud, they are getting back to their pre-World Cup form for Milan. So and other than that, it's been a very physical game, Ankit. Like even in midfield, Tonali is always going to be physical, but Krunic, Theo Hernandez, and I've been very impressed with Malik Thiaw. I mean, Chiao, whichever way they call him. I think it was him who passed to Theo Hernandez, where he took over, took on Romero, and then took the shot. So Milan have been very comfortable. Spurs have gotten back in the game, but they've had nothing to show for it. There's just one long range effort that was easily saved by Tataru Sanu. Son has been kept quiet. Perisic has been kept quiet, and that's why I said, when you said that you expected Spurs to sort of win, um, this Spurs नहीं team, नहीं, there's स्पर्स so वर much more. एक्सपेक्टेड टू विन, आई प्रेडिक्टेड मिलान विल विन। Yeah. But then, like you said that, oh, well, easy for Spurs or something. No, no, no. I think, see, I think, okay, if Conte can get them up in the halftime, let's see what happens. But other than that, this is just from what I remember, Conte's Inter and Conte's Juve and Conte's Italy. This Spurs just doesn't seem that way. I mean, it's they're very flat, Ankit, very very flat. That drive is not there. आई थिंक वो रीजन है ना, क्योंकि आपके, आई नो भाई, बाय द वे पीपल, भाई जैसे ही हम, भाई एक तो चैट में जो लोग ड्रॉप कर देते हैं ना, एज सून एज आई टॉक अबाउट अ सीरिया क्लब है ना, मैं करते रहूंगा यार, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लव टू ऑल द क्लब्स इन द वर्ल्ड। मैं, हम बात किए 15 मिनट तक पीएसजी और बायर्न की भी बात की, हम वापस से आ रहे भाई। सीरिया used to be for a good couple of decades, if not more, Yeah, the league in the whole of the world. yeah, Not just that, Milan are Scudetto champions, and at the end of the day, by Spurs Milan is a round of 16 game, so it has equal importance for me as much as PSG Bayern has. Let's be honest. ठीक है, मैं spend करूंगा टाइम इस पर बात करने के लिए भाई। at the end of the day, हम खाली we not focus on a couple of players, but again, हरीश, आपके कमेंट में आ रहा हूं मैं। दैट मिडफील्ड देखिए, स्पर्स का जो मिडफील्ड है ना, mm, कहीं ना कहीं बेंटनकर और हॉयबर्ग mm, जो इंजन लाते हैं ना, दैट इज mm. आई थिंक इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, एज मच एज सार एंड स्किप माइट हैव डन द जॉब Yeah, फिजिकल, लेकिन वो yeah, प्रेस बोल दो या बेसिकली इवन yeah. आजकल इनफैक्ट दे हैव गॉटन बेटर ऑफेंसिवली बोथ ऑफ देम। एंड Mm, रिमेंबर, हॉयबर्ग इज समवन पीपल टेंड टू फॉरगेट, बेंटनकर एंड हॉयबर्ग हैव प्लेड चैंपियंस लीग फुटबॉल बिफोर, yeah, पीपल फॉरगेट इट। हॉयबर्ग yeah, वाज इन बायर्न म्यूनिख ऑल दोस इयर्स yeah. अगो, ठीक है, Huh. और बेंटनकर वाज इन यूवेंटस, राइट? Bentengon was at Juventus, but I didn't know Hoiberg हाँ, was at Bayern or was it Leipzig? yeah, Heuberg was in Bayern Munich. So basically speaking, what I'm trying to say, they are not, matlab, they are players who are coming with experience, be it of the bench or be it in the starting 11. They have been there or done that. So they missing them is huge. So I can see why it's a battle, but यहाँ पर डिफरेंस मेकर्स वही हो जाते हैं व्हेन यू हैव क्वालिटी लाइक अ थियो हर्नांडेज। एंड आई डोंट अग्री विद हिज रेटिंग, अगेन मैं हर एक सेकंड नहीं देखा उस गेम का। फतेह, आप बोलो, डू यू अग्री विद थियो हर्नांडेज रेटिंग दैट यू सी ऑन स्क्रीन? I आई थिंक इज do, बीन I बेटर do. देन दैट। He's been very good. He's been their attacking outlet. He's been very physical. He's gotten, into the Spurs players. He's नहीं, मैं तो like, एक्सपेक्ट कर रहा था और भी ज्यादा होती है फॉर मी। no, I ब्राहिम think डियाज it's obviously scored the goal, लेकिन hasn't Theo Hernandez been the standout player? I would say Thiaw has been the standout player. I think he's won every duel that Defensively, he's gone at, and he's been defensively, he's been very impressive. And Kulusevski is really struggling. He's got Kulusevski in his pocket so far. So wow. I think those ratings are. In fact, I would say that Liao probably doesn't deserve the 7 because towards the end he started well, Hmm. but towards the end, it was a typical Liao performance where, तो yeah, इस गेम में कुछ चेंजेस, जैसे वी स्पोक अबाउट पीएसजी बायर्न, आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग नाउ, और यू लाइक कॉन्टे मेक्स लेट चेंजेस एनीवे, एंड सो डज पियोली आइडियली, राइट? see, I think you talked about Origi. I'd be very interested in seeing how Ante Rebic does if he was to be trusted. या बट ही इज Uh, रियली आउट ऑफ फॉर्म यार, दिख नहीं रहा he's really बॉडी। out of form. Absolutely, I agree. But he is one of those guys who can just pop up. Giroud, I don't know whether he has another 90 minutes in him. So definitely, I think that is a या change that.
Let's see again. Yes, I know that kahin na kahin, I think that wing play which Tottenham strive on, I think maybe the fact is they might have to replace their wings, that is Milan यहाँ पर Salemakers, मैं नहीं देखता वो he'll stand out in that wing No, no, back no. role. He's been very mid. Like very bang average. हाँ, तो मुझे लगता है टुवर्ड्स एंड आई कैन सी अ कलाब्रिया काइंड ऑफ Yeah, कमिंग इन yeah, डिफेंसिवली, अगर वो 1-0 रखे तो yeah. इट मेक सेंस। बट यहाँ पर पीएसजी बायर्न में या आप क्या पूछ रहे थे यहाँ पर, डू यू थिंक पीएसजी नीड एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर? भाई आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द स्ट्राइकर हरीश राइट नाउ। आई Bring थिंक on Fabi. मतलब नहीं, उससे पहले भी दे आर नॉट हैविंग, मतलब मिडफील्ड में आप देखो वेराटी द मोस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर इज Hmm. प्लेइंग होल्डिंग मिडफील्डर। मतलब Yeah. ही इज नॉट अ एंड्रे पिरलो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विराटी, ठीक है, ही कैन डू दैट जॉब, लेकिन आई Hmm. वुड से विराटी इज मोर लाइक, आई लाइक हिम सीइंग एज अ नंबर 8 इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, Hmm. विराटी को मैं वैसे देखता हूँ, मैं ही इज लाइक अ बॉक्स टू बॉक्स और नंबर 8 वैसे देखता हूँ मैं। आई डोंट थिंक व्हेन ही प्लेज, और वो क्यों हो रहा है हरीश, रीजन ये हो रहा है कि पीएसजी के पास जा रही नहीं ऊपर ज्यादा बॉल। एक तो मेसी इज द ओनली आउटलेट, नेमार हैजंट बीन हिमसेल्फ। सेकेंडली लाइक आई सेड, विराटी इज द ओनली सप्लायर और वहां पर विराटी इज डूइंग अ डिफेंसिव जॉब। लेकिन दनीलो परेरा वहीं पर, डज गैल्टियर हैव द गट्स टू एक्चुअली रिप्लेस दनीलो परेरा विद अनदर मिडफील्डर? मतलब does will it do like for like, जहां पर you don't have like a proper destroyer like a Danilo Pereira? मतलब would you do that फतेह, अगर आप गाल्टियर हो? I'll just show you the bench as well. तो दनीलो परेरा के लिए maybe just maybe if you're saying that he's not working in terms of getting the ball forward और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जा रहा है at least for the first half an hour जो हुआ था, But I will don't you think get you in take Fabian off. Ruiz? I don't think you. Yeah, Brian Ruiz maybe, but Fabian Ruiz, sorry, maybe. But I don't think you take off a defensive midfielder and bring on Mbappe because नहीं, you एम्बापे know, तो नहीं, एम्बापे वाला तो सोलेर वाला हो गया, मैं बोल रहा हूँ एक yeah, और चेंज। Soler. नाउ Yeah, दैट देयर आर Fabian 5 Ruiz. चेंजेस, मे बी Fabian Ruiz would make sense. Oh, Fabian Ruiz or Vitinha, maybe Vitinha Coutinho. is someone who carries forward with the ball. Yeah, yeah. लेकिन अगर आपको चाहिए डिफेंसिव ज्यादा, तो बिटवीन विटीनिया एंड फैबियन रूइज हु इज डिफेंसिवली बेटर, आई थिंक probably Ruiz is defensively better you would say, और विटीनिया इज मोर लाइक बॉल कैरियर, लेकिन वो वेराइटी भी कर सकता है आपका। तो आई फील दैट मे बी फैबियन रूइज माइट बी दैट गाई, क्योंकि यू डोंट वांट टू गो ओवर अटैकिंग एज वेल, क्योंकि अभी भी 0-0 है। पुदिन वहां पर बोल रहे बट वी नीड डेक्लन राइस टाइप ऑफ प्रॉपर डीएम, बट ऑल्सो आई डोंट माइंड। चलो कूल है कूल है भाई। चैट चैट मुझे बता देना यार, मैच शुरू हो रहा है तो भाई मैं बंद करके बैठा हूँ 1 मिनट के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू, अच्छा चलो, डेक्लन राइस प्लेयर प्रॉपर डीएम। नहीं यार, बेलिंगम टू बी ऑनेस्ट नहीं आने वाला यार, मतलब इट्स टू गुड टू बी ट्रू पुदिन, जब होगा तो देखेंगे। आई नो रिपोर्ट तो बहुत आ रहे, नेमार एंड मेसी नीड अ नंबर 9 रनिंग बिहाइंड फॉर देम व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड टुडे, हरीश बोल रहे हैं। अगेन ये भी हो सकता है टैक्टिकली दैट कार्लोस सोलेर माइट कम इन बिटवीन, वो जो बोल रहे हैं ही कैन बिकम योर नंबर 10, और इट माइट बी मेसी और एकेटेकी को लाए, इधर वेज भी हो सकता है हरीश, इट कुड बी पॉसिबल। लेकिन याद रखिए वहां पर बायन आर प्लेइंग विंग बैक सिस्टम, कोमन है और बेसिकली आपके क्या बोल रहे हो, कैंसेलो है ना, हाँ कैंसेलो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। अच्छा, किम्पेम्बे कमिंग ऑन, भाई सब लोग, आपने बताया नहीं शुरू हो गया क्या मैच? एक सेकंड भाई, मैच लगा देते हैं सबसे पहले, मैच चालू भाई, थैंक यार, गौरव और पुदिन बोल भी गए। मैं लेट ले लिया चैट भाई, फतेह को बोला था भाई बता देना, फतेह खुद ही ब्रेक पर चले गए, 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं लगा तो भाई सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, हो सकता है शेयर करिए। अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीट्वीट along with this link, it'll be absolutely great if you can do that। लेकिन हाँ, मैं एक सेकंड, मैं रॉन्ग वाला मैच लगा दिया हूँ, सोनी 10 2 में आ रहा है ना, हाँ चलो भाई, Kimpembe is come on, I believe. That's the change that I'm seeing. Again, it looks like they are happy to take a draw or one on the break. वो लग रहा है मुझे एब्सोल्युटली। मैं दूसरा वाला मैच भी लगा रहा हूँ इसमें, एक सेकंड दीजिएगा मुझे भाई, तब तक डू लाइक एंड शेयर द स्ट्रीम, हो सके तो लेट्स हैव मोर पीपल इन, विद ऑल योर हेल्प वी कैन डू दैट, और होपफुली वी आर क्लोजर टू द टारगेट देन एवर। क्या है हमारा टारगेट? चलो टारगेट भी लगा दिया स्क्रीन पर। भाई इतना फॉग ही क्यों हो गया ऑल ऑफ अ सडन यार पीएसजी में? ये क्या हो गया? चश्मा लगाना पड़ेगा क्या मुझे? अच्छा, मिलान स्पर्स में आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज एज एक्सपेक्टेड, एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज इन मिलान स्पर्स।
But again, to recap, it was a Brahim Diaz header after a mistake, maybe from Tottenham goalkeeper. लेकिन credit देना पड़ेगा to Theo Hernandez and even to Simon Kier to get those passes along or winning the ball as well. लेकिन PSG में, like I said, Hakimi is off. People, Hakimi is off. Interesting change वहां पर. क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे भाई साहब, PSG on the counter. भाई आप लोगों को कमेंट्री सुन नहीं रहा है ना? भाई ये ज़ेयर एमरी इज डूइंग ब्रिलियंटली ब्रो ऑन द विंग अगेन. राइट बैक कौन खेल रहा है? मार्किनियोस. भाई पीएसजी करी क्या है अभी? they've got किम्पेम्बे इन. तो किम्पेम्बे, रामोस, सेंटर बैक्स आई एम गेसिंग, एंड मार्किनियोस राइट बैक. भाई इतना फॉगी हो गया ना भाई. व्हाट अ क्रॉस. ओहो, इंजरी इंजरी हो सकती है. एक सेकंड, इंजरी हो सकती है. प्रिटी श्योर यहाँ पर सोमर वेंट फॉर इट बिग टाइम. कौन था? दनीलो परेरा. दनीलो परेरा शायद ऑलरेडी ऑफ साइड थे. बेंडेस का क्रॉस था, लेकिन कोई नहीं. अच्छा, मीनवाइल मिलान की भी इंजरी लग रही है यार. ये क्या हो गया तुनाली? अरे भाई टेंशन की घड़ी है. भाई रोमेरो, व्हाट अ बैड चैलेंज फ्रॉम रोमेरो मिलान के गेम में. बैड वन यार भाई साहब. रोमेरो को डेफिनेटली येलो कार्ड मिलना चाहिए. क्या बोलते हो? इट वाज प्रीटी हाई इन फैक्ट. ऑरेंज कार्ड. इट्स नॉट फ्रॉग बो बट फ्रॉम पेरिस फायर क्रैकर्स. ओके. चलो, पेरिस में हमेशा होता है फॉगी फॉगी. यस, फायर क्रैकर्स लाइक हरीश सिंह. आई थिंक हरीश आप पेरिस में हो क्या? नाइस टू नो यार. आग लगा रखा है इसलिए फॉगी है. बिल्कुल भाई. सोमर और परेरा के बीच में लड़ाई होगी. आई थिंक सोमर वाज अ लिटिल बिट नॉटी, यू कैन से देयर. नहीं, आई थिंक ही वेंट फॉर द बॉल ऑफ कोर्स, लेकिन वो मिस कर दिया बॉल और टाट में लाके लगाया परेरा के. दैट्स व्हाट हैपेंड. बट मीनवाइल टोनाली, भाई टोनाली रोमेरो. भाई पीपल प्लीज टेल मी, रोमेरो गॉट अ येलो कार्ड. यस, चलो, ये रोमेरो गॉट अ येलो कार्ड. सो यहाँ पर रोमेरो इज अ येलो कार्ड स्पर्स का अगेंस्ट मिलान अवे. एंड अगेन पीपल, आई रिक्वेस्ट एवरीवन इन द स्ट्रीम टू लाइक द स्ट्रीम. क्या हो गया भाई? इतना बुरा लग रहा है चेहरा आप लोग को? सब लोग ड्रॉप कर दिया. 2 मिनट के लिए गए भाई फतेह बस. आ जाओ आ जाओ सब लोग आ जाओ. सेकेंड हाफ विल बी गुड. वो कैसे होगा? लाइक्स बढ़ा के होगा यार. एब्सोल्युटली हेल्प होगा. अगर शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर इन योर स्टोरीज और व्हाट्सएप और मे बी रीट्वीट माय ट्वीट विद द लिंक. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रहेगा. बट मोर देन एनीथिंग, लाइक द स्ट्रीम, लाइक माय कम्युनिटी पोस्ट, मोर देन एनीथिंग. लेकिन हाँ, सब लोग सेकेंड हाफ का प्रेडिक्शन मैंने लेना भूल गया यार. एवरीवन इन द हाउस, जो भी यहाँ पर है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि बने रहे हो. It's 2:45 in the morning. Hopefully, you will be with us even the next 2 days because we are going in multiple live streams. भाई सब लोग, do let us know what do you think will happen second half में both the games में. यार एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ भाई, जो बोरिंग बोरिंग बोल रहे हैं ना. पुदिन, अरे गोल हो गया. Coman scoring bro. Kingsley Coman scoring जैसे बोरिंग बोल रहे हैं. And he didn't celebrate obviously because he is the next PSG player. We all remember that. भाई Kingsley Coman is a Frenchman from Paris. Or Donnarumma, should he have done better? He should have done better. Let's be honest. भाई where was Donnarumma? लेकिन brilliant by Choupo-Moting doing some nice channel work. और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्रॉस यार, बढ़िया क्रॉस. भाई अल्फोंसो डेविस आए थे कैंसेलो के लिए. अरे मैं वहां बोलना भूल गया भाई साहब. मैं सोचा अल्फोंसो डेविस आते ही provides an assist for Kingsley Coman, who has been in breathtaking form the last 2 weeks. Kingsley Coman scores, and yes, Bayern have scored. Away goal doesn't matter, but it's a goal at the end of the day. It is Kingsley Coman who has got the opening. और अभी देखना भाई, Mbappe will have to come. भाई करेंगे यार, चेल्सी की बात डेफिनेटली करेंगे. मैच पर अभी इट्स अ वॉच अलोंग ब्रो गौरव. We'll try and talk Chelsea when nothing is happening in both the matches. First of all, भाई much love to Gaurav bro. Don't get me wrong. लेकिन first of all, यहाँ पर 2 मैचेस हुए. At the end of the day, I am also a fan. मैं भी वेट करता हूँ चैंपियंस लीग नाइट्स के लिए. एंड ऑफ कोर्स लाइव मैचेस पर रिएक्ट करना इज व्हाट द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्ट्रीम पीपल इज. व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन द फीडबैक मुझे जो मिला है. अगर आप लोगों को अलग लगता है, डू लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पीक ओनली अबाउट चेल्सी.
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल लव ऑल चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड वी हैव टू रिएक्ट लाइव. जब भी ब्रेक होता है, बॉल गोज आउट ऑफ प्ले, थिंग्स लाइक दैट, विल टेक सच कमेंट्स. ठीक है. प्लस स्पेशली फतेह नहीं है, माई सेल्फ हैंडलिंग बोथ द स्ट्रीम्स, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. चलो अभी के लिए बायर्न हैज स्कोर्ड एंड यस कोमन का हो गया. पीएसजी हैज टू चेंज समथिंग. क्या चेंज करेगी पीएसजी, क्या लगता है? What should PSG change right away? One is Mbappe, a no-brainer. मुझे नहीं लगता their two banks of four has worked. और Danilo Pereira is right back, bro. And please tell me that's not an idea. भाई ये क्या कर रहा है गाल्टियर यार? Why is Danilo Pereira playing as right back? भाई वो मुकिele समझाए क्या Danilo Pereira को? अच्छा नहीं, Danilo Pereira मिडफील्ड में आ गया अभी वापस. आई थिंक इट्स अ यंग गाय हु इज प्लेइंग एज राइट बैक, ज़ेर एमरी. भाई पीएसजी खेल क्या रही है? डेविस इफेक्ट, यस एब्सोल्युटली. फतेह आ जाओ भाई, कहाँ गए? गोल हो गया. चलो कोई नहीं भाई, फतेह ओपन द चैट, कम ऑन, आ जाएंगे फिर. यहाँ किंग्सली कोमन स्कोर्ड दैट विनिंग गोल इन चैंपियंस लीग फाइनल. यस यस 2020. बिल्कुल. ये क्या हुआ मतलब? डू यू थिंक डोनारुमा शुड हैव डन बेटर और एम आई बीइंग हार्श? ओहो ब्रिलियंट, ओहो ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट प्ले भाई. साने मैन, साने समटाइम्स इज सुपर्ब यार. मुलर, ग्नाब्री आर नीडेड नाउ फॉर बायर्न. अरे उससे पहले गोल हो गया यार, अब क्या आएंगे? आई थिंक हाँ, डोनारुमा शुड हैव डन बेटर. एम्बापे कमिंग, यस. रोनाल्डो होता तो रोनाल्डो इज प्रॉब्लम बोलता. नहीं, आई डोंट थिंक. सी अगेन फॉर मी पीएसजी हैव बीन बिट टू इन देयर बॉक्स वाला चीज. नाउ मेसी इज इन साइनिंग. ओहो नाइस क्लियरेंस मैन, नाइस क्लियरेंस. अगेन बायर्न ही डोमिनेट कर रही है यार. ऐसा नहीं है कि पीएसजी कमिंग बैक एंड डोमिनेटिंग. पीएसजी ट्राई की थी फॉर अबाउट अ कपल ऑफ मिनट्स एट मैक्स. सर्जियो रामोस गेटिंग एन इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन एंड अ क्लियरेंस यहां पर. एंड एम्बापे आ रहे हैं भाई फॉर कार्लोस सोलेर एज एक्सपेक्टेड. एम्बापे इज कमिंग. सो कार्लोस सोलेर डिफेंसिवली किया है. आई डोंट थिंक यूज कार्लोस सोलेर जैसे यूज करना चाहिए था गाल्टियर को आइडियली. हाँ थोड़ा सा रिस्की होता मामला. भाई ज़ेर एमरी भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. फैबियन रूइज जैसे हमने बोला था कमिंग ऑन, बट फॉर ज़ेर एमरी नॉट फॉर दानिलो परेरा. कहीं ना कहीं अनफेयर. ज़ेर एमरी बहुत अच्छा किए इनफैक्ट, बट फैबियन रूइज कमिंग ऑन. तो who do you think now will play in the on the wing, on the right wing में कौन खेलेगा यार? Will it be Messi? भाई ये क्या कर रहे हैं यार ये लोग? अच्छा, मार्किनियोस इज प्लेइंग राइट बैक. ओके, मैं तीनों जन को नाम ले गया. मार्किनियोस इज प्लेइंग राइट बैक. इट इज किम्पेम्बे और रामोस सेंटर. नुनो मेंडेस लेफ्ट बैक. दानिलो परेरा इन फ्रंट ऑफ देम. अभी नेमार विद द रन. नेमार भाई लेकिन बढ़िया डिफेंडिंग हियर बाय बायर्न म्यूनिख. आई थिंक इट वाज किमिक गोइंग बैक इन डिफेंडिंग. किंग्सली कोमन ऑन द राइट विंग खेल रहे विद अल्फोंसो डेविस कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली. रामोस इज सीडीएम नाउ. नहीं वापस डनीलो परेरा आ गया सीडीएम. पिच में हकीमी है क्या? हकीमी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया ना. हकीमी was substituted half time bro, like I said. So Hakimi came off for Kimpembe. So Hakimi is off, Soler is off, and Zaire Emery is off. Bhai Who sahab, scored? you missed the Who main scored? part. Who scored? What? I won't tell you. नहीं, it was basically a mistake by Donnarumma, I would say. It was Kingsley Coman, ex-PSG man, who scored a 2020 Champions League Oh my. final. और यहाँ पर ब्रेक हो सकता है पीएसजी का all of a sudden. अरे यार क्या हग्गा है यार एम्बापे ने. एम्बापे गॉट अ बॉल. एम्बापे इज कम ऑन फॉर सोलर बाय द वे. सो दिस इज फॉर Mbappe is फतेह. already on. हाँ, बिकॉज एक गोल हो गया ना बायर्न का. तो बेसिकली बायर्न स्कोर्ड ऑलमोस्ट अगेंस्ट रन ऑफ प्ले, यू कैन से. अगेंस्ट रन ऑफ प्ले नहीं, इट वाज काइंड ऑफ अ सरप्राइज ऑल ऑफ अ सडन. Alfonso Davis came on at halftime for Cancelo on the left hand side. Kingsley Coman went right hand side. Alfonso Davis with the cross, or at the far post, I think Mendes lost his man, and which was obviously Kingsley Coman, or Kingsley Coman scoring. Donnarumma making a mistake. यहाँ पर Carlos Soler going off, Mbappe coming on, and they have made one more change PSG, that is. So Zaire Emery is off, and Fabian Ruiz is on.
I think Marquinhos is playing right back, Kimpembe and Ramos center back, Mendes left back, Okay. Pereira central defensive midfielder with So Verratti. they've had to make those changes. हाँ तो बेसिकली फैबियन अभी 4-3-3 हो गया है पीएसजी का. Hmm. Anyway, Donnarumma and Edu Mendy still suffer, maybe. Mbappe and Fabian Ruiz, बेंजेमा ने जो किया था डोनारुमा और एडू मेंडी का वो था. फैबियन रुइज यार वो तो हमने कर लिया था. निंजा इज इन, यस. रामोस नहीं यार, वो सेंटर बैक ही आ गया वापस. रामोस आई सॉ हिम क्लियरिंग प्रॉपर सेंटर बैक में. So I think it's a if Mbappe is on, who's on in midfield again? फैबियन रुइज इज कम along with Danilo Okay, Pereira और वेराटी. तो okay, okay. अभी क्या होगा ना, वेराटी कैन प्ले इस गेम. Yeah, he can play his game. But is it too little, too late? नहीं, जस्ट हाँ 1 hour gone and Bayern is 1-0 up. आई थिंक Hmm. एम्बापे कमिंग ऑन. भाई वर्ल्ड कप फाइनल में दिखा दिया एम्बापे क्या कर सकता है यार. Yeah, मेसी yeah. एम्बापे ऑन द He's सेम टीम इज dangerous डेंजर. enough. It takes just 1 minute of बट मेसी brilliant माइट नॉट फिनिश madness. 90 मिनट्स. ये हो सकता है. रिमेंबर ही इज आल्सो कमिंग Yeah, बैक see, आफ्टर इंजरी. Ankit, as much as we love Messi, I don't think this is the Messi of Argentina, and this is not the Messi of Barcelona, the one that we हाँ ऑफ see at कोर्स ही इज least. नॉट लाइक दी मैन. Yeah, I mean, and it's a shame. And I think, see, I think he probably एक doesn't एक want to छक्का do it मारते हुए. himself. He probably doesn't want to do it himself, and I totally understand that. I don't, and that's why I think PSG's this Galacticos era has to come to an end. Neymar and Messi, if they are selling them this summer, I think it's time. Yeah, PSG, especially if they go out now. I mean, imagine, you've spent so much money over the last decade, and all you have is one Champions League final to show for it. ओके पीपल भाई, मैंने अभी अभी रीट्वीट किया है मेरे ट्विटर में विद द लिंक. सो इफ यू कैन रीट्वीट दैट पर्टिकुलर ट्वीट जो अभी अभी किया है ना, फोर्जा मिलान करके लाइव नाउ. इट बी Huh, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ब्रो, एवरीवन. इट huh. सर्टनली हेल्प. जो भी ट्विटर में है, डू चेक इट आउट. एंड ऑफ कोर्स यू कैन लाइक एंड शेयर एनीवेयर. इट बी really really commendable. But everyone again big up जो भी अभी तक रहे हैं. Again Fateh OP as well to come so late and kind of just by shot again. Choupo-Moting by the way, good work for the goal. Good work. Choupo-Moting did the bad work or dirty work. Gave it Huh. to Alphonso Davies on the left hand side. Choupo-Moting abhi airborne shot direct to Donnarumma. So I think you and I, like, okay, I said that, okay, Choupo-Moting is probably not right, and you said it, you called it, like, no, he's very important and he's actually very good. Do you think if Mane was to come back, he'd probably be on the bench and Choupo-Moting would bench him? Yeah, And yeah. if Mane Choupo-Moting plays, would have been on the bench. Hmm. So Bayern play that fluid system na, with Mane Yeah, being there. yeah. But Choupo-Moting na, मतलब entire season में you can argue that he has been But one of the best players in yeah, Bayern on form. but see, that's the thing. Like, somebody asked here, do Apart PSG from need Musiala. do PSG need an out and out striker? I think that's something that Real Madrid showed last season in the Champions League with Benzema, that you need that one out and out striker, even if he's on the bench as an option. You need that somebody. And Choupo-Moting is that guy for Oh, Bayern. Bayern almost scored one more, yaar. Marquinhos just about saving them. So you अच्छा, need that अच्छा target Ramos man. is stepping into midfield, by the way. Okay. बैक थ्री Tactically, हो गया that क्या game भाई? is so पीएसजी का interesting, huh? सबंग बार बार चेंज कर रहे हैं. अरे what a attempt यार. Choupo-Moting Who? with an attempt. I Brilliant hope attempt he that gets a in goal, fact. man. I hope he gets a भाई goal. विंग प्ले यहाँ पर प्रॉपर बायन का. Musiala, man. Musiala getting the better of Mendes, and that is two youngsters. Yeah. Two youngsters were like terrific. Mendes against Musiala. Musiala won it by far. Mbappe looking But see, Ankit, again, lackluster. that question that you need an out and out striker, even as a bench option. I think all clubs should have that, and I don't know whether PSG have that. Like, Icardi अरे was यार that guy. टॉक अबाउट स्ट्राइकर हमारे पास नहीं है यार. Huh, but you thought of like Well, Aubameyang. Donnarumma, what a save, man! Was it offside in the first attempt? If it wasn't, it was a world class save by Donnarumma. Should I change the match then, Ankit? भाई Donnarumma with a world class save. Yes, जो रिबाउंड था ना वो ऑफसाइड था चुपोमोटिंग के लिए, लेकिन the header wasn't. Oh my God. Donnarumma keeping PSG in the game. Not that he did not let them
फर्स्ट ऑफ द हुक, बिकॉज उसकी भी मिस्टेक थी कहीं ना कहीं. बट आई थिंक गोल के लिए, बट अब आई डोंट नो क्या बोलोगे आप लोग, सब लोग यार जो भी देखा गोल को यार, डू लेट मी नो इन द चैट, वाज इट द मिस्टेक ऑफ नुनो मेंडेस लूजिंग हिज मैन कोमन, या वुड यू से कि यार इट वाज डोनारुमा और बोथ? लेट मी नो इन द chat. Former Paris players Honda, Coman, definitely Mbappe, sure is not looking. यार Mbappe पता नहीं यार, let's see. For PSG sake and for neutral sake मैं तो बोलता हूँ it's actually good if he comes back to form, but let's see. Match fitness is the thing, but I have Milan Spurs क्या mistake. हो रहा है, वही मतलब केजी गेम. Yeah, it was a KG game. I have mistakenly changed the channel, and now I can't go back to that channel. मेरा cell खराब हो गया. So all मैं कोई नहीं, मेरे ऑडियो में एरिक डायर कैसे येलो कार्ड बजे हुए, जस्ट सेइंग. अरे भाई यहाँ पर रोमेरो ऑलरेडी गॉट येलो कार्ड फॉर अ बैड चैलेंज, एंड एरिक डायर भाई नॉट कीपिंग होल्ड ऑफ जीरू, rather keeping hold of Giroud a bit too long, gets a yellow card. Fateh, your thoughts on Handanovic getting criticism by fans for not standing, not diving? So क्या बोलते हो, हैंडानोविच को कुछ मिला है ज्यादा क्रिटिसिज्म अभी? आई डोंट he नो. was criticized a lot last year. He was criticized a लास्ट ईयर lot. राइट, रिसेंटली क्या हुआ है? So he got benched by Onana हाँ because he वो was तो, that लेकिन bad. रिसेंटली तो आई डोंट थिंक ही इज देयर इन द रेकनिंग आल्सो ना. Yeah, so now he's probably not going to be re-signing with us next season. So this is it for him. Like, बट but I think he's been a fantastic goalkeeper over the years. yeah, And because I don't think he'll be a number one at any club, with all due respect to him no, at he's this already age. around 40 years old now. He's going to retire very Correct. soon. So Yeah, why would he move? He'll retire. I don't think he'll move, might right? go to Slovenia. Might like Buffon अच्छा, is that playing type. still. Okay, got it. He हाँ, Buffon is still goalkeeper, I playing. hear you. भाई रेना, पेपे रेना was the keeper, Reina yeah. is playing. So I think यार ये चैनल ही नहीं बदल हो रहा अंकित. What the hell, man? कहाँ फंस गया मैं? But he was, Oliver Kahn even under understands. Conte, he was already making all those errors. Like, अच्छा, ऑडियो नहीं सुन रहा है ना टीवी का, फतेह? मुझे तो नहीं सुन रहा. हाँ चलो, ईयरफोन पे सुन रहा होगा बार बार, इसलिए शायद आई माइट रिएक्ट टच लेट. Oliver Kahn in the stand, Musiala bullying PSG second half. Yes, first half, लेकिन I must say PSG actually did very well against Musiala. First half they did very well, especially Sergio Ramos did terrifically well. In fact, मैं तो बोलता हूँ. लेकिन second half में I can see that Musiala, उसका रीजन भी है जबार भाई. क्या हुआ है ना, तो towards the end of first half, Sane became leftish, Musiala went rightish. भाई अल्फोंसो डेविस यार, he's putting some brilliant balls यार. He knows where the players are, cut back करता है वो, which is very unlike a lot of left backs, huh? Nice cross. भाई अल्फोंसो डेविस on the ball, far post, लेकिन कुछ हुआ नहीं. मुसियाला keep the ball, लेकिन नहीं, साने gives it away. साने gives the PSG का अटैक हो सकता है. नेमार भाई हक दिया, नेमार ने हक दिया. प्रीटी श्योर यहाँ पर फ्री किक नहीं है. गुड डिफेंडिंग बाय बायन एज वेल. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर वापस से एक अटैक होते हुए मुसियाला, as much as he's been very good, जबार भाई and पुदिन भाई जो आप लोग बोल रहे थे, I still feel Musiala has one more gear in him. I really do. फतेह can't your remote control by mobile. फतेह का अच्छा भाई. तो भाई ब्रेकिंग न्यूज, so what फतेह has done is फतेह मारेगा मेरे को पकड़ के. So फतेह has done is he has changed the channel, and now he's unable to get back to the channel number that he was on. Davis, yeah, Davis. Again, for all those people saying that Davis, not starting is okay, मैं surprised था. I think PSG were there for the taking from the beginning. Like, and at the same time, you would argue that it's 1-0 now. So why not now when the rod is hot, hit it. लेकिन I still feel कि PSG were there for the taking. तो लेकिन again, तब आपको पावर्ड को ड्रॉप करना पड़ता. पावर्ड एक्चुअली अच्छा किए. Remember as a right centre back. PSG to exit UCL in round of 16 for the fifth time in 7 years. Can't buy the UCL. नहीं आयुष, देखिए कहीं ना कहीं I think they have not looked impressive. There have been a lot of injuries, but I don't think it'll all come down to that, right? Yes, they did not top their group. कहीं ना कहीं उनकी वो भी मिस्टेक है. बेनफिका को क्रेडिट देना पड़ेगा. But
Bayern is not easy for any team, yeah. Come on, let's be honest. So it'll be unfair with all these injuries to say that Bayern have outplayed PSG. It's just 1-0. As much as they have, मैं agree करता हूँ. एक But second. you know who has been able to buy the UCL anyway? Like it's the same for City as well. Yeah, मतलब but I am of the opinion that as much as हम PSG को banter करते हैं ना, जैसे हम Spurs को banter करते हैं Premier League में, Huh. I think slowly but surely Champions League में they have gotten a lot of experience. मतलब the fact is they were Yeah, in final in 2020 cannot be yeah. just written off like that, you know. But that was Ankit. That was a year when they were those single leg COVID. games like against Atlanta. They were Yeah, at but they home. There was were good. no. Both were pretty good. मतलब even I in the don't know. That final, was you the would COVID argue. year. There were no double leg games that year. There was just a single Yeah, leg. they were not double game exactly. लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हाँ pressure maybe was less in of that when you are in that lead और वो PSG Yeah. Oh, tend to buckle down under pressure ना. वो I hear you. लेकिन yeah. what I'm trying to say is they played good football. So Coman, भाई we all know how injury prone he is. Coman is not looking good people. वो shoulder पकड़ के बैठे अभी. लेकिन is getting up. चलो. Coman is not injured. Meanwhile, Milan doing a lot of defensive work I hear. Absolutely. It's a very physical game, and Atlanta. yeah. I mean, एक सेकंड मैं मेरा ईयरफोन छक्का के लिए मार दिया हूँ. Atlanta. I think जोश में leading. आज क्या हो Atlanta रहा है was यार. leading. मैं पहले ना मेरा नीचे चप्पल पहना हुआ क्योंकि आई डोंट Huh. वांट बी बेयरफुट, सो आई एम Yeah. वेयरिंग माय स्लीपर्स. उस समय पता नहीं किसका रन था, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं चप्पल को चौका मार दिया. किक मार दिया, वेंट फॉर अ फोर. ठीक है, यहाँ पर बात करते करते मेरा ईयरफोन हटा दिया मैं. मुसियाला गेटिंग फाउल्ड बाय रामोस क्या? हाँ, प्रीटी मच श्योर इट्स अ फाउल. But it's been a very interesting game between Milan and Tottenham. Yeah, see Uh, that's a way of looking at it. People who are saying that is boring. Just saying huh? no, I think see, Champions League. You shouldn't expect fireworks anyway, Especially first leg. especially the first leg. Yeah, and finally Kulusevski is going off. I think Kulusevski is being battered by Thiaw. And how old is Thiaw? He's what, 20, 21, 22, Ah, 19? he's extremely young. Very young, and he's bullied Kulusevski. So here comes the Brazilian. मतलब दोनों ही यंग ऐसे देखा जाए तो कुलुसेव्स्की खुद Ah, भी यंग है लेकिन but Kulusevski has more experience, I think, at this level at least. मतलब तियाव मतलब does he come across like that typical German defender, again German Italian defense वाला चीज. He is a physical specimen right now. I मैं think बोलूं he's किसका very याद good in दिलाता the है? air. He He's very reminds good me in of the. Jerome Boateng. I think he's better defensively than Boateng. Boateng was suspect And the defensively, prime Ankit. one, not last वाला. And Boateng could go forward. He had that thing. Thiaw, I think, is very happy being at the back. He's not somebody अच्छा, who by the way ventures सब forward. लोग जो भी देख रहे हैं ना यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स यार अगेन फॉर बीइंग हियर पास्ट 3 in the morning. सेकेंडली यार जो भी लोग देख रहे हैं ना, लाइक तो करेंगे अगर बाई चांस आप भूल गए हो, सब्सक्राइब भी करिए अगर आप यू आर न्यू. डोंट फॉरगेट वी आर लाइव टुडे ट्वाइस हम लाइव है. ठीक है, एक हम लाइव है करीबन 8 बजे, वो होगा फॉर दी बारसा मैन यूनाइटेड टॉक्स, नॉट जस्ट द मैच बट ऑल्सो जो उनके सीजन में हो रहा है. वी आर गेटिंग लाइक एन ओजी गेस्ट अगेन. ठीक है, और सेकंड हम लाइव है ऑब्वियसली चेल्सी का प्री मैच एंड मैच, तो वो तो हम करेंगे ही. परसों वापस से लाइव है बारसा मैन यूनाइटेड मैच के लिए, वो फतेह हमें ज्वाइन करेंगे. होपफुली विल हैव अनदर गेस्ट ऑल्सो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. ठीक है, तो भूलेगा मत. तियो तियो नहीं, हम तियाव की Thiaw, बात कर रहे थे. Thiaw. उसका I think the प्रोनाउंसिएशन way समझ में he's एक सेकंड गोल yeah. होने वाला है. अरे भाई साहब बचा लिया यार, Who saved? यान सोमर ने. दिस वाज अ पोटेंशियल गोल मिस्ड एंड डबल ऑफसाइड है डेफिनेटली यार. नेमार ऑफसाइड है, एम्बापे ऑफसाइड है, सॉरी. एम्बापे फाइनली पुट द बॉल इनटू द नेट, No, लेकिन put in टू ब्रिलियंट Thiaw, सेव्स, not ब्रिलियंट Theo. सेव्स यहाँ पर बाय यान सोमर. आई मस्ट से नेमार वर्सेस यान सोमर था एक, और एक था दूसरा कौन था? मेसी नहीं, मेसी नहीं था यार, कौन था? हाँ, एक एम्बापे और एक नेमार. एक तो 3 बजे सुबह दिखता भी कम है. तियो को मैन सिटी जाना चाहिए, क्या बोलते हो? मतलब यार देन कैन ही डू अ कैंसेलो व्हाट कैंसेलो यूज्ड टू डू इन मैन सिटी, बट ही इज लेफ्ट फुटेड एज वेल, दैट माइट हेल्प.
Theo is currently, I think, the captain of AC Milan. He did Hmm. sign a new deal, so it's going to be, yeah, it's going to be a very expensive, but again, not a Yeah, money is Man not a. City comes calling. You think he'll get tempted? Oh, absolutely. I think especially with Pep there, We it'll all be a. forget, yeah, he was a Real Madrid player. But that's okay. If Real want him, obviously, like that's a separate. But नहीं क्योंकि Real Madrid remember left back. Cancelo is not as physical as Theo. Like Theo, defensively Theo, also, okay, there यार, are times when he's. I would rate Theo above on form. I would rate Theo above Cancelo, bro. Yeah, I mean, दोनों no, बहुत No, different है. no. Cancelo going forward, Theo cannot match him, but defensively, there's a lot that Theo offers. So, नहीं if, गोइंग if फॉरवर्ड भी मैं बोलता हूँ ना why Theo. I'll tell you reason why. Cancelo is an inverted fullback. yeah, He goes but only one direction. Theo goes yeah, both. He comes inside as well as goes outside. We have seen him so mm, many times. हाँ yeah, वहीं पर Achilles heel हो जाती है that he is defensively not so sound. yeah. कभी ना कभी लेकिन दनीलो फाइनली गोइंग ऑफ पीपल कंग्रेचुलेशंस जो भी लोग चाहते थे भाई दनीलो इज गोइंग ऑफ इन विटीनिया एंड कमिंग ऑन फाइनली इन द 75th मिनट याद आ गया भाई दनीलो को क्यों रखे अभी तक पिच पर जब हमें चाहिए गोल अभी लग रहा था कि दे विल यूज दनीलोज फिजिकलिटी इन सेट पीसेस लेकिन हुआ नहीं या Theo confusion can Theo give the technical passes like Cancelo yes he can I think he can मतलब यार हम इतने रिसेंसी बायस क्यों रखते हैं फुटबॉल में डेरिन मच लव ब्रो बट Theo Hernandez has it in him. No, Theo Hernandez Muller has it. coming on for Choupo-Moting. Who's coming on? Muller. Yeah, Wow. Koeman I limping hope क्या? he gets the winner, अच्छा. man. Like I genuinely hope that Bayern get the second. भाई I kind of just not called it a draw. I also want a draw to be honest. Second leg will be really interesting. Another long range effort from Sar. और भाई किमिक मैन किमिक with an awesome run. भाई लेकिन PSG should have done better there. Finally they won the ball. चलो. You know what? Goretzka has had a so-so game. Hmm. Mbappe and Upamecano. भाई two Frenchmen at each other. Mbappe getting the better of him. लेकिन भाई साहब Delict doing the job. Delict being the last man of defense. आराम से chested out for a corner. भाई Mbappe with his run man. Running at Upamecano. Gnabry coming on for Coman. चलो Coman is off. I think Coman का Messias पता ही and था यार एक गोल मार दिया. De He's not Ketelaere fit are enough. coming on for Milan. क्या हो रहा है वहां पर? Messias and De Ketelaere are coming on for Milan. अच्छा चलो. So no Rebic. बट पता ही है ना वहां तो दोनों मैनेजर्स Yeah, बहुत लेट you करते हैं called it. सब्स्टिट्यूशंस मिलान You called it. You मिलान called के it. दोनों मैनेजर्स आर काइंड ऑफ इनफेमस फॉर दैट Yeah. इंटर मिलान एसी मिलान एक्स इंटर मिलान का Oh, ही कॉन्टे और ऑफ कोर्स yeah. प्योरली दे आर काइंड ऑफ बहुत ही व्हाट अ हेयर स्टाइल भाई But पता नहीं पुदिन आप जानते हो क्या आप लोग कपिल शर्मा देखते हो कोई भी देखता है कपिल शर्मा या देखता था देखता था. तो कपिल शर्मा शो में एक बंदी आती थी जो मल्टी टैलेंटेड थी तो पता नहीं उसका नाम एस से था कुछ तो वो लता मंगेशकर जैसे गा सकती है समथिंग लाइक दैट आई डोंट नो वेदर आई एम मिक्सिंग टू पीपल हियर बट बेसिकली स्पीकिंग शी यूज्ड टू पुट समथिंग ऑन हर हेड ऑल द टाइम हाँ, हेयर स्टाइल वो हाँ, फनी हेयर स्टाइल करने के लिए तो हाँ. दिस हेयर स्टाइल रिमाइंड मी ऑफ दैट इफ यू नो Which hairstyle? Whose hairstyle? गनाबरी का जो हेयर स्टाइल है देखो नाबरी आप का. अच्छा, okay, okay, okay. एक्सपेक्टेड भी था एवोल्यूशन गेमिंग लक्स कोबन आई डोंट थिंक इज फिट इनफ Salamani's टू is प्ले off. 90 minutes of back to back games Messias is that's on. common for you नहीं कंट्रोवर्सी पता नहीं यार वो कोच को सैक करने के लिए शायद ही इज स्पोकन आउट इज देयर इवन अ कंट्रोवर्सी ऑन दैट He seemed unhappy, Ankit. He was very unhappy. He called the club out. And nowhere, they say that he's aging. yeah So but Bayern are a looking for a lot of times replacement. in the past you have seen players being unhappy even if the main manager has been sacked but is it something wrong in that he's done But it's that typical Bayern FC Hollywood thing. Like they are famous for this, that personalities clashing and Bayern's board, they don't take kindly to all this, So they हाँ could be. लेवेंडोव्स्की का in a way it didn't end Yeah, well right so it is entirely possible that they might decide. And they have that guy who's at Monaco. Is he on loan? Nubel? Oh, 2-0. Oh my God, it should have been 2-0. Who missed that? भाई ब्राहिम Exhibiting. डियाज मेरा तो अभी ये दिखा है ब्राहिम डियाज इज ऑफ
for Charles D. Kettler. And the guy who's come on for him, he was not offside. That was a glorious Charles D. chance. Kettler है क्या? Charles de Kettler, and oh या my god. विद्यावती टीचर बन के, यस वही उसकी जो हेयर And स्टाइल थी ना, गूगल करके it देखो उसको, wasn't even on बिल्कुल देखो। target. Oh my god. मैं वहां अभी देख रहा हूँ, मेरा लैग हो रहा है ना वो वाला स्ट्रीम। हाँ, भाई तियो तियो तू लियाओ 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 ब्रिलियंट क्रॉस भाई। ओ हाउ डिड वी नॉट स्कोर मैन? भाई चार्ल्स डी केटलर, इसलिए ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। yeah, He yeah, should yeah. have ousted Salamakers and Messias from the team long back. Long back. My god, Raheem Ankit, Diaz, that is the Salamakers, kind or of, Messias. Bhai, that if was a brilliant play. yeah, if Spurs go Giroud का through, cushion header था ना? yeah, if Spurs go through, I think this is the chance that Milan are going to Man, do. Charles Di Kettelare, man. It fell to the 2-0. wrong guy. You Oh, can say that. He's again. not a header of the ball. Ankit, क्या हुआ? Chiao missed a chance now. अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? I think Milan should भाई have यहाँ at least. Mbappe with the ball. Mbappe to Very lucky. I oh, think what a Spurs run! have been very lucky. भाई brilliant run by Mendes. लेकिन नहीं, Bayern doing well at the end of the day. Whew. This is getting interesting, man. Oh यार, what a miss यार, Fateh. Why Huh? will Milan rue these chances? Rafael But Leao at his terrific best crossing the ball. How can he miss the ball, man? Thiago, you've been brilliant. How can he and miss this? Ankit, Chiao just made another brilliant tackle at the back. You are behind in the stream. And now he has to. भाई दोनों वर पक्का गोल होने चाहिए थे। Goal होना नॉट चाहिए. गिवन, मतलब चार्ल्स डी केटलारे को तो नॉट ऑन टारगेट, दैट वाज अ ब्लंडर। तियाओ वाला तो गोल था पक्का। Hmm. But this is a, Oh, uh, what an interception, man, from Thiago, but coming Ankit, back. do you see how Milan are scouting though? Kalulu, अच्छा, Tomori, बायन Chiao. ऑन द बायन छक्का मार दिया यार, बायन का गोल होना चाहिए था, मुलर हिटिंग इट। स्काउटिंग इज नॉट बैड, आई मस्ट से, लेकिन ऑप्शन क्या है यार फतेह? पैसे नहीं है No, ना। but that is okay. But then, to get these young players, I mean, Kalulu, Tomori, and Chiao, uh, brilliant. नहीं, दे आर गुड, बट फतेह मे बी आई एम बीइंग टू ग्रीडी बिकॉज आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलान, यू हैव एज वेल। Yeah. Obviously, गोल होने obviously. वाला है, अरे भाई पीएसजी को एम्बापे, मैन एम्बापे डज इट अगेन। भाई द गाय इज What? जीनियस, बट आई हैव टू गिव द क्रेडिट to the left wing of PSG. It is 1-1. Yes, Paris Saint-Germain are 1-1. Yes, people, there was a reason why Mbappe was on the bench and coming on after that hour mark. By all the credit, I think should go to Nuno Mendes. Was it? भाई सब लोग बोल दो, Nuno Mendes भाई लेफ्ट विंग में था कौन? Was it Soler or was it Nuno Mendes? Let me see again. Messi giving the ball to Neymar giving to Mendes. शायद ऑफसाइड हो, नहीं हो शायद। Mendes I think is not offside. दे दो यार. Mendes with a brilliant run. Neymar, Mendes, Mbappe, Messi, चारों लोग ने कंबाइन किया इस गोल को। I think कहीं ना कहीं Upamecano has been beaten by Mendes and that is where the mistake happened. Why was Pavard there? But offside है यार। Offside है. Say it, Ankit. Say it, Ankit. Offside. मैं वो वाले का ना ऑडियो नहीं सुन रहा ना, मैं ऑडियो सुन रहा हूँ मिलान टॉटनहम का। यस, अरे, ऑफसाइड don't दिया do गया। that. Is it Mendes offside? offside. It's 1-0 Bayern Munich still. Thank God. मैं सोचा the Thank game is God. on, bro. मुझे But डरा anyway, दिया था. You कोई scared नहीं, me, man. You होता scared है। me. मेरा ना ऑडियो उसमें वो वाला आ रहा है, तो आई एम लाइक मैं से विजुअल्स पे जा रहा हूँ। लेकिन that was actually a good run by Mendes, बोलना चाहूंगा। Very good ball by Neymar as well, and of course Mbappe being the box. Started off by Messi, लेकिन anyway doesn't matter. If we don't get a target, just steal Alan Varela from Benfica, just the scout. हाँ, कहीं ना कहीं you have to trust the scout, or he was the backup right for Benfica. Who knows? ये क्या है? Own goal. अच्छा, होता तो ओन गोल होता, इज व्हाट जब्बार भाई सेइंग क्या? ओके, बट बेसिकली वर्क तो किया था नेमार, मेंडेस एंड एम्बापे ने। भाई टाटा रुसानू पर पूरा चढ़ गए टॉटनहम वाले। कौन बंदा है ये? नहीं, Ankit, they've hardly made a dent this game, na.
And considering that Tataru Monday Sanu missed. is weak, they've tried a few long ranges. Nothing to trouble him. I mean, 82 minutes. It should have been 2-0 at least to Milan. Hmm. No, not really. Not the. He's been okay. I mean, it's not as if Tonali and Sar have. They've been Yeah. both. नहीं सार Yeah, देने आपको याद है वर्ल्ड कप में था यार सेनेगल के लिए जहां तक मुझे याद है पापे yeah. I सार mean, वाज he's देयर workman-like, physical, decent, but I wouldn't say that he's not the next best like thing. we would put him in the I don't Not yet. know Not yet. Maybe he's a no in young the player. Not yet. एनडीडी कैटेगरी एनडीडी हो गया जैसे Yeah, और maybe एनडीडी भी one नहीं to watch तो out for, but I would इडरिसा not गए हो say गया एक्स-पीएसजी गए one to watch out for most definitely. But मेसी मिस्ड नूनो मेंडेस इज अ ब्रिलियंट प्लेयर ब्रो भाई किम्पेम्बे के पसीने आ रहे ये पता नहीं कितने सालों से खेल रहा है I've been most impressed by कॉर्नर फॉर पीएसजी Thiago. I think this is his Champions League debut as well. Chiao. Brilliant. मेसी मिस्ट बोलेंगे क्या पता नहीं यार पुदिन आपका शायद थोड़ा सेकंड्स आगे है भाई एवरीवन वाचिंग मेरा है 84-55 84-56 84-57 58 दैट्स फॉर पीएसजी बायर्न मेसी आई नो बॉल था ऑफ द कॉर्नर गोइंग टू मेसी बट इट वाज जस्ट ऑन द एज ऑफ द बॉक्स यार इतना इजी नहीं है मतलब आई नो मेसी स्टैंडर्ड के लिए यू कैन से मिस्ड बट फीबल चिप ट्राई था भाई सोलर हैज सॉरी दिस गाय हैज डन डिसेंटली यार आफ्टर कमिंग ऑन Ankit, क्या you've नाम है still not spoken about Hakimi this match. ही इज ऑफ एट हाफ टाइम Oh, acha. I What did when happened? you were off. So basically, Okay. Hakimi was off for Kimpembe. Okay. They had Injury? Marquinhos playing right back. Marquinhos Injury or खेल रहा है right something? back. Injury है क्या है? कुछ maybe picked up a knock. देखता हूँ if it's showing some injuries, but I don't think so. नहीं है. Tactical था. And I think they've been more defensive, like you said. But Kimpembe हाँ यार था हमारा. Target तो था. He's okay यार Kimpembe. I don't rate him much. Badishile is much better. Who we have got. Ever since Kylian coming PSG. Bhai, I think Gravenberg, okay, bro. Gravenberg, one of my favorite youngsters, is on. And guess who is off? Tonali is I off. can't believe it. Who's coming on? They're taking Tonali off. Who's coming on? Musiala. Huh? So looks like they're going defensively. Gravenberg is the number 8, obviously. Musiala is more Big like a number 10, a floating number 10. Gravenberg comes for Musiala, people. That's थोड़ा सा surprising unless Musiala is injured. लेकिन I see why क्योंकि it's been PSG attacking and last के 5 मिनट है तो अपने को डिफेंड करना है अपने को फिजिकलिटी रखना है बायर्न बोल रही है तो Gravenberg is on for that reason अब देखते हैं if he can do this thing again Gravenberg is not too bad going forward as well to be honest. Tonali coming off right? Okay, he already Tonali's came off off. in your Opega is on. Chalo. So that means Milan are closing down just like Bayern are closing down the game. But options थे यार मिलान के पास और भी. But I think I'm नहीं आया certain, यार surprising. perhaps with a knock or whatever. But I'm so certain that Tottenham will have more intensity at home. That offside was so close, bro. They're just showing it again. PSG का. Thank God it was offside, man. I don't want PSG in the next round. Like. चलो Perisic corner, man. 86 minute. If you know, you know. वाला moment. Nothing Perisic happened. corner. No, Ankit, it's already over. और मेरा स्ट्रीम भाई आप स्पॉइलर दे रहे हो यार फतेह आई एम ट्राइंग टू कीप इट इंटरेस्टिंग ब्रो कम ऑन बिकॉज मेरा क्या ना तो फोन में जस्ट फॉर पीपल टू नो द टेक्निकलिटीज व्हाई वी आर डूइंग सो तो मेरा फोन में आ रहा है नॉर्मल स्पीड में ऑलमोस्ट ठीक है आई थिंक इफ यू सी द पीएसजी बायर्न मैच ऑन टीवी माइन इज ऑलमोस्ट दैट पुदिन इज जस्ट अ फ्यू सेकंड अहेड ऑफ मी आई नो दैट ठीक है लेकिन दूसरा स्ट्रीम मेरे लैपटॉप में है तो वहां पर लैपटॉप में इट कम्स I don't know for whatever reason. The same app comes slower on the laptop than on the phone. वो पता नहीं क्या reason है. तो दूसरा stream इसलिए slow है मेरा. So I think the second leg. पुदिन बोल रहा है अभी तक ओवर नहीं है भाई कॉर्नर के लिए बोल रहे थे ओवर हो गया.
But how has been this Oliver Skip guy? बहुत दिनों बाद खेल रहा है starting 11 में in the proper match. Again, like I said, I mean, their midfield has been they've been nothing special. They've not. You know what is the difference maker for Bayern? Hmm. Alfonso Davis, man. The guy is a Yeah, I warrior, mean, I man. think yeah. The guy is a warrior. मैं वापस से So बहुत far. सरप्राइज था for all the people calling कि भाई cancel over Alfonso Davis. For me, नहीं. any day, every day and a Sunday, भाई Alfonso Davis. I know two different players altogether. Alfonso Davis rocks, bro. Come You on. know, what a team Bayern have though. They have Stanisic Cancelo in coming that on. team. They have Davies, Bayern के लिए. Alfonso Davies in their Sane team. going Wow. off. And all these spacey wingers, Sane, Mane, Interesting. Gnabry, They're in. Musiala. Wow. Hmm. चलो कोई नहीं. It's a lot of EPL fans really rate Son. I've seen him at two. Oh my God, Liao. Oh, bad first touch. Heung-min Son, right? Yeah, I mean, okay, good player, but I mean, he's a lot of people. There's a lot of myth making that goes around him. Even at the World But Cup, and I I've thought seen him at the World Cup. he's counted as one of those underrated players in the world. No, Although I underrated don't in the sense agree. that no, I think he's talked about very highly, but it's never been that, Hmm. or maybe it's the But Conte system that doesn't remember, serve him. बहुत ही strangely, I think coming to Spurs, he has changed his game altogether. So Bayer Leverkusen में, Huh? his position was actually coming off the right hand side. He was what Yeah. that Minamino was ना. Huh? Minamino वाला position खेलता था actually. Huh? Huh? ठीक है. Or he used to play behind the striker. Huh? Coming to Spurs, he has totally changed it from the left hand side आता है अब. Yeah. And And I think I it's don't pretty good. know whether he's suited for the 3-4-2-1 or the 3-5-2 or whatever it is That's a that great Conte. point. Yeah, maybe that. Maybe that. But under Conte, Pochettino was very different, right? Yeah. and But it's been like hot and cold with Son. player Like it's अच्छा है not. यार. मतलब I would say that player is really good, No, man. Son. he's a good player. He's a good guy. Everything is great. But to sort of say, What a crunching tackle, man. That's surely a card. Yellow, red. Yellow card. Isco. What a crunching tackle यहाँ पर भाई. Pavard red. Pavard was on a yellow card already. Pavard gets a red card, bro. मैंने इतना प्रशंसा कर लिया भाई. Pavard, the only drama of the match जो आपको चाहिए था, आपको मिल गया. Pavard gets a red card, and obviously he's not there for the second leg now. He gets a yellow. Messi was arguably the last man. मैं तो इतना तक बोलता there was outside the box था. I think Pavard was actually good on doing that. Yes, 91st minute था. It was stoppage time already started. फिर भी I think he went for it. But I think at the moment Ankit bhai plays Pavard, he got a red card. Like actually, as much as he'll be in the headline, maybe for the wrong reasons. अगर ये गोल हो जाता है तब तो it's a suicide. लेकिन अगर गोल नहीं होता, I think he has helped Bayern because Messi was through. Messi was actually through. Or they saved it. Right? Pavard has sacrificed himself. Yeah, that makes sense. A 1-0 away victory, I think. But second leg up, he's not there. Who do they have to bring on? Now they have a lot of injuries. Remember, Lucas Hernandez be injured है. वो तो गया, वो तो खेलता ही नहीं आजकल ऐसा. Yeah, exactly. वो तो long term injury after the World Cup, right? During the World Cup. But ठीक है, they have Delict. Daily Blind. You think Daily Blind might come in as left center back? Yeah, that's leg. the only thing. Imagine him against the prime Messi. Oh my. I mean, almost Messi अभी भी. But I'm telling you, Ankit, Messi doesn't care for PSG. अच्छा भाई मैं फतेह आपको कम सुन रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा जोर बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं वॉल्यूम भी कर रखा हूँ ना मेरे टीवी का सॉरी स्ट्रीम का. Unless until some minutes तो टेंशन हो रही है. मैं दोनों मैचेस देख रहा हूँ यार अभी लिटरली. थोड़ा सा कमेंट्स लिया तो सॉरी यार. Yeah, but कितना फतेह स्पॉइलर मत देना यार प्लीज. स्टॉपेज टाइप का. वहाँ 4.5 मिनट बाकी है ना फतेह. मेरा तो 4.5 मिनट बाकी है. बट इसमें 4 मिनट बाकी है. 1 मिनट बाकी है. PSG बायर्न में खाली 1 मिनट बाकी है. I don't think it's a Perisic thing though, but I don't know. I mean, it could be. I have no clue. It's just about sometimes the tuning between the two people on the pitch as well, right? Sometimes. I don't. I saw Son at the World Cup, and I have a Korean friend also. He was also talking about how he's not as Has good. Bayern lost it or what? Second yellow red card हो गया.
अभी फ्री किक लिया डायरेक्टली टू डोंदोरुमा दे रहे व्हेन दे हैव टू वेस्ट टाइम. हैव दे लॉस्ट इट और व्हाट? पता नहीं. नेमार विद द बॉल. नेमार. यहाँ क्या हो रहा है भाई दूसरे मैच में? भाई मिलान कंसीडिंग फ्री किक्स मैन फॉर फन. ये क्या हो रहा है? रिचार्लिसन. नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा. थियो हर्नांडेज अननेसेसरी. एल्बो था यार, सॉफ्ट था लेकिन अननेसेसरी था. थियो हर्नांडेज का ये क्रिटिसिज्म है ना, ही गिव्स अवे टू मेनी फाउल्स. Too many fouls, and needless fouls. या नीडलेस. मतलब इट गेट्स ऑन टू हिज हेड समटाइम्स आई फील. Yeah, yeah. भाई पेरिसिच विद द बॉल, लेकिन क्लियर कर दिया भाई मिलान ने जस्ट अबाउट. चलो भाई बायर्न हैज वन द मैच. ये वाला तो हो गया. एंड आई मस्ट से आई थिंक does that mean one foot into the quarterfinals for Bayern Munich? I don't think so. I think Mbappe 1-0. is going to worry them. No Pavard is going to be a problem if they don't have proper defenders. And oh my God, Ankit, great defending by Kjær. अच्छा मैं अभी इसमें देख सकता हूँ ना ऐप में, ये वाला मैच भी देख सकता हूँ. एक सेकंड, मैं आई विल बी रिएक्टिंग टू बोथ द मैचेस नाउ. इनफैक्ट वी बोथ विल फॉर अ फ्यू मिनट्स. जस्ट गिव अस दैट टाइम. Oh, penalty, possible penalty for Spurs. नो वे मैन. But he didn't call it. He didn't call it. Krunic with a push right to Richarlison. बच गया. He didn't call it. He didn't even give a foul and बच गए. No, I'm sure VAR must be checking. नहीं नहीं, खत्म हो गया वो. That was that a dive? What was it? I don't know. Oh man, this is like tense atmosphere yaar in Milan right now. Trust me, it is. Bhai, are Milan in going to the quarterfinals of the Champions League after all? Now No, it's time for Allianz. I think Spurs बिल्कुल will. बिल्कुल. भाई सब लोग जो भी यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दीजिए. यहाँ पर मैं हम वेट ही कर रहे हैं 1 मिनट का, बिकॉज मिलान स्पर्स मैच इज स्टिल गोइंग ऑन. एंड एज थिंग्स स्टैंड, भाई मेरा 5 मिनट अभी क्लॉक हो गया है क्या फतेह तुम्हारा? हाँ 5. हो गया, जीत गई. नहीं नहीं, अभी 1 मिनट बाकी है. मैं मेरा भी सेम है. आई नाउ आई कम टू द फास्टेस्ट स्ट्रीम. 5-9 5-6 5-10 आउट ऑफ 6 मिनट्स. लास्ट के 50 सेकंड्स बाकी है मेरे. अभी 45 सेकंड्स और बाकी है. भाई रेफरी ब्लो द विसल ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग? अरे चार्लिसन डाइविंग. ओह दैट इज Was that a dive? भाई really man, Spurs needs to be questioned with the मतलब they can't even draw this Milan. Yeah, They it's need to be over. questioned big time. No, I don't think so, Ankit. I think Spurs are not as good as they're made out to be. Yeah, but sometimes they beat Man City and this then this, you know what I That's mean? okay. I mean, I'm sure they can. I'm sure they can turn this around. But it's yeah, no. Borussia Milan man, भाई साहब रोसरी इन द क्या बोलते हैं, Milan are 1 foot in the semi-finals, quarter-finals, semi-finals ज्यादा बोल दिया No, I don't. I mean, see, look again. 1-0 Today is too Spurs. close to call. Yeah, it's too close to call, and also because Spurs were totally flat, Ankit. Like there was nothing. Like Spurs were. I don't even think they had a proper chance. Today. 1 second, Lucas Hernandez will be back. Are you sure? भाई यस, मेरा स्ट्रीम में भी दोनों मैचेस खत्म हो गए एंड यस इट एंड्स 1-0. 2 1-0 इज द स्टोरी ऑफ द डे. यस केजी फॉर दोज ऑफ यू हु लाइक ओनली गोल्स. भाई आप लोग बोलोगे बोरिंग भी है, बट I loved द it. वे फतेह एंड मी सी इट, आई सी दैट देयर वाज अ टैक्टिकल बैटल हैपनिंग. आई थिंक Yeah. क्लियरली, और हम एक वन बाय वन आएंगे फतेह फॉर अ फ्यू मिनट्स. एंड यस बाय द वे एवरीवन जो भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं अभी, आई नो आफ्टर द मैच गेटिंग ओवर भाई बहुत लोग आ रहे हैं भाई, और लोग भी आ सकते हैं. कैसे आएंगे? लाइक बटन दबा दीजिए. वी आर गोइंग टू क्विकली रिकैप बोथ द मैचेस, व्हाट वी मेड इट आउट ऑफ. ठीक है, और हम चांसेस भी देंगे सेकंड लेग के लिए. एब्सोल्युटली फॉर दोज ऑफ यू स्टेइंग ग्रेट, इफ नॉट मस्ट लव टू एंड सी यू सून. कल आज रात को इनफैक्ट 2 स्ट्रीम है लाइव, वो भी है. तो भाई ये वाला मैच आ जाता है द बिग मैच ऑफ द डे ऑन पेपर, पीएसजी वाला बायर्न वर्सेस बायर्न म्यूनिक. क्विकली मैं समराइज करूं तो भाई फर्स्ट हाफ, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट वाज ऑल बायर्न म्यूनिक.
Towards the end of Hmm. the first half, it was PSG coming back to the game. जहां हम देख रहे थे that very surprisingly Sane was doing defensive work against Zaire Emery, जो in my opinion थोड़ा सा harsh थे for him to be taken off. I really believe that. But on the other side, maybe you would say that Galtier, was a little bit too defensive पहले half के लिए. अच्छा, second half में क्या हुआ? The thing which helped the game in itself and the time मैं तो बोलता हूँ was the change that Bayern Munich made, very surprisingly, क्योंकि already they were doing well. पवार्ड वॉज एन येलो कार्ड. डिस्पाइट दैट मैं बोलता हूँ पवार्ड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. इनफैक्ट किमिक यूजुअल सेल्फ, मुसियाला ऑलमोस्ट यूजुअल सेल्फ. आई वुड से कि रामोस डिड प्रीटी वेल इन द फर्स्ट हाफ अगेंस्ट हिम. बट जो चेंज किया था बायर्न ने, एंड दैट वाज अ बिग चेंज, अल्फोंसो डेविस कमिंग ऑन फॉर जाओ कैंसेलो. ठीक है. और वहीं पर Kingsley Coman guy on the other wing. Alfonso Davis came on the left hand side. Early cross after the dirty work done by Choupo-Moting, and that far post में free थे आपके right wing back, that was Kingsley Coman, ex PSG guy. और कहीं ना कहीं आई थिंक मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा उस मोमेंट के लिए, एज मच एज नूनो मेंडेस वाज टेरिफिक, उस मोमेंट के लिए नूनो मेंडेस कुड हैव बीन कवरिंग किंग्सली कोमन बेटर. बट Hmm. रियलिटी बीइंग दैट डोनारुमा ने छोड़ दिया शॉट, और ही शुड हैव डन मच मच बेटर. बट उसके बाद एम्बापे कमिंग ऑन, स्कोरिंग एन ऑफसाइड गोल. ही लुक्ड थोड़ा एजी, बट क्या बोलोगे, मतलब 1-0. आई थिंक decent scoreline or deserving scoreline for Bayern Munich, just about. Just about. I mean, I was only hearing you, so but you spoke far more about Bayern Munich's, Correct. you know, yeah, the बिल्कुल. chances and what all Choupo-Moting was doing or how good Kimmich was. So yeah, I think it's deserved. But having said that, with no away goals, I wish they bring that rule back, man. I miss it. It added a new layer. It नहीं added तो a new. तब तो फिर और भी टैक्टिकल हो जाता है ना. But why not? What's wrong with being tactical? Yeah, see, So, I and you like it, but that's the new generation. क्या कर सकते हैं. But anyway, हाँ. भाई, this was the second match, obviously Milan versus Spurs. तो भाई सब लोग do let me know who's your man of the match. PSG versus Bayern Munich in the chat. Everyone in the chat, come on, let's hit that like button as well as subscribe. If you're not subscribed, it's always a fan channel for all to see. Do let me know who is your man of the match in PSG versus Bayern Munich. अगर मैं बोलूँ तो the game changer was Alfonso Davis in a strange way, but I would not say Kingsley Coman wasn't the man of the match as well, क्योंकि कहीं ना कहीं that goal made the difference. That's what they take the lead. तो Kingsley Coman और Kingsley Coman, because he played almost the full match, 76 minutes he was substituted. तो मैं बोलता हूँ Kingsley Coman. Musiala was great in moment, but Kimmich very close as well. क्या बोलोगे आप लोग? Do let me know. Pavard could have got, लेकिन yes, एक point में miss कर दिया. Pavard getting a very important tackle to Messi, जहां पर he was sent off because of a second yellow. लेकिन yeah, Fateh, we are just ending in 5 minutes, bro. Anyway, so do let me know, यार. Again, over to Fateh. Milan versus Spurs. What is your review of the match? And of course, Milan won, taking the lead, a big victory after the Deserved 2011 very, repeat. But yeah, absolutely. I think Milan deserved the win. For me, Chiao was Theo Chiao and okay, Brahim Diaz, he got the goal, but I think Theo and Chiao were both brilliant. Spurs didn't have anything. They had just no for intensity. nostalgia. Yeah, and for nostalgia, and they had no intensity. Spurs. So I won't say they're out of it. I mean, they'll recover certain players. They'll need more intensity, and they'll have their home stadium, and that the whole the fans. And we don't know how well this young AC Milan defense is going to do. Like, I think maybe Tomori will be back. So Tomori, Kalulu, Hopefully. and Chiao. Yeah, so Tomori, Kalulu, and Chiao. I don't know because Kjaer might not be able to handle the pace. But so far today, very comfortable win for AC Milan. They should have probably won this 2-0 or 3-0 because those two chances, Charles De Ketelaere and Chiao. Oh man, even if one had gone in, I think we would have been writing Spurs Actually obituary. speaking ना, मतलब definitely again मेरा यहाँ उल्टा था, क्योंकि फतेह was following that match second by second and I was watching it maybe at every minute. लेकिन as much as Thiaw would have done defensively, I think the fact that Thiaw missed that header, I know बाद में Hmm. अच्छा tackle भी किया. I Hmm. think जो impact किया था ना second half में Rafael Leao really stepped up his game, bro. Hmm. I really felt मतलब not just because of the rating I'm saying, क्योंकि आप देखो तो दोनों ही crosses, if I'm not wrong, Rafael Leao got those Rafael crosses Leo got first. the cross. I Yeah, know yeah, one yeah. was a cushioned header from Giroud, जो Charles De Ketelaere should have gotten better and at least a shot on target. और Yeah, दूसरा था भाई directly to Thiaw, the center back, directly. left Yeah. center back. तो मुझे लगता है Rafael Leao maybe, लेकिन Simon Kjaer यार, the fact that the guy is coming off ACL, I regular नहीं think है आजकल. ligament. Yeah, yeah, yeah. Very serious injury. And
He was very good. They were very solid again, But I don't know. I mean, see, Putin was saying Perisic and Son they don't play well, but Son was anonymous. I mean, I didn't see Anonymous. him. हाँ, एक Yeah, ऑफसाइड मोमेंट मुझे याद आ रही है, yeah. मतलब And other एटलीस्ट मैं than that, कमेंट्री जो सुन रहा था, आई and डिडंट हियर हिज नेम एट ऑल. I have a Korean friend, Ankit, who keeps telling me he's like, like we've been hearing Son, he has his own fanboys, but he's never been that good. Like he was like, I followed him from Leverkusen. I was like, wow. I mean, I've only heard good things. And I saw him at the World Cup, and he was flat. And even today, he was flat. Maybe he'll come to life at what's the new stadium? I keep saying White Hart Lane. What's the new stadium's name? टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम, सिंपल. Oh, acha. Spurs Stadium, so he might come to life there. But today, complete lack of intensity by Spurs. So यस, बाय द वे very आकाश disappointing. भाई आस्किंग मुसियाला, भाई मुसियाला, मैं इतना जरूर बोलूंगा दूसरे मैच में कि आई थिंक आधी घंटा के लिए रामोस एंड इन अ वे इवन जो अपने यंग विंगर है, क्या नाम है इनका, जेर एमरी, आई थिंक बोथ ऑफ देम काइंड ऑफ डिड अ लॉट ऑफ Got him. वर्क. लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक मुसियाला डिड गेट अ बेटर ऑफ But पीएसजी इन द सेकंड हाफ it's ओवरऑल. so interesting that the man of the match is Alfonso Davies, and he only played 45 minutes. तो इज इट अल्फोंसो डेविस ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच? आई डोंट Oh, नो. अच्छा, नहीं इंटरेस्टिंग वो that इंटरेस्टिंग. there's that blue thing. Like who got the goal? अच्छा नहीं, ये तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट नहीं दिखा रहा है, ये तो footmob.com है. ये तो व्हाट दे Okay. आर सेइंग. सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज, नहीं, दे आर सेइंग किंग्सली कोमन शुड बी द मैन ऑफ द मैच. लेकिन यार चैट बोल रही किमिक वाज Kimmich. वेरी गुड एक्चुअली. आई वुड से दैट, हाँ, मतलब मे बी ऑनेस्टली अगर वही है द रीजन आई हैव माई सेल्फ गिवन टू कॉमन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही स्कोर्ड और दैट वाज द Hmm. डिफरेंस मेकर. लेकिन किमिक आई थिंक हैड द ओवरऑल गेम. अगर आर्ग्यूबली अगर पवार्ड को सेकंड येलो नहीं मिलता, मैं तो बोलता पवार्ड वेरी वेरी सरप्राइजिंग रहेगा. लेकिन ही वाज Hmm. रियली गुड. यस मुसाफिर, आई 100% अग्री. मैं बोलते आ रहा हूँ अगेन, footmob.com का मैं रेटिंग से अग्री नहीं करता व्हेन कम्स टू पवार्ड. लेकिन अभी I'm सेकंड happy. लेग में द फैक्ट इज ही इज नॉट देयर. क्या बोलते हो? लाइक व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन सेकंड लेग? बायर्न, व्हाट डू यू सी अ चेंज हैपनिंग? Mbappe, like you said, Mbappe scored like for okay offside, but he made a difference when he came on, and he's going to या ही probably be डिड. starting that game. अब पवार्ड नहीं It's है going to सेकंड be लेग में, तो whom do they play? yeah, exactly. That's the who do they play? I think Daily Blind could come in as left center back and Delic could move as right center back. Yeah, That could be something like one. that. And Mbappe against Delict, I see Delict getting murdered. Yeah, exactly. Or Upamecano moving right side and Delic playing in between. I don't know. हो सकता है Yes. being a Frenchman, क्योंकि आज Mbappe kind of got the better of both once he came on. That is the fact. लेकिन I don't know. It'll be interesting. अब याद है the reason why Pavard fouled Messi, why? Because Mbappe was on. तो Pavard had Hmm. moved to the other side. ये हो गया था. Hmm. तो already Hmm. you know that Mbappe factor is there. तो कहीं ना कहीं I think it's the tie is tilted, bro. Come on, let's have an early predictions for the second leg. I know हमने करना था कल और परसों का, लेकिन विल कम टू दैट इन टुडे इवनिंग स्ट्रीम. बिफोर लिविंग द स्ट्रीम, भाई कमबैक होगा कि नहीं होगा पीएसजी का अवे? I think Bayern have goals in them. But again, if PSG win 2-1, they're through. Is it? No. That goes to penalties, right? If they win पेनल्टीज, 3-2, it goes to एक्स्ट्रा टाइम, इट penalties. गोज टू Yeah. एक्स्ट्रा टाइम. It goes to extra time. Yeah. I think Bayern will score. PSG will score. I'm going for something like a 2-2 draw. तो सेकंड लेग 2-2 ड्रॉ, सो ओवरऑल बायर्न गोइंग थ्रू इज व्हाट यू Bayern सेइंग. going through. Yeah. Okay, I still feel here Mbappe starting the game is far different and a fitter Mbappe is different. Yeah. And I know away है, I'm kind of undermining Bayern यहाँ पर, लेकिन the fact is will they have Mane etc? No, correct. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है they are overly reliant on Musiala, who today for 30 minutes he was not there. After that he did very well. But Hmm. again, PSG have to be very positive. They cannot. मतलब I don't know. Will they play an open game? I doubt it. Knowing Galtier, I'll doubt it. But again, they have to do something. I don't think they can wait for Christmas यार. 100% देखते हैं. आयुष बोल रहे 1-1 इंटरेस्टिंग. मैम मुझे लगता है PSG might win the second leg and it might go to extra time. It might just go Wow. to extra time. So maybe even penalties. Let's see. You can see intensity, yeah, 100%. Or Milan Spurs, yeah, at the Tottenham Hotspur Stadium. Now that second leg में, correct me if I'm wrong, Højbjerg शायद second leg में available है. I think he was just suspended for one game. Chat if you know. तो Højbjerg शायद वापस आ जाए. If I'm wrong, apologize. लेकिन I think he is. I doubt if Bissouma might be fit, but let's assume he is fit. Hmm. Bissouma, Højbjerg coming in midfield. It's a very crucial lead for Milan now. It's a So yeah. That might Murad that Tomori might being tilt back. it. That might no, but if Højbjerg and Bissouma, as you're saying, they might that might tilt
in Spurs' favor because today they were so Yeah, flat. I mean, and at home. and at home, yeah. Yeah. I think Spurs will win. Do they win by 2 or 3 goals? That's the big Oh question. my 3-1. god. And I think you have a point because London में they didn't do too well Milan against Chelsea. I Yeah, know it's so a group London they stage didn't do too well. और उस समय अलग But था, but this is a anyways, different, yeah, this is a different opponent, a different formation, a different sort of game. Today, Conte had no ideas. He had nothing going for him offensively, but maybe. maybe. Yeah, and I think the tactician that Conte is वो study करेगा and probably will come back. देखो यार, honestly, I'm not saying for the sake of it. I honestly believe that these two दोनों जो हुए ना आज रात को, दोनों extra time में जाने वाले. I really feel. तो भाई, now that we are sleepy already, be ready for a longer second leg जो होता है. But yes, of God. course, later tonight there is Chelsea playing as well. Dortmund favorites है. कितने बार हुआ है ये? Dortmund are actually favorites on form. But No, Fateh, I'm quick I'm calling it prediction. now. I'm calling it now a good 2-1 Chelsea away win. Okay, I'll take that, bro. We can't buy a win right now. So why we Yeah, need but that big time. maybe in the EPL you'll continue to struggle, but I think in the Champions League, at least quarterfinals, Chelsea will make it. At least minimum. Interesting. अच्छा, by the way, भाई सब लोग again man of the match आप बोलिए in the Milan game who was your man of the match. Milan, Spurs भी, not just Yeah. PSG, Bayern. Do let me know in the comment section. मतलब we feel that मतलब Thiago, the centre back of Milan, or maybe Rafael Leao were shout outs in that game. और PSG Bayern में हमने I think Coman को दिया और maybe Kimmich. These are the two shout outs for us. But again, great to actually have everyone. ये याद दिलाना चाहता हूँ भाई सब लोग, let's get closer to the subscription target and like target. It certainly helps. Every day is a new day, and with all your help, it helps. And almighty fam, congratulations to Bayern fans, Bundesliga fans in general. Congratulations to Serie A fans. भाई, I know Inter Milan fan in the house, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ it's good that Good, good. at least एक Yeah. नजर आ रहा है कि there's a possibility and at least एक hope है with the form Yeah. that Milan was in, and hopefully Chelsea भी आज करे रात को. और ये talking about tonight, we are twice live today, so we are going to be live for Barcelona Manchester United talks in the evening around 7:45 ish, and then again live, of course, an hour and 15 minutes before Chelsea's game. याद रखना सब लोग. Audio the fan channel for all to see, and love you all. Bye. Fateh OP in the chat हो जाए. Fateh, Done, thanks man. for coming on, bro. Pleasure, Again, man. Pleasure. चलो Forza Milan अभी के लिए, and of course अब the Chelsea हो जाए soon. But PSG fans, don't be very disappointed. Result होगा. Let's see.